I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. हेलो हेलो हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और भाइयों के बहनों। हम वापस से आ चुके हैं अपने EWC वॉच पार्टीज के साथ। बट उससे पहले हम वैलोरेंट खेलेंगे क्योंकि EWC का वॉच पार्टी रात को है। CS2 का एपिक सेमीफाइनल्स है। टीम स्पिरिट कल विटालिटी को 2-1 से हरा दी भाई। अनएक्सपेक्टेड था। मैं तो विटालिटी के लिए रूट कर रहा था कि मेरे को, हाँ आई नो डोंक इज देयर, बट क्या पता कल एक सेकंड मैप पे विव भी हुआ था मैजिक से। डोंक को उसने नेड करके ओटी वाले राउंड पे मार दिया। तो इट वाज सो मच अप एंड डाउन फॉर टीम स्पिरिट, बट नेवरदलेस दे वॉन द क्वार्टर फाइनल। दे आर इनटू द सेमीज। आज उनका मैच है लीगेसी के साथ, जो लीगेसी 2-0 फैल्कन्स को हराई थी। तो इट्स गोना बी अ क्रेजी मैच। हाँ तो लेकिन वो 10:30 बजे है, तो हम पहले वैलोरेंट खेलेंगे, फिर हम वो मैच पे जाएंगे, ठीक है। तो डोंक फॉर द विन। लेट्स होप आज डोंक फाइनल जीते, इस बार वर्ल्ड कप जीते। बहुत टाइम से उसको मेजर एक ट्रॉफी चाहिए था। ही डिजर्व दिस ब्रो। सो लेट्स सी, बट वोंट जिंक्स इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हेड ऑन टू द गेम। गेम से जाने से पहले आप लोग बताओ कैसे हो आप सब, कैसा गया आप सभी का दिन। अगर अच्छा नहीं गया तो रंगीन रुक आ चुका आप सभी का रात रंगीन मनाने। वेलकम ईच एंड एवरीवन टू अ ब्रांड न्यू लाइव स्ट्रीम। क्या हाल है मेरे जान के डोडोस, कैसे हो? वेलकम टू द स्ट्रीम बेबी डॉल्स, योर बॉय इज बैक। 2-3 दिन और स्ट्रीम होगी, उसके बाद गाइज थोड़ा सा 1 हफ्ता 10 दिन ब्रेक होगा। तो माइंड मत करना प्लीज। कुछ ट्रांजिशंस के लिए आपको यू हैव टू वेट इन लाइफ। तो ये जो ट्रांजिशन है, ये 10 दिन का ट्रांजिशन में आप बोलोगे ओ माय गॉड RyuK भाई आपने क्या ट्रांजिशन कर दिया। मैं जो सेट कर रहा हूँ ना अभी चीजें, कुक कर रहा हूँ, कुक। आई वोंट से एनीथिंग अलाउड बट रिजल्ट्स विल स्पीक। एक इंस्टा वीडियो डालूंगा, एक इंस्टा वीडियो 200 डिग्रीज हो जाएगी, समझ रहे हो, मेरे पेज पे 200 डिग्रीज। मजाक से request to join party, request to join party, request to join party, request to join party। 4 लोगों को रिक्वेस्ट टू ज्वाइन पार्टी कर दिया है। अब ये लोग अगर मेरे को बुलाए, नहीं बुलाए तो एकदम कोहनी पे कोहनी मारूंगा। अबे डीमन को किधर है बे? क्या हाल है लाडलोस, कैसे हो मेरे चिनोज? मत पूछो। क्यों, क्या हो गया? बस जिंदगी। अच्छा अच्छा यार, तुम्हारा तो अभी अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। जॉब लग गई है, बेंगलुरु जा रहे हो, नया नया अच्छा टाइम, जाटा अच्छा टाइम। अरे ये टाइम तो अच्छा होता है जब पॉकेट में पैसे भी रहेगा।
पॉकेट में पैसा भी आएगा। जीपीयू बस 50% यूज हो रहा है, रैम तो 30% भी यूज नहीं हो रहा है। ए राइंस, आज अपने को करना है तेरे से टैंक्स करके फिर अपने को वॉरशिप्स पे जाना है, तो इसलिए टैंक्स खत्म करके उसको डिलीट मारना तू। अरे वाह, डिलीट मतलब डिलीट कर सकता है एज यू विश। खुशी कर दो। हाँ तो पहले उसे खत्म करना है लौड़े। 3 गेम अरे तृप्ति को कॉल करो, कोई तृप्ति को कॉल करो। ये चिचा किधर है? चिचा, मैं खुद गेम खेल रहा हूँ। क्या गेम खेल रहे हो तुम लोग? 8 बॉल मॉर्टल पूल। सन। अरे फोन बंद कर, भाई वो गेम बंद कर, फोन से के कॉल कर। रुक मैं कॉल करता हूँ, रुक रे लाला। साला तुम लोग सब आलसी हो। जो 2 बजे उठते हैं वो बात ना करें। बे मैं 2 बजे उठता ही नहीं हूँ बे, मैं फ्री होके टेक्स्ट करता हूँ कि कब खेलना है, क्योंकि तुम अगर तभी का तभी बोल दे कि अभी, जैसा अभी बोला तो मैं फटाक से आ सकूं। तुम्हारा भाई आजकल स्लीप शेड्यूल सुधार रहा है एकदम। सुबह 6 बजे सोता है, 12 बजे उठ जाता है। स्लीप शेड्यूल सुधार रहा होगी नहीं? क्या रे बना रहे हैं समीर भाई, वेलकम। लाला क्या हाल चाल? अरे कोई आता ही नहीं सपोर्ट में यार मेरे। बताओ, मेरे पीछे मैनेजर को सपोर्ट ही करने कोई नहीं आ रहा है। बेचारा मैनेजर यार। भाई बूट कैंप बंद हो रहा है भाई, पूरा प्रॉपर। पूरा? हाँ अभी के लिए सर्विसेज। मैं अच्छा हुआ डिसीजन लिया था कि घर ही जाने, क्योंकि अभी लाइनअप नहीं है तो टेम्पररी बंद हो रहा है। तो बिल्डिंग तो तुम्हारा ही है ना? लेकिन हाँ वो अभी प्रॉपर मतलब कोई भी नहीं रहेगा, अभी कुक सब चले जा रहे हैं तो वैसा। तो अभी FFMIC के बाद जो सीरीज होगा उसके बाद हम लोग फ्री फायर लाइनअप उठाने वाले हैं, और BMIC जब आएगा तब शायद से उठाने वाले, तो BMHDIC के लिए लेट्स सी, तो तब फिर से खुल जाएगा। अभी तो सब ओपन क्वालिफायर से होगा ना? हाँ FFMIC तो अभी मतलब होने वाला है, उसमें तो सब टीम्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो इसलिए अभी किसी टीम में नहीं जा रहे। वो OG ने TSG को हटा दिया, क्या पता वो लाइनअप आ जाए। हटा दिया मतलब क्या? हटा दिया मतलब फेयरवेल खरीद लिया। ओ फेयरवेल। हेलो चिचा, को बुलाओ बे। कॉल किया वो। ए लंच चाट डिमंटू, जल्दी आओ। 5 मिनट दे। हाँ 10 मिनट निकल जाऊंगा मैं 8 बजे। जल्दी क्यों 8 बजे कहाँ जा रहे हो? 8:15 कहाँ? हाँ काम है थोड़ा। तो वापस कब आओगे? 27 साल हो गया है, थोड़ा सा चाहिए बे। क्या क्या? अरे क्या? तो वापस कब आओगे? आता थे 10 साढ़े 10। अबे ये क्या सीन है? तो आप एक मैच के लिए आए हो? मैं एक मैच के लिए आया हूँ। हेलो। अच्छा आप खेल रहे थे क्या? थोड़ा नीचे से लो ना। अरे साला, मेरे को पहले बुला देते फिर। तो 5th में अभी किसको ढूंढेंगे? है तो किसी को नहीं है तो खेलेंगे कैसे? खेल जाने बुलाना, आए कि नहीं INS को बुलाओ। बदरुक? INS के साथ खेलो। Good night. तुम लोग का dearest गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। अबे तो तुम लोग मेरे को स्ट्रीम स्टार्ट करवा दिया है। चलो कोई ना, मैं CS2 का वॉच पार्टी कर लूंगा फिर, और क्या कर सकते हैं। तेरा वॉच पार्टी कितना बजे है? वो तो मैं डोंग का करने वाला था, 10:30 बजे का कर लूंगा। अभी भी है 10 साढ़े 10 लेकिन अभी FET और फ्यूरिया का है। सुन ले, बोलो। 10 साढ़े 10 बजे कर ले, खा ले, जो करना कर ले, गांड धो ले। हाँ फिर 10:30 से 2 रात 2 साढ़े 2 3 कुछ भी बैठ सकते हैं। फिर वहाँ गांड उठाने का टाइम नहीं मिलेगा। मैं उठाना चाहता ही नहीं हूँ डिमन भाई। आप 5 बजे तक बुलाओ, बोलो मुझे, बोलो 5 और बजे तक खेलने। अमन को बोलो। ये अमन तो लंचट है रे। कौन खेलेगा? अमन साला लंचट है। तृप्ति बोला आ रहा 5 मिनट।
डिमन भाई ये जो शेल्व्स वाले स्पॉटलाइट होते हैं ये वाले कहाँ से ऐसा लेने से तृप्ति बेटर को एक होगा? बार टेक्स्ट करो कि इससे है क्या बोलते हैं बॉटम फ्रैक्स है, मैं कायरो से आ रहा हूँ। तू कायरो वाला आईडी कहाँ है? गुड क्वेश्चन। ये शेल्व्स वाले जो लाइट्स होते हैं ना ये वाले कहाँ से क्या लेने बेटर होगा बताओ अगर आपको कुछ आइडिया है। आइडिया तो वैसा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कहाँ मिलेगा? आइकिया में नहीं मिलता क्या? आइकिया में एक है 900 रुपए का एक मिल रहा है लेकिन वो वायर्ड है। अब मेरे को फिर इंटरनल वायरिंग करना पड़ेगा अपने घर पे रूम पे, नहीं वो थोड़ा सा फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप देखो ना वो फोटो फ्रेम्स के ऊपर लगा रहता है। हाँ हाँ समझ गया मुझे। ए राइंस तेरे हैदराबाद में बोलो। आइकिया है ना, गया है कभी आइकिया? ऑब्वियसली गया है ना, तो वहाँ पे कुछ ऐसे लाइट वेट देखा है क्या? लाइट हम्म कितने का? कितने का मतलब क्या है मतलब ऐसे नॉर्मली लाइट कुछ हाँ, शेल्फ बहुत लाइट्स सारा देखा है? कुछ सेल्फ पता? लाइट्स दो टाइप का है, जो सेल्फ पे लगेगा और जो सेल्फ का जो रूफ रहता है ना उसमें चिपका हाँ। सकते हैं। हाँ हाँ, बस, तो बस, चिपकाने वो वाला चिपकाने वाला। तू अगर देखा है तो कैसा हाँ। था उसका क्वालिटी लाइक लाइटिंग का? नहीं वो मेरे को याद नहीं, बट मैं देखा हूँ, लाइक देख सकता हूँ जाके कभी। तो Like, तेरे घर के अच्छा पास है रहता क्या है। आइकिया? हाँ तो अगर जब जाएगा मेरे को बताना ना ये 2 हफ्ते के अंदर। अरे जब जाएगा नहीं, जाके थोड़ा ले आओ उसको लेके, क्योंकि वो निकल जाएगा फिर घर निकल जाएगा तो फिर लाने का मुश्किल हो जाएगा। मतलब तू निकल जाएगा ना घर। हाँ तो मतलब अरे नहीं वो देख के आने से फिर मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता हूँ ना। ऑनलाइन कितना मिल रहा है? ऑनलाइन में वायर्ड वाला 900 में मिलता चिपकाने वाला वो जो बोल रहा है? चिपकाने वाला शायद से 500-600 का आ रहा है, नॉट श्योर। रुको मैं देख रहा हूँ। इसमें यूट्यूबर्स का मैं देखा हूँ व्लॉग्स में, जब वो लोग दिखाते हैं तो अच्छा ही है। अगर वो रूफटॉप वाला सस्ता में मिल रहा होगा ना आइकिया में, हाँ तो इसको लाके शिप कर देना राउरकेला। कर दूंगा। बेटर। उसको वो वाला सस्ता पड़ेगा या ऑर्डर करना सस्ता पड़ेगा? देख लो उसको एक बार जाके। एक ऑर्डर बार कहाँ से करेगा? आइकिया से वेबसाइट से। राउरकेला आएगा? हाँ क्यों नहीं आएगा, देख लूंगा एक बार वो पर्टिकुलर मतलब आता तो है डिलीवरी बट वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक बार चेक कर लूंगा। तो खाली मेरे को वही देख कर बताना कि कैसा लाइट है, लाइक सॉफ्ट लाइट आ रहा है या पूरा ऐसा ट्यूबलाइट जैसा लाइट स्प्रेड हो रहा है बल्ब जैसा, वैसा ना। जब जाएगा बताना। मेरे को तो ये देना ना, इसका लिंक भेजना ना, वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो मॉनिटर के ऊपर में जो। हाँ बार लाइट ना भैया, वो BenQ का लो, नहीं तो आप क्यूंटिस भी ले सकते हो। 20,000 का आता है। 20,000 BenQ का 10,000 में आता है गांडू। 20,000 10,000 का आता है। 10,000 का आता है BenQ वाला। 10,000 लो और लो उसका लो। काम क्या है, उसका काम क्या है? अरे वो ब्रांड वर्क का काम है। स्क्रीन पे इफेक्ट मतलब आंख पे स्ट्रेस कम। आंखों में इफेक्ट, वैसे तो मेरा ओलेड है, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। ओलेड में वैसे ही आंखों में मेरा कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन वो वो थोड़ा तो स्टाइल हाँ अच्छा दिखता है वो ऐसा। टेबल पे भी एक लाइट आता है मस्त aesthetic सॉफ्ट है। वाला। बोला Aesthetic मार के खाएगा चलते मेरे से। एस्थेटिक, हाँ तो बस उससे एस्थेटिक अच्छा वाला। डिमन उससे अच्छा OBS बॉट ले लेना। ऑब्स बॉट लौड़े, OBS बॉट सेम OBS। OBS बॉट। अच्छा अबे नहीं ऑब्स बॉट से तो मैं आपको बोल रहा हूँ क्यूंटिस लो, अभी सब लोग ले रहे हैं, वो स्पॉन्सर भी कर रही है बहुत लोगों को। 4,000 में आता है वो। ऑब्सबॉट तुम लोग जो बोल रहे हो, वो कैमरा? हाँ अरे लोड़े का वही तो मैं बोल रहा मस्त हूँ। दिखता है। अबे चूतिया अरे इनके बात साला। मत सुना। मैं क्यों बोल रहा हूँ कैमरा? चूतिया? कैमरे मेरे पास वो क्रियो का लिए हो, मेरे पास है वो, और अभी रुको। इसको लेके क्या कर? मैं आपको भेज रहा हूँ साहिब भाई, ये वाला 4,000 में आता उसी का BenQ का, बट क्वालिटी में थोड़ा ऑब्वियसली BenQ का डिफरेंस आएगा, इतना भी पता नहीं। हो देखो। मॉनिटर और ये सब अच्छा बनाता है ना। हाँ मैं आपको व्हाट्सएप में भेजा, रुको ग्रुप पे भेज दूंगा वैलोरेंट में। अरे मेरा माइक और बुम्बा मांगे रे। बुम्बा माँ के क्या बात है, क्रेजी उसी से बात कर रहे हो क्या? नहीं रे। अरे
बूम लगाया नहीं है अभी। स्लवडा स्लिप शेड्यूल अभी फिलहाल सिस्टम हैंग कर रहे हैं। अरे समीर भाई आपने सिस्टम हैंग कर दिया भाई। बंदे को मैं बोला कि भाई लिंक डालेगा तो 100 पॉइंट होगा। हाँ पता है उसने 2 गेम खेला, 2 गेम से सोच कितना क्लिप काटा होगा। एक मैच में काटा 9 क्लिप, सेकंड मैच में काटा 11 क्लिप। अब वो दोनों जगह इंस्टा और वाईटी दोनों पे अपलोड करेगा। एक में हुआ 22 और एक में हुआ 14। 22 और 14 36 लिंक्स अपलोड कर रहा हूँ बेंचो आज। 3600 पॉइंट्स तो ऐसे ही आ गए भाई। हेलो अरे ये तृप्ति भी आई किया जाता है, उससे पूछ। तृप्ति कोलकाता वाला आई किया जा रहा है क्या? अबे कोलकाता में आई किया है? नहीं आ रहा है, आया नहीं है। कब आएगा बताना ना। अगर ये दशहरा के पहले आएगा तो बताना। लगेगा 1 साल और। 1 साल लगा मेरे को लगा आ रहा है, ऐसा बोला कि कल पर तो बट ये तो बोलता था मैं आई क्या किया था टेबल वही लेने। तो वो स्टेटमेंट चेंज actually- करता रहा गाइस। वो थोड़ा समझ रहे। दुकान पहुंचने के बाद बोल रहे कि रीसेलर मारूंगा भाई। वो थोड़ा रौला जमाने के लिए बोल दिया कि I went to IKEA, I just did a shopping of 20,000 USDs, ऐसे बोलेगा लौड़ा। हाँ ठीक है क्या कर रहा था तृप्ति अभी तक? अरे मैं माजा बर्तन धो रहा बोतल लेने। क्या माजा पानी बोतल? बर्तन मांज रहा था, उसके बाद गया था माजा ठंडा पानी। अच्छा माजा का कहाँ साथ गया ठंडा नीचे? पानी। नीचे दुकान तो जेप्टो वेप्टो नहीं है क्या? सब इंस्टामार्ट मार देता है। हाँ ब्लिंकिट से मारू 50 रुपए के लिए मारू। इस साल तू क्या कर भाई 50 रुपए के लिए भी तुम मार सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अबे डिलीवरी चार्ज। हाँ 100 रुपए मिनिमम है ना। हाँ अरे उसमें एक सुट्टा का डब्बा ऑर्डर कर दो, हो गया काम। हाँ छुट्टा पीता है क्या तृप्ति? नहीं वो मैं यहाँ नहीं पीता, बस ऑफिस में कभी कभार पीता। अच्छा घर पे नहीं पीता। मकसद है आईनेस का बाप मारने नहीं। वाला तुम बोल रहे कि गांड मार लेगा उसको। ही इज फॉलोइंग ऑफिस एटिकेट्स। अबे तो तेरे वही फ्लैट में डिस्ट्रॉयर रहेगा क्या? अच्छा रूम सेम सिलेक्टेड है। बाप आके तुझे क्यों मारेगा अगर तू घर पे सुट्टा पी रहे तो? अबे पाएगा ना उसका तो ग्रोन अप एडल्ट्स, you guys are grown up adults। कौन? you गाइस पागल है नहीं रुक डिमंड तो कुछ मत बोल। ए रुक इसको तो कंसीडर में ग्रोन अप है। तृप्ति का तृप्ति को कंसीडर कर। ठीक है चलो कोई कुछ टाइम के लिए मैं तृप्ति को कंसीडर कर लिया। हाँ। उसमें अगर तू बोलता कि आईनेस भी अगर ग्रोन अप एडल्ट है ना तो मैं मुद दूंगा अपने कीबोर्ड पे। मैं बोल रहा आईनेस है ग्रोन अप एडल्ट। चलो मुंह तो चलो नहीं भाई अबे ऐसे है ना, नहीं है। एडल्ट होने के लिए टाइम लगेगा अभी। अरे बाबा अबे नहीं वो ये बोला ना कि उसका बाबा कि इसका गांड मारेगा, तो मैं वही बोला कि ये तो अपने ग्रोन अप एडल्ट से तो फूट सकता है। नहीं अरे मेरे पापा उसके पापा हाँ वो मैं समझ रहा हूँ, तेरे पापा को पता चल जाएगा। उसमें क्या है, तू सुट्टा छुपा देना। कौन सा उसका बाप आके इन्वेस्टिगेट करेगा ना तेरा घर? मानता हूँ पुलिस ऑफिसर है बट ऐसा थोड़ी करेगा। नहीं वो ठीक है, घर में नहीं, घर में सब घर के बाहर। बेंचोद सोल्स लाइक ये सोल्स गेम में जंप नहीं रहता है क्या? रहता है। अबे साला जंप नहीं अच्छा कर पा रहा हूँ। बॉटम रैक तो क्या 2B अच्छा फ्लैट है कि पीजी है? फ्लैट तो 2BHK 3BHK। हाँ कितना पड़ रहा है वहाँ पे तुम लोग को? आऊंगा ना। 14 अच्छा 14,000 न्यू टाउन में लेगा, वही 20 के अंदर में आ जाएगा। सोसाइटी में लिए हो क्या? सही है। तृप्ति भाई का ऑफिस इधर भी है कोलकाता में, आ जाऊं क्या बोल? अबे मेरे ऑफिस के 2 फ्लोर नीचे ही है बे। ए साला ले बेटे क्या बोलता है, दिल्ली ईवाई वाला ही देख चढ़ता रहता है। तुम लोग का ऑफिस में भीड़ रहता है साला, जैसा लगता है मच्छी मार्केट है साला। अरे तो फिर तुम लोग साला एक साथ क्यों नहीं रहते हो बे? हाँ बे स्विच हो जा। अरे ये मेरे को 1 साल करना एक पड़ेगा। साल बैंगलोर में रहना ही हाँ पड़ेगा। 1 साल करना पड़ेगा, फिर वो स्विच के लिए अप्लाई कर पाएगा। मैं नहीं, नहीं यहाँ कर रहा पे स्विच। सुन
यहाँ पे है नहीं एक्चुअली बात है कोलकाता ऑडिट है मैक्स हाँ, हाँ तो अब तो तुम बेंच पूरा लैन वैन खेलेगा उसके साथ बैठ के एकदम फुल गेमिंग सीन क्या? वीकेंड्स पे। बट बे वो तो अभी उसका काम नहीं है अभी बिजी रहेगा तो वो तो रहेगा ना बिजी अभी तो पहला पहला आया है उसका तो बेड भी बिजी नहीं भी रहेगा तो बोलेगा यार नहीं मेरा सर दुख रहा है यार, आज नहीं, आज मुझे थोड़ा अरे ज्यादा वो ये बोल बे, नहीं सकता, अगर मैं अगर वो अगर हम लोग बोलेंगे हमारा सर दुख रहा है। देख देख हम अगर बोला सर दुख रहा है ठीक है मैं जाकर वो देखूंगा ठीक है अगर नहीं निकला तो उसको उठा के लेके बैठा अबे फिर भी वो नाटक नहीं करेगा कि नहीं यार मेरे को मन नहीं कर रहा, तुम लोग खेलो ना, उसका नाटक तुम जानता नहीं, हमको भी पता है कि उसका कितना सर दुखता है कितना नहीं दुखता है। अरे बाबा अच्छा लगता है थोड़ा है उसका हाँ मतलब हमने कब मना किया कि नहीं है, थोड़ा है, ज्यादा है। थोड़ा मेरी बंदी आज तक इतना टेंशन देखो नहीं हुई, देखो इतना एनएस देखो देता है। गाइस देखो ये देखो भेज रहा है कि रील देखो क्या ग्रुप पे भेजो? वो पागल हो चुके हैं भाई। अरे वो जो 19 साल वाला लड़का कूद गया तो फोन के लिए हाँ अच्छा वो हाँ महाराष्ट्र वाला ना, हाँ 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 उसका मम्मी पापा दोनों मर गए बट हुआ क्या मेरे को स्टोरी बताना तो। एक्चुअली 19 साल का जो बंदा था वो फोन के लिए जिद कर रहा था हमसे ठीक है तो वो कूदने चल गया तो ठीक है तो उसको बाप उसको बचाते बचाते खुद भी गिर गया उसके साथ खाई पैर ठीक है चल गया कितना दिख रहा है एकदम। हाँ मतलब वही ना पैर बचाते भी बचाते गिर वो खिसक गया ठीक है दोनों तो उसके बाद वो देख के उसकी माँ और झेल नहीं पाई वो भी भाई व्हाट द फक भाई। अबे बहुत अबे ये फोन के लिए क्या लाचट है भाई भाई वो एज पे खड़ा है Match found. उसके बाद उसके माँ भी कूद गई शायद साला ऐसा ये जेंजी बे। बाप को लेके कूदा है वो भाई। ओहो ये वाला वीडियो मेरे पे नहीं आया था, मैं बस दूर से एक वीडियो आया था खाली इंस्टा का, एक दूर से कोई रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ, अरे बट एक्चुअली किसके लिए आईफोन के लिए आईफोन में ऐसा क्या रखा है सिर्फ आईफोन भाई उसकी माँ को जो गिरने के 5 सेकंड तक क्या फील हुआ होगा सोचो ना बे। वो भी कूद गए उसके बाद हाँ ना मतलब वो 5 सेकंड में क्या फील की होगी, सब आंखों के सामने झलक रहा होगा पैंचो। वही ना मैं तो कूद तो गया और क्या बच के फायदा अरे भाई नहीं भैया ये लड़का लंचट है ये पूरा लंचट ऐसा नहीं करना चाहिए बटवा अपने माँ बाप को भी लेके गया भाई लेकिन एक फोन के लिए अरे फोन मतलब पता नहीं फोन या क्या, वो फोन खींच रहा था ये क्या सी नहीं आईफोन मांगा है अपने बाप से Choose बस your iPhone नहीं दे रहा agent. तो बोल के क्यों कूदेगा। जल्दी ले। हाँ हाँ अच्छा क्या लेना है, रुक एस्टर ले लूं? नहीं मैं यूरो के अरे 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 हाँ स्मोकर क्यों अबे क्या चेंज कर रहा है डिमांड डिमांड अरे डिमांड शर्म है डिमांड शर्म लिया है है। अभी इसमें बताओ। स्मोकर है लेकिन वो मिक्स में स्विच करके रखा था, बताओ रे डिमांड। मैं 10 मिनट से वुमेन पकड़ के बैठा अच्छा मैं सेंटिनल ले लूंगा अगले मैच। सुनो 20 सेकंड था मैं तभी बोला प्लीज पिक करो, साला फिर भी पिक नहीं कर रहा है। मैंने यूरो पे स्विच करके हाथ हटा दिया कि कोई अगर डाउट पे ना आ जाए बस। अमन ये क्यों नहीं लिया अमन तो नहीं वो मेरे लिए नहीं लिया, सोचा कि मैं खेलूंगा, फिर मैं मेरा डिफॉल्ट हाइट पे यूरो आ गया। हाँ कसम मेरी गलती है, मेरी गलती। ये लेकिन डिमांड पे था लंचेट स्मोकर और इनिशिएटर है, ये ओल्डी का रिफ्लेक्स लो है भाई। अभी और अगर दोनों इनिशिएटर वहां पे क्यों देख कौन पढ़ा रहा है ये पार्ट मेरे को? कौन पढ़ा रहा है? ग्रोन अप एडल्ट पढ़ा रहा है पार्ट आपको। सॉरी मैं आ रहा सॉरी माफ करता ए इधर है। मेडी क्लियर है तो डिस्प्ले ऑफ Where are you? They're blind to fear. Enemy A. Reloading. Spike down A.
One enemy remaining. Sorry, this was taken. मैं नहीं मारा, मैं नहीं That मारा। wasn't terrible. आईफोन के लिए कौन ऐसा करता है भाई? अरे ये मत बोल भाई, मैं दुखी हो जाऊंगा। हाँ ना बे, बुरा लगता है बे, मत कर। बोलते ही जा रहा है लोग। चुप ही नहीं हो रहा है, पता है गंदी बात है बट हो गया भाई। और नहीं होगा, छोड़ दो उसको। वो ए आज तू रिकॉन बचाना। Omen, let's flank them. भाई मेरा बच्चा ऐसा होगा ना बेंच में तो बोलूंगा जा कूद जा 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 लो जा। अबे वो लोग भी तो बोला होगा ना कि जा कूद जा, इसलिए तो कूदने भागा है। मिड स्मोक हुआ। गति का असर भी हो सकता है। कौन सा स्मोक वाला ओड़े मिड? क्या कॉल देते रे? गांजा वांजा मार के खेलते हैं क्या? अरे हंसाओ मत रे लोड़ो, मैं स्नाइप कर रहा हूँ, अचानक से मुंह के सामने आके टपली मारेगा, रुको। मजा तो भैया। चुप चुप चुप। ब्रीच मिड। सॉरी। Where are you? अरे नहीं कर सकता ना वो। Marked one. नहीं देख रहे हो कील का भूखा को देख रहे हो? अबे कूद गया है वो लोग, अबे कूद गया है वो लोग। One enemy remaining. एक तो मारूंगा। कार्टन दौड़ा है दो देखकर नहीं। Flawless. कूद गया भाई ये लोग। What the hell? एक किल तो मिलेगा। मैं पुश नहीं किया ना, मैं पुश करता तो मर गया रहता, वो लोग घुस जाते। पुश नहीं किया तो खुद भी, ये लोग भी वही कैटेगरी है मेरी। पीसीटी होता है अगर नहीं, फोन वाला कैटेगरी पे। अबे साइट नहीं लगा। अरे बाबा डिमांड, मैं सोचा भी नहीं था वो बोलेगा। छिरे डिमांड। स्टन दूं पीछा पीछा। वो कर रहा हमने यहाँ पे गया। मिड देखना। मिड छोड़ के पहले चले जाता है, फिर बोलता है मिड देख। मैं नहीं देखूंगा, तू गांड मारा मिड से। मैं दिखा नहीं कोई, क्लियर है। मीड देख रहा हूँ। साला 1 सेकंड चैट पढ़ रहा हूँ, रुको समीर भाई। आजा। जो अरे भाई भाई हाँ कोई नहीं, हाँ कितना कोई देखा नहीं ना। Spike planted. वो गोली गया किधर? जेट 110 ब्रीच 110 दोनों लोग। Get back. वो भी 110। Enemy A. मिड मिड मिड। Last player नंबर standing. को ना गेम को होना चाहिए। अबे वो जेट मारा कैसे? What do you भाई say, वो ऐसे हो रहे bro? देख। Ready to stretch your wings? वैसे जैसे तू हगा। नहीं वो बैठ के मारा है मेरे को। ये क्या लंड स्टिंगर? RyuK का बेटा मॉडिफाइड होगा, छोटा बोना RyuK। अरे माँ का भरोसा। ये कौन है वे छोटा बोलना है? RyuK समीर भाई इसकी है। अरे मेरा बेटा का भी नाम RY से रखूंगा, रियल नेम, ताकि उसको गेम इन गेम नेम चेंज ना करना पड़े। फिर भी डिमन भाई आपके कांटेक्ट पे पिक लूंगा, ठीक है? आप देखते रहो, घुस। मैं जा रहा हूँ, आप रहो। मिड रिवील डालो, एक रिवील डालो। नहीं है रिवील। अरे नहीं तुमको नहीं, अरे ओए मिड पे चैम्बर तोड़ कर गया, घुसा नहीं है। घुसा भी हो सकता है। मैं 2 HP हूँ, मेरे गन में 20 गोली है। देखते रहो, मैं देखते रहो। सोवा जेट ब्रीच 3 अबे डांट थोड़ा।
अबे आजा आजा प्लांटिंग। I bought a book. क्या तू Spike planted. Enemy mid. मैं आगे से पुश कर रहा हूँ। पुश करो बे, वो लोग पूरा स्मोक पर हाथ में तो बीसीडी खेल रहे। Last player standing. Long. मेरे हाथ में ना तब बोन था ये। नहीं वो स्मोक नहीं जाएगा। अभी रिकॉर्ड मारा। Twitchy here, let's go already. पूरा वेट गेम प्ले है भाई। अदर चोद जो तो लिए हो 2 इन्फो। इन्फो तो दे रहा हूँ मैं। एक काम करना अभी, सुनो सुनो, रिवील करके। वो अगर रिवील करके ये करेगा तो पुश कर देना भाई भाई। तुम लोग पुश क्यों नहीं कर रहे बी से, मेरे को बताओ तो। अभी करेंगे ना, ये वाला इको है मेरा। हाँ फ्लाउडा अभी बोल पे। चैम्बर बैठा रहता है मिड पे। हाँ ना, उसी को ही देखना क्या है। करूं मैं हर्ष उधर अगर पीछे जा रहा है तो मैं कैसे क्या कर सकता हूँ उधर, बता। ये हट रहे लोड़े। प्लांटिंग। आ जाना, मैं आगे गया हूँ। Spike planted. इधर वो फाइट होगा में मेरे सोगा से। के साथ कर ही नहीं पाऊंगा मैं। मत लो मत लो। कुछ भी फाइट ले। Last player standing. जेटिया पहले भी नहीं। तो फिनिक्स क्या उखाड़ूंगा मैं उधर। मिल गया तो भी किल। सोच। Your teeth will. भाई मेरे चैट में लिखता है रिवेंद्रा नाम रखना, बेस्ट नाम। नहीं मत जा, आप उधर ही रुको। सो के उठाए क्या मैं? जाओ 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 बीच थोड़ा बीच सा कॉल दे बीच। बार ऐसा लग रहा है क्या? प्लीज सो के उठने का। तो कॉलटा जीवन रो दरकार नहीं कर तो तेरा गेम खेल दे तो नहीं कुछ। वेलकम वेलकम टू स्ट्रीम एनीवे भाई। कोना में बैठना बे एक जगह पे कहीं। अबे डांट डाल रहा है ना, मेरे को वो भी दिखना हो। तो लौड़ा एक राउंड मादरचोद, एक राउंड ये इसके ऊपर डाल के। वही तो एक नहीं राउंड पता। नहीं तोड़ा हूँ। अरे इसके ऊपर डालते हैं इधर बैक इधर। साइड बैक साइड रो। अरे दोनों 4 उसने जब घुसे तब दूंगा मैं। घुस रहे। Off your feet! कैसे मार जेट घुसा है देखो। अबे मारो बे उसको। ब्लाइंड Spike planted. Last player standing. मैं अबे कैसे मारेंगे हर्ष, मैं खुद स्टन हुआ हूँ। आके तो मारा मैं। एक मेडिसिन ला के यार। Shut up. अकेला कैसे मार रहा है उधर 3? पीछे स्टन खा रहे ना हम लोग, वही करते रहे। पीछे आ जा दौड़ के। दौड़ के पीछे आ जा, दौड़ते दौड़ते। हाँ? तो रख देना अंदर। Enemies close. मैं ही खेलता हूँ, रुको। ओमन भाई आप मिड की देखो। अब लेकिन आ सकते हैं बी। हाँ अरे मैं बोला पीछे चलो। क्या करते हैं, एक बार मेरे को सोल्किंग थोड़ा सा मेरे को बता दे कहाँ पे जेट डैश करता है और ब्रिज का स्टन कहाँ पे आता है। Here. ब्रिज का स्टन वहाँ आता है। Here. ब्रिज का स्टन शुरुआत में आता है, लेट में नहीं। और अरे बाकी बाहर तो खेल। उसका ब्लाइंड भी आ रहा है। सुनो, हम लोग जब एक बार खेले थे सेम कॉम्प, वो लोग क्या किया था ओपोनेंट? दिमाग लगाओ। ठीक है Time to jump. मिड देखते, मिड हमें से एक आता है। Careful now. Watch your eyes. Reloading. Can rotate demon go B, demon go B, can rotate. हाँ अभी तक घुसे नहीं है वहीं पे हूँ। Portal closed. मैं टीपी डाल के आ रहा, रुक। अभी भी है। हाँ हाँ होने दे। Cutting through. अबे ऐसे देख के तू थोड़ा साइड देख पाए, हल्का सा क्रॉस कर रहा है या नहीं। स्लो खेलेंगे और ज्यादा पुश। रिवील डालो वो मैं डिमन तेरे भाई। कांटेक्ट में आएगा, ब्लाइंड डालूंगा। Portal closed. मैं स्टैंड हूँ। Spike down A. Decoy. There they are. One enemy remaining. मैंने 30 रिवील seconds डाला था left. शायद से। केयरफुल। Where are you? Bring them down. माइट भी मिड। हाँ
ठीक है सेफ 10 seconds left. सेव कर रहा हूँ क्या? चलो हम चले AFK जिम। होगा। यस समीर भाई। नहीं रिवील डाला था गांडू, हम दोनों रिवील में थे, याद नहीं? अबे हाँ, उसके बाद AFK होगा। जिम चलो, ओके समीर भाई, जिम के बाद आना। Give them time to लव यू, reposition. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड फॉर द लिंक्स। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। बाय। मेरे इधर बहुत जोर बारिश हो रहा है। अरे भाई वो देना भाई। भाई तो रे मोमेंट तू बस यहाँ खड़े Holding होके position. ये देख लो एंट्री, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। पे अबे आए नहीं है तो छोड़ा क्यों रे गांडू? क्या स्मोक है बे? Time to jump. इतना Sorry. स्मोक मैं स्मोक दो नहीं दे भी क्यों रहा है तू स्मोक? और एक बी जाएंगे वो साइड हेवन ना मिडा जल्दी आ, दौड़ क्या वहाँ पे क्या वॉक कर रहा है? दौड़ क्या मिड? Portal closed. डिमन होल्ड कर यार। पीक ले, जंप पिक। हाँ बस वो एंगल होल्ड साइड कर जी तू। भी तू वहीं पे रुक, तू वहीं पे रुक। धीरे मैं जा रहा था। Cutting through. बाप रे One enemy remaining. Remember, stay out of the खाली fire. जेट टाइम और पल्ला रे चलो अरे मत चेंबर भी स्विंग मार देला मुझे पड़े गली तुम गोटे मारी तो पाइलो एटलीस्ट ना डेटा जगह एका संग स्विंग कले अबे चांसेस आर देयर कि बी आया। बी के लिए उनका कॉम्प बना नहीं है। You want to play? Let's play. मिड स्मोक हुआ मेरे को। ठीक है। बिजली चमक रहा हाँ है। वो करंट डोर, जाएगा। अच्छा डीमन ने तोड़ा क्या? नहीं नहीं मेरे साथ आया मोटे स्मोक दोनों से दे रहा Revealing area. मिड पे एक थोड़ा था मेरे पास ही था अरे नहीं अरे उस पे ऑफ है तो क्यों पिक ले रहा है? पिक्चर में देखा नहीं उसका ऊपर। लोड़े आवाज गोली है। चला चुका है मेरे हाँ को। वही। बैठा है Time to jump. अरे गलती। ओ देखा मैंने वो बी की तरफ है बी मत छोड़ना हम्म। हम्म, छोड़ दो डीमन को। आया तो मार छोड़ दिया चैम्बर भी क्लोज था देख के Portal closed. You want to fight it? 120 Jet 120 low backside. Jet 120 low backside. 30 seconds left. सिटी देख के गाइस बी रिवील। ये बी हो रहा है शायद से। बी हो रहा है। बी प्लांटिंग। Spike planted. कॉल दे रहे हो तुम लोग। ये साइड कहाँ है? कोई जेट तीन लोग आए हैं। ये पे हाँ। सोवा भी था, Decoy. ब्रीच भी था, जेट भी था। जेट मिड हो सकता है चेंबर ऑफ बैक साइड। भागा Last player standing. Nice shot. I'll find you. अरे तृप्ति क्यों पिक लेके मर रहा रे मिड पे? आवाज आ गया तो है उसका उसका। स्मोकर ही क्या है अपना मैं पहले। मिड पुश कर रहा हूँ। बड़ा फाइट ही नहीं मिल रहा है। फुकट में चल रहा हूँ 10 रुपए बस। अरे रुक मिडा मेरे साथ। क्या मेरा साइट वो लोग लड़ा लास्ट का 10 सेकंड में। अबे दे क्यों खड़ा है? मैं क्या कर रहा है? Enemy spotted. Mid. एक एचपी है। दोनों चेंबर और आउट Decoy. कहाँ तू बोलो? वो कहाँ तू? एक कॉल दो बस। जा मांगे क्या हम लोग?
Spike down. दोनों A. मिड थे अच्छे सोवा चेंबर हां देखते हैं लो है आराम दोनों। से आराम से। रुक जा फ्लैश है RyuK, फ्लैश हाँ है। है कर रहा हूँ। Shock dart. One enemy नाइस remaining. नाइस मैं मर चुका हूँ। नाइस वन। बढ़िया निकला भाई। बैठा हुआ है वो लोग। Mashed off, ka-ching, little skrrr, then we're done. क्या मस्त दो हेडशॉट तू क्या समझिंग कर रहे हैं तो तू वन #1 तो नहीं होगा दीपांशु भाई इसमें आपने जितना किया है रीजन आपको बता दूंगा। क्या हुआ भाई कैसे नहीं है अरे बाबा ए रश कर ब्रीच ऑन पे। Cutting through. ए बी पे स्मोक्स बी स्टार्स हाँ इधर आ गया तेरा डॉग लेफ्ट देखना डॉग चलो तू मेरे को छोड़ दिया मेरे को। ओए हाय 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 इश बे तीन दिखेंगे चेंबर तो ऑफ Spike down. B. माय बैड चेंबर इधर है ऑफ करेगा। Spike तीन planted. मार सकता था मैं पैन Bring them down. उधर नहीं होगा साइड क्या होगा। एक मिनट No charges. मैं ऊपर से जा रहा हूँ अल्ट मारूंगा Where तो are ऑफ हो you? गया मैंने देख के। Watch your up, come on, let's go! वो ऊपर है ठीक है छुपा है वो Last player Watch your standing. eyes! बीच का शॉट लग रहा है बोला तो विंडो तो ऑफ ऑफ मारा हो है गया। हाँ इस बार मेरे को साइड खेलना हाँ पता है रुक मैं इस बार मिड ही आ रहा हूँ Last round before the switch. अमन ऑफ दे ए तृप्ति अमन मैं ये ऊपर खेलुची भाऊजी ये ऊपर खेलुची एवढं खेळू चुका बस मारे अमन मत टिका बाइट आते Thanks. 36 टर्न करी हो जाते की मैं इधर पिन रखूंगा ठीक है मेरा इधर- करंट गया 30 FPS गेम प्ले होगी। Off your feet! देख रहा हूँ मैं उधर ही अच्छा तू है क्या I am the hunter! You cannot escape. ये स्टार का है Cutting through. इधर I'll handle सोवा इन ठीक है ठीक है इधर एक्स्ट्रा तीन है शुद्ध रोप्स देख रहा है तीनों भी I'm back. आ जा अंदर का प्लांट कर रहा है Spike 101 planted. एक्स्ट्रा 101 लो ये कहाँ से मारा वो तो कॉल दे ये इधर से दोनों तीनों दोनों साइड है। तीनों साइड है सोवा पुश था तो इधर खेल सकते हैं Down. 101 एक्स्ट्रा नीचे राइट साइड Scanning ahead. There they are. मेरा दिमाग किधर देख रहा हूँ। Last player standing. 101 remaining. अरे तेरी नीचे रिवील हो रहा है उसको देखो। अरे वो रिवील वाले को हाँ रिवील हुआ Switching था आपके sides. नीचे हुआ था Circle better watch their backs. चलेगा कोई ना इसका अगर शॉट लगता तो हाँ हो सकता था अबे मैं चेंबर जैसा क्यों निकाल रहा हूँ यार। मैं भी देखा वो शॉट ही निकाला ना अरे मगर तुम गांडू लोग क्यों रोप्स पकड़ के जा रहे हो इतना जोर से रुको ना भाई मैं अगर होल्ड किया हूँ आओगे ना तो लिखा गांडू लोग बोल दिया भाई गांडू ओल्डी बोल दिए तो मैं मेरा ध्यान हट गया उससे मैं मार भी नहीं पाया कुत्ता करो ड्रोन नहीं है मेरे पे। हाँ कर रहा The spike is here. मेरे को ठीक है भाई Bring them down. जोर करंट आई मीन बिजली मार तो बैकस्टैप देखो बे ये किधर है चेंबर Careful now. सैंडू Reloading. 30 लो
स्मोक के अंदर है। स्मोक में नाइस डेड 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 डेड। सेवन एक है। तू प्लान करना, बैक साइड प्लान कर। बैक साइड लौड़े दो जन एक साथ खेल रहे, कुछ नहीं देखा। गार्ड Spike planted. लाइट ऑफ फायर में मत देखना यार, क्यों देख रहा अकेले? चूतिया है क्या? ये देख रहा Enemy spotted. देखेगा वो बैक स्टेप देख रहा है। स्मोक है तो कर। रुपी लो है। तो मारना पड़ेगा। Last player standing. 91 One 78 enemy remaining. 78 78। बैठने देना उसको एक बार। अबे मेरे को लगा मैं पहले घुस गया उसमें। उसका स्मोक तो उधर ही बैठा है। Hello, are you reading chat? Yes, Rexia bro, I am reading chat. Welcome to the stream. If you are new to this channel, please make sure. You must go. If you are new to this channel, please make sure to subscribe and like the stream. और कुछ नहीं बे। भाई अगर वहाँ पे अगर ओमेन मेरे को थोड़ा सा भी हेल्प करता ना, तो भाई वो दो को ही निकाल लिया होता, दोनों ही टैग थे। हेल्प छोड़ना, तू डर के क्यों मार रहा है चैम्बर? क्योंकि मैं पीछे भी गिर सकता हूँ ना, और एक टपली पड़ेगा तो मैं स्विंग कर रहा है, पीछे नहीं। हाँ बट पड़ेगा तो तू भी तो मार सकता है ना टपली। ये क्या कॉन्फिडेंस है भाई तेरा? Bring them down. So no, I am not new. I have subscribed you already. Yaar. Thank you so much. Love you. Thank you for subscribing. So बेकार don't Spike down A. डॉग को तो पीक करियो ना इसे रेंज रू हां थोड़ा पूरा हीरो लोग को स्मोकर पड़ेला भाई। मैं इधर वॉल करूं घुसने के लिए? घुसेंगे पक्का। देखता हूँ कहीं जाएगा। नाइस रे तेरा मैं घुसा। Decoy. हेवन Sovice below. Last player standing. Spike down A. अच्छा मेडिकल लोग ट्रिप रखते हैं। 145 क्या होता है बे? भाई वो ब्रीच को मैं 30 Walk out, FPS में स्विंग करके Fighting. मारा हूँ। Rest is overrated. क्लासिक से 145 खाए जा रहा मर ही नहीं रहा। टुडे स्मोक दे मो सब एंगल आने पर भी नहीं तो पाए। आई मीन तो जोगो ओबीएस में स्ट्रीम एलिमेंट डाउनलोड करना चाहिए क्या? मैं पी पे फेक्ट्रोन कर रहा हूँ। डिपेंड तुम लोग ए पे आवाज मत। यूजर को क्या चाहिए, स्ट्रीमर को। आई मीन नहीं दे रहे तो। हाँ क्या बोल रहे हैं? यहां पे आवाज मत। जाओगे पी पे ड्रोन कर रहा हूँ। ठीक है अभी चढ़ द बॉक्स पे। कोई दिखा तो नहीं मेरे को बी पे लौड़ा। साउंड आया चढ़ने का। नहीं भाई मेरा गेम ही लैग हो रहा है। कितना आवाज कर रहा है? जाओ ना, किसके लिए वेट कर रहे हो आप? इतना स्लो? वो लोग वापस आ जाएगा ये पे। Bring them down. Planted. गुस्सा कोई मेरे साथ अगर मैं कुछ कर रहा हूँ। मैं पीछे आ रहा हूँ। मैं हूं बैक साइड मतलब बैक स्टेप भी है। मैं पीछे साइड खेल मैं सीधी देख। Cutting through. लैंड सिटी देख रहा है। तोड़ उसको दे सिटी है। डिफ्यूजिंग। Last player standing. You man ready for a light shot? अबे अगर मैं ब्लाइंड दे दिया हूँ इधर तो एक जन आ जाओ ना एटलीस्ट मेरे पास। अबे 4 लोग तो हैं उसमें भी, अगर तेरे पास एक बंदा आएगा। अबे एक इधर गया, एक प्लांट करेगा, एक स्मोक कर रहा है, और एक मैं बैक साइड गया हूँ। स्मोक तो हो चुका है।
भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, छोड़ो। तेरे को तू अभी बोला तू हेल्प मांग रहा है क्यों? खुद ही हेल्प मांग रहा है। और नहीं कर रहा हूँ। Bring them down. Revealing area. चंदू Bring them down. Careful now. नाइस प्लांटिंग Watching flank, watching flank. ऊपर ही खड़ा है। Spike planted. Cutting through. इधर चेंबर। दोनों क्या देख रहे हो? दोनों क्या देख रहे हो? तो क्या देखूं, मेरे पे गन नहीं है, मैं उधर ही ले मिसल नहीं तू यूज कर, तू अच्छा तू लो है क्या? दे हम लोग स्मोक ड्रॉप Lights. गलत स्मोक है हेवन का, गलत स्मोक है। One enemy remaining. Portal closed. सिटी एक बार ढंग से Scanning स्मोक ahead. दे दे प्लीज, बस एक बार ढंग से स्मोक दे दे तू। सिटी। इतना वल्नरेबल खेल रहा हूँ ना मैं। Files ready. You died last. Good job. Pick something nice to kill them with. It's the खेल नहीं least पा we रहा हूँ can do. तुम्हारे वैसे। स्ट्रीम में डालनी चाहिए या नहीं? डाल दो अगर आपको मन है तो डाल सकते हो। लाइक सोर्सेस कौन से डालने हैं बता दोगे क्या प्लीज? सोर्सेस यार मैं तो ज्यादा यूज नहीं करता, तो आई कांट से मच अबाउट दिस। ऐसे ही 30 FPS में नहीं मारता हूँ। बट कौन से हैं मैं मेरे को आप लिस्ट बताओ, देन आई कैन से कौन से गन लेना कर लौड़े, सकते हैं। मैं नहीं मार रहा 30 FPS में। रुको ना, मैं मिड पे पिक निकालने का ट्राई करता हूँ। अच्छा ये स्मोक किया है इस बार। ये यूज को देख साला बाई नहीं Get दिया। out of my way. ए ऊपर चढ़ा है Here. जेट का साउंड आया मेरे को। रोप्स का मिड पुश है, पूछा मैं ब्रीच और कुछ? जेट। मिड पुश है, ब्रीच और जेट, चेंबर भी है। भाई अरे मैं तो बोला डिमन भाई नाइस कवर। दो मिनट है। Off your feet! Cover going out. दोनों स्मोक क्यों डाल दिया? One तृप्ति enemy remaining. हाँ? आओ जल्दी आओ देख। अरे चुप रह रे लौड़े। अरे वो गलत स्मोक है। अबे तो दोनों स्मोक ही गलत है इसका, दोनों हाँ स्मोक ही गलत है। वही तो। ओडी नहीं मारी मुझे था ना, तो घंटा मार दी कोई तुझ। उतरे वो ए मागे ए मैं मेन से ओपन हूँ शायद से। देख रहा हूँ। देख कीड़ा को देख कैसे। हेवन है, मिड आई मीन मेन विंडो। It is done. चलेगा। Reloading. Cover going out. फाइट कर रहा था ना फाइट। A bow and arrow is old-fashioned, but sometimes old ways are best. RyuK ने हगाया उसमें। ए साले बूढ़े, क्या है बे? ऑप क्या कर रहा है? आ गया। बिया ना। अरे डिमांड कॉल सुनो, मैं बोला जेट पुश्ड है बहुत पहले। कब बोला? ये देख बोला तो वो मिड पुश किया है, जेट और ब्रीच। पूरा साउंड आया था मेरे को। ब्रीच का तो फ्लैश आया था, जेट का तो मिड पुश बोला था। स्पाइक लेके जाओ। पता है I have the spike. Bring them तो down. लो ब्रीच का फ्लैश सुन रहा है, मैं अल्ट कर रहा हूँ। रुको इधर ब्रीच इधर है, इधर बैक साइड कोई नहीं है। स्मोक के अंदर है। Spike down B. Last player standing. Watch your eyes. क्या? If you're not a good shot today, don't क्यों नहीं worry. कर रहे? There are मैं राइट साइड गया तो मैं कैसे हूँ, तो घूम के आऊंगा ना। तो यहाँ पे स्पैम करे जा रहे हैं, कहाँ से डॉक करूँ? इसलिए तो ये चलो रे मेरा अल्ट। साला बी पॉसिबल ही नहीं है। अल्ट कर फिनिश। मैं सुन, मैं राइट साइड देखूंगा, ओके? पूरा ये कॉर्नर वगैरह, तू लेफ्ट देखना। रुक जा, ड्रोन करने दे। चेंबर ऑफ ड्रोन कर रहा हूँ। इतना साइड में करना। You want to play? Let's Deploying play. drone. Nowhere to run. हट जा। अरे बेइज्जत किस गया रे पावा। ट्रेड लिया ना। Revealing area.
समझा ही नहीं बंदे को किसका वो क्या होगा? बॉटम ब्रेक डाउन का बच्चा मर गया। अंदर है। नाइस नाइस नाइस। दोनों अमन, दोनों सिटी। दो सिटी। One enemy remaining. Last player standing. Spike down A. नाइस। ओडिन में से ले सकते हैं। आप उठा। इसमें है तो 30 FPS में 2 बंदों को कैसे मार रहा हूँ? मेरा गेम दिख नहीं रहा है मेरे को यार। मेरा एलाइव मेरे को 26 दिया रे। बस 26 दिया हो ना, ठीक है ना? ट्रेड में ले लिया ना, अल्ट मार के। देखो सोवा डिफो है ना, वो सोवा 26 में मरता कि नहीं पता मेरे को। भाई रियो 160 मारेगा। रियो स्मोक में जब 2 थे, जेट भी था। हां, जेट और आस्त्रा। आस्ट्रा दोनों थे। है क्लाउड है तू स्मोक में। हाँ पता है, मैंने आस्ट्रा को मारा। जेट को स्विच किया 78 मोले डैमेज दिया। इस बे मैं ले सकता था बे। मेरा एम का कबार तो ना मार चोद लोग भाई। स्टंट मारने का रह जाओगे क्या? रिपेयर नाम का चीज होता है, वो टैग हो क्या है? अबे स्टन में बुलेट भी सीधा था ना। नहीं मत। Come on, let's go. राइट क्लोज राइट। नाइस। Where are you? Careful now. स्प्रे डन। हाँ फ्लैश कर और घुसो। Last player standing. Spike down A. इतना टाइम लेंगे तो नहीं होगा। Match point. I don't care if there are 5 of them or 50 of them. Let's go. इधर सीज डालो ना, अगर वो पुश कर रहा है दिख रहा है तो आपका स्टन ऑन हुआ है तो आप लोग पे Reloading. स्टन होता हूं तो क्या मैं कैसे कर सकता क्यों नहीं कर पाओगे? अरे सीज टाइम लगता है ना मेरे को वहां पे। कुछ नहीं लगता है। यूटिल स्लो नहीं होता है। यूटिल स्लो नहीं होता है बे। तो डालने की कोशिश तो कर। Try not to die. नहीं यूटिल नहीं होता है, गन स्लो होता है। Bring them down. हर बार सेम जगह मारना पड़ता। Bring them down. ओमेन इधर आ, इधर से फ्लैश करना तो राइट साइड। ठीक है रुक जा। रिकॉर्ड डालो बैक साइड। Find you. कर फ्लैश कर। We'll catch them. Don't mess with प्लान ओमेन प्लान। Spike planted. Going up. Kill them. गन चाहिए अमन या तू गाड़ी नहीं करेगा? नहीं रहने दे। ऊपर छोड़ दे। बैकस्टेप कौन देख रहा है? रिवील है। गलती से भी हेवन से ओपन मत रहना। मैं देख भी नहीं रहा हूँ। Cutting through. मेरे ऊपर है। आगे ले लो। मैं बोला था। One enemy remaining. My ult's ready. रिवील हो क्या? कैसे नहीं मार पा रहे Look for you. उसको? I survived obliteration. Anyone I feeling will generous? I need this. Reloading. Hey, you want one shot कायरो? नहीं भाई 30 FPS में क्या? नहीं मतलब अगर कोई भी दिख रहा है तो तू मार सकता है ना, ये बुलेट नहीं मारना पड़ेगा। आप अगर नहीं खरीदेगा तो गन खरीद भाई। नहीं खरीदा नहीं है, पिछले उठाया। अरे बाबा रुको मैं देता हूँ ना। 30 FPS में यूटिल दो रिक्वेस्ट करो भाई। हाँ रीजन सेट ले। हाँ अल्ट कर रहा रुको। Get out of my way. स्टैंड है। Scanning ahead. Take hold. मेरा Right here. वुमेन क्या टीपी मारा इधर? Bring them down. They're blinded here. Reloading. राइट साइड है, क्लोज राइट। ब्रीच है राइट। अरे यार इतना सब कुछ हो रहा है। Last player standing. No more.
कहाँ गया? मेरे को लग रहा है दीवार के उस पार गया। One enemy remaining. 3 gone. क्रॉस खेल रहा हूँ। Scanning ahead. अबे यार भोसड़ी वाला जेट है भाई। 30 seconds left. चाकू मारा फिर चले गए। Spike planted. My ult is ready. कौन है भाई? तन में क्या गाना गा रहा है? तन्मय नहीं है। रुक देख क्या कर रहा है? आया साइड I am the hunter. Revealing area. मादर चोद लोग 30 FPS में मार रहा हूँ, मारो मैं कुछ। मारा मैंने। क्रेजी मारा बे। मारा मत बोल बे, इधर स्टन हो चुके हैं हम। बाय I need a drop. अरे ओमेन सुन एक काम कर, तू ओमेन यहाँ पे खड़े रहे। का 2 स्टन, ब्रिज का स्टन। हाँ मैं भी वही। ओमेन तू यहाँ पे खड़े रहे, जैसे अगर उनका कुछ आता तो तू फ्लैश कर दियो। जा कॉर्नर पे तू कांस्टेंट खड़े रहे। अगर आफ्टर शॉक आएगा तभी हटना, आफ्टर शॉक आएगा तभी हटना। उधर तक नहीं आएगा वो भाई, ठीक है दूर नहीं मारेगा। Bring them down. कर डाल। There, take them. मार्क 3 और दो निकलो ना। अबे निकल। मार तो दिए One हैं। enemy remaining. अच्छा इधर ही था। तोड़ दिया उनका। चलो सेव राउंड था उनका। हाँ ये लोग देख पुश कर रहे थे। हेवन कवर देना। Time to jump. आया ना उधर। Move in after I strike. That's when they're weak. फ्लैश हुआ था क्या ओमेन? देखना तो अपने चल रहा है 30 FPS में ना ओमेन। भाई, मेरे मुंह पे जो यूटी ला रहा है ना, मेरा गेम रुक जा रहा है, लिटरल रुक। ओमेन ओए इसकी टैट। इसको लगा हम लोग हार गए, कह रहा हूँ। अमन बाय मांगना मेरे से, बाय मांग। क्या कर रहे हैं? अरे I need a drop. अरे इसको गिराओ रे कोई इसको। मैं गिरा के जाता हूँ। गन फेंक के डाल दो ना, गन फेंक के डाल दो। मैं डाल दिया। अरे उठा गन उठा। ओमेन गन उठा। ए मिड्स गिर गया। अरे ओमेन गन उठाना रे मादरजात। Gun here. भाग गया लौड़ा वो लोग। चेंबर ए ऑफ। चलो बी फास्ट। सोवा मिड है। चेंबर ए ऑफ। मैं अल्ट कर रहा हूँ, रुको यहीं से कर रहा हूँ। I'll handle this. विंडो देख। क्या होगा? देख के आसपास। नो वन एयर। बस देख के वो देख के। साइड पूरा चेक कर, साइड चेक कर। अबे साइड चेक कर गांडू। I'm back. आया हेवन। Cutting through. मैं फ्लैंक देख रहा हूँ, ठीक है? Portal closed. Shut up. दोनों चिल करो। मेरा क्रॉसिंग में खेलो। One enemy remaining. भाई मैं उनकी जान फाड़ दिया मेन पे। There can only be one hero.
Switching sides. जो Overtime. प्लीज निकाल लो यार, प्लीज निकाल लो, मेरा नहीं चल रहा है कुछ, मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है। कितना परसेंट? 50% में 30 FPS में मार रहा हूँ, पता नहीं कैसे मार रहा हूँ। ए रिक भाई झूलो बेलौड़े झूलो। ए डिमन 11 किल, हेलो। ए डिमन 11 किल, हेलो। 30 FPS में मार रहा हूँ, 20 किल में हूँ मैं। शर्म करो डिमन भाई, थोड़ा सा शर्म कर लो। ठीक है भाई, ठीक है। सोबा मेन फॉर अ रीजन। सोबा का एक उस सकते हैं। Cutting through. Revealing area. डॉग क्यों नहीं है? ऑपरेटर किस पे है? उन पे है। क्या बचाओ मैं? मिड का दूर तोड़ा है, मिड का दूर तोड़ा है। ऊपर जा ना काश। मैं जा रहा हूँ, रुक जा। Portal closed. मिड है बेबी, कूदा हर्ष। मिड ऑफ बैठाएगा वो। देख इधर है कहीं, क्रॉस कर चुका है वो शायद से। हो सकता है। कूदा हुआ, आवाज तो आया कुछ। इधर सोवा ड्रोन बी। अच्छे पके भी। वो अकेला है RyuK, मैं हेल्प नहीं कर सकती। इनको चाहिए। हाँ, एक है। ऑफ है वो। कुछ करेगा वो लोग। Scanning ahead. गिर गया उनका जेट। Spike down A. One enemy. हाँ सोवा बी remaining. पे था, सोवा बी पे ड्रोन किया था, आ रहा होगा। नहीं यहाँ पे रिबन डाला था वो। नहीं यहाँ पे ड्रोन किया अभी जस्ट। Decoy. 30 seconds left. भाई 100 टैग है उसको। आ रहा हूँ गए। केयरफुल। टैग 10 seconds left. हार गई। एक किल ले लिया। डिमन भाई का बॉटम पोजीशन सिक्योर करने के लिए मैंने एक किल ले लिया। ठीक है भाई। कितना मारा है डिमन, कितना मारा है उसको? उसको 40 मारता है। मैं इतना मारा हूं। अमन झूठ मत बोल, ये तो डिमन झूठ बोल रहा है। कौन है? सोवा ना। सोवा। यस। तेरे को लग रहा है मैं क्यों झूठ बोल रहा हूं? मेरा कुछ टाइम पास नहीं हो रहा भाई। ये देख इस साला फेट को देख। टाइम पास कर रहा मैं। Their fears betray them. वो तो तो लौड़े ऐसा गेम प्ले मत करवा भाई अपना जबरदस्ती। नहीं कहते टीम का निसार पर बैठा है डॉग और एक करो। कोई गुस्सा नहीं है। Bring them down. Cover going. चेंबर। Decoy. ब्रिज बैक साइड। ब्रिज को निकाल। Our spike carrier is dead. I got the Spike down A. सिटी Last player standing. दो डॉग उसका कुत्ता तोड़ दे। अबे डॉग और एक करना, कितना लेट करेगा? और हम वैसे भी लेट घुस रहे, और एक डॉग डालना। अबे मैं देखा Switching sides. Overtime. Until we're home. मैं और एक डॉग डालेगा, मैं मॉली कर रहा हूँ क्योंकि पकड़ा जाएगा ये वो बोलूं बे मैं। ये 13 किल में होने से ऐसे ही होता बच ले। भाई मैं तो बजूंगा। मैं 30 FPS में खेल रहा हूँ पूरा गेम, 20 किल पे हूँ। मैं तो बजूंगा भाई। एक अच्छी 30 FPS नेट स्टटर सब कुछ हो रहा है मेरा। चेंबर मिड पे ऑफ। इधर सोवा ड्रोन बी पे। एक्स्ट्रा स्टार्स एंटर। आजा जल्दी। अरे उधर जाएंगे। प्लांटिंग। Spike planted. रोटेशन में इतना टाइम लगेगा? क्लोज राइट। केयरफुल। रिवील है।
Where are you? नहीं बे, वो पीछे खेल रहा है, पीछे खेल क्या रहा रिवील है। है? ऑपर ऑपर होगा। We'll capture them. पीक ले ओमेन, क्या कर रहा है? Last player standing. अरे तू इनके साथ पीक तो ले मेरे भाई। What's another death? पीक तो ले मेरे भाई इनके साथ तू। स्मोक डिप कर देते हैं। Switching अरे तो sides. ये लोग जिंदा नहीं रहे ना Match तेरे point. स्मोक डिप तक। This is crazy. It feels like we've इनको been जिंदा doing this रखने के लिए तेरे को फाइट तो करना पड़ेगा। तो जाना रे, तो दूंगा। मारो ना फिर। मारो, एक दो एस मार तो फिर। सुनो, ए फेक करेंगे, बी जाएंगे। जाओ दोनों इनिशिएटर यहाँ पे फेक करो, दोनों इनिशिएटर यहाँ पे फेक करो। मैंने एक वॉल डाल के जा। भी है दोनों में से एक। ऑल मॉलिड Deploying drone. Time to jump. चल चल चल, वेट करना था ना। योर वापस तीन गया। तीन 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 है, निकलो निकलो निकलो। तीन है उधर, 3 गोली चलाया मेरे रिकॉन पे। मिड पुश होगा, मिड पुश होगा। हाँ, ये छोड़ चलो चलो रे, जल्दी चलो यार, इतना स्लो मत करो। Cutting through. Cover going out. आगे आओ आओ। Going up. Flash. Where are you? अरे स्मोक के अंदर। RyuK। अरे मैं जस्ट घुसा, तू भी मारा मैं भी मरा। तेरे को स्मोक क्लियर करना नहीं आता। देखा है ना? I have the spike. Last player standing. शोध मेरे पे डैश किया है ये। Spike planted. रिवील कुछ नहीं था यार इन पे, आप पे प्रॉलर वॉलर डिमन भाई। डाल दिया था ना। वो छोड़। तू स्मोक के अंदर कैसे घुसा है कि वो बंदा तेरे लेफ्ट साइड में खड़ा है? मैं पहले यहाँ गया, मैं पहले सामने जाने वाला था, फिर मैं देखा कि नहीं यहाँ पे स्मोक हुआ तो हो सकता है, तब मैं घुसा पीछे आके। ऑब्वियस है, हो सकता है। अरे मेरे को लगा ही नहीं था कि वो इधर बैठेगा। हाँ मेरे को लगा सब वहाँ पे फेक में दौड़े होंगे ये लोग भी। चल बाप रे, 20 माइनस कर दे, ठीक है कोई ना, आता मैं। सब जा रहे क्या? हाँ मैं भी। हम लोग आएंगे 10 साढ़े 10। चलो गाइस, अभी हम करेंगे CS2 का वॉच पार्टी। Later. Stay. क्या हो गया अचानक से हैमिल्टन की फरारी हो? ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। आओ अभी तो FUT और इसका चल रहा होगा, आओ देखते हैं चैट, मजा आएगा। Fallen takes a curious routing, but it's one that's going to get given away by that utility. They're double flanking. Foot stay active here in the downtime. Fallen checks his back. Low health though. No shots. And an ace clutch needed for the young man. But he shows him the door. Foot pound Furious money into the ground. And you see Furia looking dismayed on the cameras. They know they just risked this entire map on that purchase. And I feel like they barely even made a dent. It did not leave an impression. Foot are getting fired up as Ancient looks to go their way. It's one more swing for the fences on a Tech-9 Force. My God, you're more serious? aggression, sending it down into the lane. They lose that opening fight.
Is that going to make them back down? Such a risky move, and there's more where that came from. Yakinda is punished. They know Cave player's dead. They thought they had the gap. Demon replenishes it, full stack. This game ends where it all began, on that B bomb site. And X-Fire once more. Is this a risk that might come back to haunt you? क्या बात है बे, nice have been giving Furia guns, and so they'll pick them up. They'll put them to use. Demon holds the cave, and just like that, plunged into darkness. Furia foot on Ancients. Shut down in the final couple of rounds. Furia took a risk today, and it does not pay off. Foot win their go-to, setting themselves up in this must-win semi-final. Yeah, it's a type of Counter-Strike that wakes you up. It's the type of Counter-Strike that keeps you on the edge of your seat. And it's one where Foot feel right at home. Furia try and outclass them and meet them halfway. Only for Foot to seal it all, seal the deal on that win with Furia's forced by decision. Now they're a map up, now they're a map away from a grand final. And for Furia, they've got to hope salvation can be found on their pick of Nuke up next. What a way to kick off the semifinals. Dupree, we knew this was going to be good, but you said it was extra special for one reason. The map pool has been spicy so far for Furia at EWC. For the third time, they've allowed Ancient through. For the first time, it's bit them in the ass. Yeah, and that's what brings the attention to it, right? It's been Furia's permanent for more than 2 years, and this is the third time they have to allow Ancient to come through, or at least allow it to be played. And in this specific matchup, maybe it's a little bit more tricky, since that if they don't ban out Ancient, they will play a Furia and vice versa. So in that sense, it's obviously come to a point where I start thinking, is Furia trying to work out what is their new permaban, or is Furia trying to just implement and show that they can actually play Ancient? Right now it seems like they're working on, in my books, looking to work on a 7-map pool, which is very difficult to do at the very highest level of Counter-Strike. But as you can tell, against Aurora, it kind of makes sense that the Turkish core haven't really played the map too much, and it's always been all those gimmick picks when they play the Vitality. Then you go up against G2, you also have to have Ancient in that map pool, and now you look against Foot, and Foot is by no means a bad Ancient team, but you didn't feel like playing Anubis, so Ancient was your go-to, and they made it very competitive. So it looks like a map that Furia has looked to be actually playing to make it more competitive. And Jacob, what's your thoughts on this one? Yeah, just to give it a bit of context, you know, a couple of months ago, Fallen announced that he was going to retire by the end of the year at the second major. So I think ever since, you know, they've been trying to figure out, okay, so what is the future of Furia going to look like? And one thing we have learned, you know, as of recently is the fact that they're trying to integrate Yakinda in as a new in-game leader. And with that, maybe also a new map in the map pool. So I think this is a direct consequence of the fact that they're toying with the idea that Yakinda could transition into becoming the main in-game leader for Furia, by then also updating the map pool. You and Yanko were talking about it. It's 4D chess from Fallen. He's been doing it his whole career in Dupree. For all the fans, what this loss for Furia means is we hope they win their next map, and then we get to game 3, because if so, that will be Fallen's 1400th LAN match. What a ridiculous career accomplishment. That's like ultimate rushing yards or passing yards for my American friends. It's absolutely crazy, right? It just shows how long Fallen has been doing this one. And the fact that Furia almost won this one out shows that they can still play Ancient at a high level, right? But for the other side, Foot needed to win this one to actually have a chance now, because I was going to be very worried for the likes of Foot if they couldn't actually win this one, because then, you know, Nuke has not been looking good for Foot. There's a lot of Fs in this one, so. Yep. Good. Pimp, I do want to get to your round because we're running out of halftime time, so let's get into it. This is round 8. This was a back-and-forth battle the entire way through. What did you see here? Yeah, I think we owe it to the viewers to give credit to Foot, you know, and showcase why and how they play good Counter-Strike on Ancient. They do it very simple. Take mid-control right here, a couple of pieces of utility, smoke off mid-doors, and then they walk straight into Donut. And what people at home have to pay attention to is the clock right now. We are only 20 seconds into the round. You go in towards Donut, you isolate Fallen all by himself, he gets taken down, and then they had control over the A bomb site 35 seconds into the round. It's very efficient, it's very fast, it's very aggressive Counter-Strike, and it works out for Foot. It applied a lot of pressure on towards Furia, even though they're able to, you know, fight their way back into this round and make it somewhat competitive. It's a very tough bomb site to retake. So in terms of why did Foot end up winning on Ancient, well, it was this simplistic but very effective way of approaching the rounds. In your face, fast-paced, and it worked out. Strong IGLing throughout as well on both sides. Let's take a look at one of your plays. Dupree, what did you carve out for me?
It's what we also talked about is the whole fallen Corbeni kind of thing where it's very two different play styles. And you can tell by the fact that this is the last round of the first half. And you do see Corbeni here, he actually decides to go through the smoke to try and catch the timing. Actually finds this timing. He wants to put himself in these kind of situations where he controls around. But Yekinder just spots his ass walking through into cave and actively go and clears him out. And that's just the round before Shaken went through. These rounds is all about done when we hit the 1 minute mark. You can tell how fast these rounds are just played out. You can tell if there's not a smoke or anything to stop output, they just keep going. And at this point, you can also tell that the Furia players, they've already established their control mid. They have this insane fast flank coming in from the B ramp where they want to try and take it back into their own favor. And at this point, the round's it's not about brain power, it's not about isolating fighter, it's just pure firepower. And Fallen almost gets taken down by this nade. And then we get into a 1v1 where D1 has actually caught the flank from cave, walking all the way back to ramp, and then gets this very important frag to secure his team and lead moving into the second half. Demon and XCloud, definitely players to watch. Yekinder having an incredible series throughout this tournament, we've seen actually. And let's take a look at some of the numbers from these two stars, because we mentioned if you're looking for a star on foot, it might be XCloud. He joined us in the booth yesterday, great personality as well. And Yekinder, he is not only having to frag out, he may be doing that second-hand IGLing, as Pimp mentioned. Yeah, exactly. And he's vital when we move into Nuke, which is the second map in this series. Yekinder is going to be all over the place, involved in the opening duels, involved in the opening of the rounds, and one player that needs to shut him down on the other side would be XCloud, and so far he's having arguably the best tournament of his career. Let's take a look at XCloud's highlights from this one. Shout out to our production team behind the scenes. They have been killing it for 7 weeks here on the STC Arena. Tomorrow, we make it to the A-Core. Can XCloud make it to the A-Core? Well, he definitely can. I mean, the way they're leading the series right now, but also the way that they're playing as a team, it's just so good to see that a young guy comes into the team, getting implemented so well, but also just stays true to what his strength is, and also plays to the strength of the team of this, never letting go of the WQ, always putting in that pressure and creating space for the rest of the team. He's been instrumental to the victory and moving it so far into the tournament, and you can tell he's having a good time, right? It's also like for him to have this kind of redemption, getting into a team that can take it a little bit further than where he's been in his career. Good to see overall, and very proud of what he's doing so far. Pimp, this is the most full we have seen this crowd since week 0. It is insane. The bleachers are packed. Do you think the fans are showing up despite the fact that all our French teams are gone? Yeah, they will. They love a bit of a good Counter-Strike, and who doesn't love this environment? Who doesn't love to be part of something this big? So I think they will, but that's also where the pressure mounts now on foot. They're very well aware that they're one map away from what would be the biggest final of their careers. To do that in front of this crowd, to do it against Furia, this is now when you have to consider, whether or not they're going to stop playing. Sometimes we have this saying in Counter-Strike that you play not to lose. Yeah, it cannot be the case for Foot right here. They need to continue to play their brand of Counter-Strike, aggressive, simple, and in your face. Dupree, I want to take a look at one other player from Foot. We, of course, mentioned his teammates, but what is Symmetry doing for his squad? I think Symmetry is maybe sometimes the guy that we expect a little bit more of, right? I think he's still one of the biggest talent that's coming up, and he's also done some good work for Foot. But it's always the talking points about the rifles, because they play so fast that it sometimes can feel that he's having struggles trying to get that impact that we know an Auburn can get, right? But he's had a good showing so far, and if I'm not mistaken, he was probably the 4th best player coming into the playoffs in this game, specifically for Foot. So it's a good time for him to step up. It's a good time for him to try and find that impact, and we can see that he gets that both done with the ARP, but also gets done with the AK. So he's definitely a guy to be looking out for, also moving forward into the series. Speaking of moving forward into the series, let's take a look at what has happened so far for Symmetry, and then, of course, what we have in front of us. Pimp, run me through the numbers. Have you been impressed by this young star? Been very impressed, He's been, up until this point, a little bit lackluster, maybe portrayed as the weak link within this lineup, but so far in this tournament, he stepped it up a notch, and he's a big part of the reason why Foot find himself in a position now where they're just one map away from guaranteeing themselves a spot at the grand final. And someone was asking me, what does that round swing percentage mean? It seems like such a small fraction. Is it a big impact? Should we be diving in deeper onto that number? Well, obviously, round swings is where you have like the impact of making the round swing in the favor of your team, right? Is getting like a double kill if you're in a disadvantage, or getting multi-kills whenever it's needed. So that's really what it pays into, and that's why sometimes the scoreboard can be a little bit misleading. Like sometimes you can have a guy that has like a ton of frags, but maybe just racking up their ecos and maybe not having the biggest of impact. So round swing is always important to look out. It's probably one of those stats to showcase how much impact you've had. It's all
all about racking up the ecos back in his I was career. going to say, he was explaining the keys of min-maxing. There's very few esports that we are at this level. Dupree, he knows this one the best. Let's take a look at our match future, though. We've got 2 more maps in my book. We will see that 1400 map from Fallen on Dust 2. The question is, how do they get it done on Nuke? I think it has to come down to Yakinda having a strong map together with Modular. You know, the 2 playmakers of Yakinda. He's going to be involved early on in the rounds. He's going to be aggressive in towards Yard, both on the T side and CT side. And then Modular have to be the, I guess, secure element that can close out the rounds with the AWP. I'm looking towards those 2 players to make huge impact. And it's also very important to note that Foot have not picked up a win in the last 3 months in this map. So it is a map where Fury will be the heavy favorite. So you have to be looking out for that one. And that's why it was so important that Foot closed out Ancient. Ladies and gentlemen, thank you for locking in. It is the semifinals, the last day here in the STC Arena at EWC. I'm coming Gamer. Join close. Someone or push ramp together. I will join ramp, yes. I'm coming ramp close. Yes. I'm coming ramp also close. Yes. Can... Vietnam 2. He door 1 HP. He door 1 HP 1. 2 Vietnam. And door 3B guys, 3B. Coming close. Flash. Picking 2. One more low. Nice! Hello! Let's go! It is coming down to the absolute wire between Falcons and AJL, and of course Trackmania is one of the games where this is very much happening. So Chris, latest update right now, because I just heard it's big. Honestly, it's been absolutely ridiculous. I'm just running around, reports with everybody because it's all going down. AJL had BenQ, who was in the tournament, did not go through, as we were just chatting about beforehand. He was probably the favorite for AJL, but they also have another player in Gwen, who has a lot of history in Trackmania. What a performance. He manages to make it through. He's into the semifinals, into the CC points. They're closing that gap. They are not far away now from catching up to Falcons. Obviously, there's so much going on all the stages right now, but it feels like it's going to be Trackmania where things are decided. Up next is a group that doesn't really have any consequences for us in the CC side of things, but the final group is where we see Carl Jr. and Falcons try to get through those semifinals, which we think, all right, he's the goat of Trackmania. That's what you expect to happen. He'll get on through. No, his group is stacked. I don't know how the scriptwriters did this, but the group that they're in, it's Carl Jr., of course, our GOAT. You got Pack in there, who won the most recent event in DreamHack Birmingham, probably the second favorite for the tournament. He plays for Vitality. Could be some good points for them. But the big one for me, realistically, is Neon in that group. He was the kid that broke the world record like 5 times in a row the other day to get through to these quarterfinals. Kid's an absolute phenom. They're on the same group. Only 2 make it out. You never know. You know what? I'm going to say you're doing a great job hyping this up. AJL is so far locked in semifinals. Falcons, we're going to find that out later. And of course, when we do, we'll let you know. This ain't no regular thing. Came for the ring, you know what I mean. You see my name in the lights. Better get right, I'm champion. Important game happening today for Furia in the semifinals here for CS2. But in general, there is a lot going on outside of just this competition. So Jamie joining me from Furia to give us an insight into the club championship points specifically and the running of the organization. This year, you got second in Rainbow Six Siege. You're now already in the semifinals. How would you say your performance has been at EWC this year? Yeah, it was very good. We are expecting to get at least top 10, top 12. Of course, we got some bad results in other game titles, but we are very excited about CS2, and we believe we could be the champion here. Okay, I'm looking forward to that. I'm going to have to come back to the predictions, but I want to talk about the future as well, because last year for EWC 2025, you didn't qualify for any of the prize money when it comes to club championships. Now you're already sitting on 18th, you know, maybe with the win, you go all the way up. So what does next year look like? Is there expansion coming? Yeah, for sure. I believe EWC is a very hard competition for every club. Even though when we have several game titles competing in the tournament, we see random results in some games. So, but for the next year, we believe that Fury will come back stronger, more rosters, and compete in the top 10 for sure. I'm loving the confidence, and I need you to hold on to that because the next question is the important one. You're playing Foot today. There is a final spot on the line. I want your prediction.
I believe it's gonna be 2-1 Furia. Foot is a very good team. It's a very hard match for us, but I'm pretty confident in our players that we go back to the title. And tomorrow, who do you think you're playing then? It's gonna be probably Spirit, but if it's gonna be Legacy, it's gonna be a Brazilian match. That we love it as well. All right, well, thank you so much for your time. I appreciate it. That's it from us. Back to you guys. Hello everyone, today I'll be playing 1v1 against a mystery player. I'm gonna try to find out who he is and yeah, wish me luck. Let's go, let's play. I wonder who you are. I have a feeling you're on IGL, no? Can you hear me? Secret player. Are you on IGL? No. You're a rifler, right? Okay, actually, I might have a guess who you are. I wanna guess it's Makaze? No? Are you playing for Team Mouse? Team Navi then? No. Not top, okay. Did you go through the open qualifier or you got invited? Are you an international team or no? Oh bro, who are you? You're... I have no clue actually. Are you European player? Or you're from... Yeah. Europe. Are you from Aurora? You said not from top, so maybe no. You're from Aurora? Ah, okay. You're Voxit, no? No. Okay, you're Vicadia then. No, okay. Let's play the round. Okay, you're Xantares. No? Okay, you're... Who else is in Aurora, bro? Wait. Jim Hat. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. I'm amazing, bro. How are you? I'm good, bro. It was hard to get, honestly. Oh my god. GG. GG. Good guess, bro. Good guess. Yeah, thank you, thank you. Alright, see you, bro. See you, see you. Go out first. I'll flash and then we push. Got it? Roger that. Flashing. I've been flashed. Oh, crap. Let's go, let's go. Second map. Fallen for the win, guys. Furia को हारते हुए नहीं देख सकता, bro. But this has not been the case in this Fallen को हारते हुए नहीं देख सकता. Fallen. This is bare knuckle boxing. This is a brawl, a fight to the death. That's what Ancient was. But now we go to Nuke. Foot have had their struggles here. And so Furia's pick might be where they look to turn this one around. They risked it all with that force buy back on Ancient. It did not pan out. Hugo, are you thinking we got a 3-mapper on our hands? Yeah, I think someone's just throwing a bat into the ring and Fury are about to pick it up. We're going to have to see Foot's best game on Nuke in some time if they're going to take on Furia here. It's been 4 months since they've even won this map, and not through lack of trying. 7 losses in a row for Foot.
But a great form today, no doubt about that. Winning some explosive rounds back on Ancient. Beating Furia in the clutches as well. This one's bound to be a banger, Harry. Furia on you, on the T side, calling this shot, so let's get into it. Very curious if we pick up right where we left off, but already this is feeling like a bit of a slower tone in this pistol out of Furia. It's an 8 hit, all right. Fallen and Yuri with the util. Let's K55 go. and Yakindar try to get down the vents, and they will make That's it down two. unscathed. I mean, sorry, That's the new. bomb in That's towards two. lower. Are, You want to marry this Are, one up. If Furia fallen dealing la already la. down the ramp side. Spots two, including that bomb getting planted. Ish, Molotov is man. dead on his secret lurk, and so room starts to open up here for Foot. Still one player lost behind enemy lines. चुम्मा देने के बाद fallen la la गिर गए. Ramp hold, but ends up getting deleted. Yakindar in the downtime, 2 to his name in at lower. It's a round still alive. There's a pickup for K55. Krabeni dinked earlier on. Thin margins on this, but Yakindar's got the cover. 2v1. Jugs now throwing into a very awkward 1v2 times low. Yakindar with a couple of blinders to get Furia off to the races on their map pick. Furia trying hard here. They got some tricks up their sleeve, don't they? What an execute. Upper bust into the vent drop. They got Yuri wrapping heaven. There's so much chaos and confusion for a team that struggle on Nuke like Foot. Well, a pistol round like that won't make it any easier. Yuri given ample time to get into strong post-plant positions, and then they just put the round right there. What a force buy out of Foot. And that's for Xflow, but out of position entirely, locked out. It's probably a full save. This is Foot gambling B, and Furia make the right call to bust upper. We were watching Furia play this map the other day, and at times it felt like they were going a little bit too slow. They were waiting way too long, far too much respect against Aurora. And their best rounds were these quick A splits. And Yakinda could just run in and get his multi-kill. So I hope Furia bring a bit more fight to this game, because you are the favorite. You have the most experience. Every reason to make this a 3-mapper. Nice start here for Furia, but we get one more saved force buy before we see guns. Terrorists win. I feel like if you're Furia, you got to be ready for some type of a move now out of Foot, right? You see them save on 5. You imagine it's this force buy. I think with that comes the threat of immediate aggression at the start of this 3rd round. And so I wouldn't expect this one to be as pacey as the last 2. Even more installed double nade in the huts, really just trying to stop this early rush. You're bang on. Furia let this one breathe. Smokes outside, and as Foot settle into the same setup as last round, Furia do the same thing just a little bit later. So it looks like just another clean conversion. This is awkward for Foot. They don't want to keep these guns into the next round. Sure, the Kevlar's nice, but otherwise it's wasted money. They may as well keep pressure on. Oh, they down the vent. Watch out, Donk. That's a good shot. And so why not throw your life on the line? You're buying next anyway. That opens up the path to the vent rotate a little more. Now Yakindar's awkwardly You're on trying the to keep bonus eyes away. on, but now they're starting to lose lobby as well. Oh, the net is shrinking on this A site. Yakindar can't stop the vent scale. Time's getting low. K55 1v3 required. They're closing in quickly. And Foot playing with pace, getting the face of Furia. Crazy retake. Stealing that one right Extreme back. Motherboard भाई welcome to stream. क्या हाल है कैसे हो भाई इतना मोटिवेशन कहाँ से लाते हो रोज लाइव स्ट्रीम करने की मोटिवेशन क्यों चाहिए भाई पसंद है तो करते हैं
Yeah, very much a captain that looks to challenge everything you thought you knew about IGLs, right? Someone who चोर थोड़ी है कोई कि भाई करना है यार, ऐसा थोड़ी है, बर्डन थोड़ी है, their successes on an individual level. मोटिवेशन चाहिए क्यों? Still demands a lot from his team, right? You hear the way that he talks to them, that Coolio talks to this squad as well. Come on, come on. Take any BS. We have the op. Let's go. For demanding perfection. I think when you play the way they do as well, you want like a strong leadership figure in that sense. You need someone who's, you know, prepared to give you all this freedom, but also prepared to reel it in, let you know when you made a mistake, force that accountability. Foot aren't playing scared, so they won't talk like it either. For now he's safe, but this is interesting. Going quick. अरे भाई लो कर दिया. And everyone's caught looking the wrong way. What the hell? Everybody's dead. Destroyed on this क्या मारा रे? puts his life on the line. Up the vent for Demon. Surely not. Demon. यहाँ पे भी Demon है. Love a real gun. But the fear and Furia stop that bomb plant, and they're feeling a little uncomfortable now. Gonna try and commit to it. Fallen's got to have the cover. And just tucked in right into his crosshair. Nice one. Demon goes. भाई यूज कमाते हैं, डिमोटिवेट फील नहीं होता नहीं मेरे भाई. Sheet of entries for Furia. They will convert on that round. जब मेरा बेस ही यही है कि मेरे को व्यूज से फर्क नहीं पड़ता. Just because I love doing this, so I'm doing. Too much, not trying to fake foot out. This isn't a team that I will keep doing it. You should be scared of if you're Furia. व्यूज के लिए थोड़ी कर रहा हूँ मैं कि हाँ भाई मैं व्यूज आ जाएंगे, पैसे ज़्यादा कमा लूँगा. Excellent trades here, and Yuri with a double entry. जो भी दूसरे reasons होते हैं XYZ. A site getting abused now. मेरे को जितना 10 लोग जानते हैं, 10 लोग डेली आते देखने हैं, अभी के लिए मेरे लिए काफी है. Because at least मेरे पे इतना है कि मैं कुछ भी करूँ वो 10 लोग तो मेरे को हर दिन देखने आएंगे. वैसे ही मेरे को बंदे चाहिए. ऐसा नहीं कि just because मैं आज फ्री फायर खेल रहा हूँ तो ट्रेंड गेम खेल रहा हूँ तो वो आ गए, बीजीएमआई खेल रहा हूँ तो वो आ गए. वैसा नहीं चाहिए. कि कल को बीजीएमआई नहीं खेला तो वो लोग फिर अनसब्सक्राइब करके चले गए. ऐसे बंदे भी नहीं चाहिए. It feels imperative for that they shut down one of these top site splits. Now the time. One more buy comes out. Benefit of that. Second round save and third round win. Side नहीं कर रहा ना? Yes, ठीक है. Ouch. Already good nades here for Foot. Nade तो बढ़िया था ये. Yakinda sails on past right through this smoke. Lane ball comes down. Secret still controlled by Foot. Is that a problem though? Because Molly's going to go in and send it back. Fury look further afield. Look at Yakinda go. Shifting his way behind enemy lines. Krubeni really wants his fight. He's getting lurked on right now. Going to make a play instead. Good awareness from Furia. Got that spot from main move. They put it to use. 5v4. Yes. The second wave is nice. अभी क्रॉस करेंगे. Murudi is holding the. One thing you've seen from Foot across a lot of their games is how they're down a group and try and pack roll, you know, back their aim, look for tight trades, good crossfires. If Fury are able to kind of break that up as they have ये वाला जो उनका है ना हाईलो सेटअप ये वाला तो अगर कर दिए there's a lot of 1v1 fights on the table 2 here. are below 50 HP and 1 is at 55 तो 3 ना देखे गया. One man up on top of the Fallen ही है बस 100 HP Fallen को. Furia 44 but it's basically lower. They've got a kill right in front of them on the fence. Demon sneaking down. Oh, मारा रे मोलो. Raise the reflex. A lot of solo plays here, just getting iced out across individual the map brilliance by की वजह से Furia. जीते राउंड भाई. Crazy मारा हुआ. Knowing what's going on there, because Furia are absolutely everywhere. They're hell, heaven, and down secret with the bomb. So Fury changed their mind on Yakinder splitting Baba. that site. It was stacked up. Oh, for Faji, Yakinder Faji. Just walking that bomb down low. No room for error with 10 seconds. भाई ये लोग ट्राई भी नहीं करते पता है. Just trying to survive now on foot. ट्राई नहीं करते बोलते ट्राई करने गया एक बंदा मर गया. ये उतर के तो मारने का कोशिश तो करेगा. Dropping Yakinda. Yakinder Faji. 2 kill दे Symmetry looks to save. Furia are off to the races. 4-1 lead on this T side. Nice one, nice one. Good lead, good lead.
Fury. If you're even able to get one piece of the foot machine kind of in their heads, playing a bit more passive, giving up a bit more room, they start to lose a tremendous edge on this CT side. Because it's a team where the wavelength is about those gunfights, is about taking as many as you can. In this round, that one Molotov displaces Demon, Yard goes dark, suddenly they lose all semblance of map control, and you see what it does for Furia, right? They felt like they had all that room. They caught Demon kind of really unaware as to what was even happening in the round in the vents. It's CT side of Nuke, your protocols are going to be tested. Your responses are going to be tested. Fury are playing a very mobile game where they're constantly keeping you guessing. Something you mentioned was how Foot like to regroup, they like to repush, they like to play together and just cause chaos. It's a hard map to do so. All we can expect to see on this is Foot maybe going for lobby control, right? And you can't do that off the rip. You have to let Fury take outside, show numbers, then reclear the lobby, look for K55 on the lurk. We've yet to see anything like that because Fury haven't used their smokes to go down secret for the most part. They've been just abusing this top site. Are Foot going to find any sanctuary in the lobby here? Because they already look more aggressive in this round. Or posted hub. Demon deep on ramp. Furia hold off. They've got Yakinda kicking up a fuss in yard. But all eyes trained on this lobby aggression. Really feels like Fury are trying to bait them into this lobby push you were talking about. But don't give it to them. Instead, just hanging around in these aggressive positions, but never quite crossing over that line into a push. Here we go. Here's the exec for Furia. Entry gets denied. K55 gone, but that bomb makes it down the vent. Yuri's not so lucky. And so for now, Fallen, the only guy down there, maybe the only guy down here all around, as Yakinda lost out in the yard. Was selling that fake earlier on. नहीं रे, Yakinda पाजी. It's a Fallen 1v5 attempt. Symmetry closing क्या in. Fallen 1v5 कर देगा यहाँ पे? Goated 1v5 होना चाहिए. At least dodge this fast pathing in through the vent. Fallen's put a bit of distance between himself and Foot. Dodges that flash as well. First man in is low. Surely not. Fallen 2 kills deep. Defuse getting held now. And no time for Fallen to win this. They're already just sticking it. Planted safe, nothing he could do. Gives him a run for their money though. Nice try, Ray. Nice try, Fallen bhai. Round. Considering that's one man with the bomb down lower, Fallen extracts a bit of value when all is said and done. Didn't feel winnable, just given Yakinda's position. If he kills Krabeni, he can cut vent rotate, he can buy a lot of time. I was getting scared in that 2v5 till he died. Fallen won't do it. अगर वहाँ पे यकिंदर पाजी एक को भी मारते ना बहुत हेल्प हो गया होता. सोचो ना कितना टर्न अराउंड हो जाता ये राउंड. बस यकिंदर को ये मारना था ब्रो. देखो इसको मारना था बस यार. Fallen 2 निकाल दिया almost. Demon in an aggressive position could get punished by this flash, but he dodges it. Lays down the dead in ramp. 2 kills. Orb rotates in. Furia and that molly bleed before they go for the play. And with that orb firing off, they know they've got the room. What you do with it is the question. Oh, Symmetry hears those footsteps, comes back with his AWP. Boy, short Symmetry! Check. Trusted the smoke too much, and now Furia have that top site. This could go wrong. Again, right, it was a bit of a heavier lead in towards lower 4 foot. The A site is where Furia have found so much of their success on this T side. On planted, Molidoy dead on that clear. Handed off to Yakindar in the 1v3. Timing's everything here. You'd love to find X-Flag. With that, you'd have all the info. And he is looking to find this timing. Defuse being held, so Yakindar's got to move quickly now. Gets them off that bomb. Can he find a follow-up? Yakindar brings him out of it. Tech9 pulled as the nerves set in. Defuse wasn't being stuck, but is there time for this? Bomb can't get found. No kit for Symmetry. But the round swings the way of Furia. Crazy. 1v3. Felt like Symmetry had the time there. He just couldn't find that bomb in the smoke. Picked up the kit. Can't get on it. So Yakinda wins it to the clock. Massive pickup. In the clutch, plays that to perfection, gets him off the bomb before he even takes a fight.
Squeezed every second he could out of that round, and too late for Symmetry. So Furia will laugh it off. 2v4 and a 1v3. Puts Furia back on the board, and that was their money on the line. Same angle for Symmetry again in HUD. Serato won't give him an inch. I think it's in those moments you see the brilliance of your Kindle, right? I think in a different world, in a different timeline, where in a couple of years later, he could have been a great fit for a FUT squad like this. But he's also just got great smarts to back up his aggression, right? Always been someone on a micro level just fantastic at forcing the kind of reactions he wants. He gets you to play his game. मतलब हरवा तो नहीं दिया, but shows इसमें that in जितवा the दिया भाई. 1v3, just Crazy. piecing it Compensate together कर दिया रे. beautifully. लाला. Great catch for the Symmetry orb. But no good deed going unpunished here. Fallen instantly claws one back. 3 players down through lower, and these footsteps are heard by Jugs, who starts his round down here. They're stalling for Fallen, I think, but this is still going to be hard for Fallen to get into position. Would they want to go up then? Fallen's taking roads on that top side. It's not going to help. Molotov just gets his double entry. Fallen is lost to the hands of time. With that bomb down, the time now sits in the favor of Furia. 3v2. Fallen nowhere seen, so both players out ramp on this site. Molotov trying to fight his way out of this box. Now he stalls them out. Nice. Backstab. I was getting very scary with a lurk on the other side of the map, but Furia just do it on the backs of Molotov and Yuri. And even when you're seeing FUT with the read now, in strong positions, just not able to convert rounds. They had an anchor there. Had good timing on the retake. I mean, the way that Furia are kind of using these extremity players feels really, really good right now. Constantly buying time for them to find their impact, always being a thorn in the side of this defense. And it's not nice rotating around CT side of Nuke, feeling like you're always looking over your shoulder. It leads you to start questioning a lot, right? You start to question your read of the game. Knows about this boost, gonna go looking for it. Still not a fight he feels forced to commit to. Knows that just him being here puts a lot of pressure on FUT. Crazy position for X-Fighter as well, but we've seen all these vent dives for Furia. This will be a curious round to do it in. Main smoke, and Furia, again, nowhere to go. Weakened A site, no stopping that. Mordoy and K55 with entries, lobby defended, and main located here by Furia. They saw that boost outside. So a clean round to keep him really easy on this T side. Much to it here for Furia. Just looking like the more comfortable team, and we're seeing the woes of Nuke hit FUT in the face now, as they can barely hang. I feel like Symmetry's a good way in here for FUT. He's been in aggressive positions on the hub orb. He's hit all his shots. Can he be a game changer on the CT side? Can they put him somewhere better, somewhere more impactful? You are left with this big worry, are there? Just have too many holes opened up in this defense. Furia have been willing to explore every option. They have been pretty crazy calls on this T side, not ending in the usual means. Bunch of A splits to kind of get FUT nervous off the rip, but then rounds where they're everywhere and nowhere at the same time. They'll be taking heaven when in reality it's a triple lower split. It's been a very, very hard game to get a read if you're FUT. And if you don't get one soon, I think this CT side is going to be well and truly away from you. You're at the full mercy of Furia at that point. Another example of it, right? 3 players crossing towards secret, but Yakindar's got his eyes set on taking away this hell control. You don't feel like you know where this is ending up right now. It'll be a good time to go and clear lobby, at least try and get some info.
in this traded position, and so that's what Foot do. It's the right answer, but it's not going to net you kills here. And as you clear this position, Fury get closer and closer to the round winner. If Yukinda flanks ramp, it's perfectly teed up for Fury to close around. He's not in any hurry either. Let his team get space. There is a check here, but an ugly spray from Yukinda lets him down, and that gives way to a retake here for Foot. Fallen's going to charge over the door, try to put this bomb down. Shot! And is hitting hard on this B site. Gets another entry. Crazy. Duke somewhat ahead of the timing here. Arriving sooner than Fury were ready for. Missed shot from Molodoy. And so now these CTs close in, taking position back. One of the more winnable rounds that Foot have found themselves in. Fuse tapped, tries to bait a peek, and they get what they were hoping for, but none of the kills. Yuri and Molodoy in these powerful post plants. There's kind of nowhere left to run for Dukes. No round to be won here in at lower. Everywhere Furia go, they find success. Yeah, just looking like really uncomfortable positions for Foot, where they don't really know, how to retake that site. Like the cover isn't there on the door. They have no util to stop it. Player peeks from the right side. They're holding left. These are just unfamiliar positions on a map that has plagued them in this year. Despite all of Foot's success, clearly Nuke is their weak spot, and Furia are pushing that advantage as far as they can. 8-2 up. Pure domination. At no point have Foot felt like they're in this game. And Fury are just playing with their food now. Not even smokes outside, just 4 players walking dry. And you just feel like this is going to work because everything has. xCloud spotted down vent. Does that bait them into Krabeni? He's got to clear this corner. And he does not. One rifle trapped though. Fallen spotted, drop in, good damage from the captain, but still no good deed ट्रेड हो गया भाई 3v3 अभी. लेकिन यूरी का लो HP है भाई. यूरी का HP देखो भाई. ओह कैसे यूरी यहाँ पे निकाल दिया है. K55. I think he's great timing for the backstab. Oh my! Out of xCloud. And so a little something, a chance, a sliver to hold on to. At the end of this first half, shooting for 4 now. That's the goal for Foot. We finally get to see some chaos for Foot, right? 3 players coming up, secret, outside, main, everywhere, all pushing together, where they do their best work. Safe to say, winnable for K55, but a beautiful flick from xCloud. Will keep them in this half. Desperately looking for a 4th now. चड्डी खोल दिया भाई मेरा. I mean, you see K55 almost in disbelief. He doesn't miss those. He doesn't mess those up like that. Yeah. That's not the K55 you've come to expect, but I think you can ride it off if you just go right back to your winning ways. Top silo nade stack on A, but nobody home. They just get that entry given to them through the huts. Do you just jump on this Furia, or do the kills just keep fumbling their way into your grip? Foot getting flooded. They're not floating, they are sinking here on this CT side. Symmetry in. Said earlier on, maybe his AWP could be a difference maker. Well, it is in the right place. It's in this moment the individuals have to show us what they're made of. 4 rounds, not a hell of a lot. But it's all they can hope for here. Last ditch rotate, and they hear him loud down the vent with Heaven control taken. Symmetry takes himself out of the limelight here on that rotation. The top site falls, and a retake now being demanded. Just haven't seen Foot win any of these positions. Sure, a couple of retakes early in the game. But this, man down, up the vent, round Heaven. Couldn't be in worse positions. K55 has this cross covered on timing. Krabeni is very late, but Fallen keeps his eyes on the prize. Foot walks slowly into their demise. Nice shot from Krabeni though. Could that open it up? Back sight, gotta get that one. Symmetry tries to dodge death, but indoors it's K55 and Furia make a statement. A 9-3 run on the T side of Nuke. Thank you guys. Furia Boy seems to be back here on Nuke, and I am joined by a legendary Brazilian host, Salve Nive. It's a pleasure to have you here. You guys are like just crazy. The Brazilian fans' energy. What is so special about you guys and CS?
They are amazing, right? I think this is because we never give up. This is in your blood, in our history. It doesn't matter how hard the challenge is gonna be. Yeah, you guys never give up. On n'abandonne jamais, nous les fans brésiliens. Et je pense que ça se voit. And today you're not wearing the host cap, you're wearing the fan cap. So any special message for Yuri, maybe? I'm proud of you. Always am, and keep going, keep doing your best, and keep rocking. I love you. Wow, beautiful words in the city of love. Let's see if the Furia boys can take it on Ewc. Well, Yuri's certainly feeling that love right now because he is excelling here on Nuke. Guy is having one hell of a turnaround. Was a little quiet on Ancient, but he's been a force to be reckoned with, as has that Modular. A welcome return of form from him in this dominant runaway half. Furia, they were chomping at the bit to get onto their to see why K55 lays down death with those dual Berettas. Furia want this to be a very quick second map. We're just 25 minutes in, and it feels like they are destined to take it here on Tumbleweed goes past as they think about Dust. Our third map of the series. पगला गया भाई हर बंदा कुछ ना कुछ मार दे रहा है. On Nuke, absent CT side and pistol away from them to start their second half, unless Kripenny's got a 1v5 of his own. Not today. Furia seal the deal. Triple kill from K55. And a reassuring sign, I think, from Furia, who fought very close on Ancient. But now on home soil here on Ewc. भाई ये देखो क्या मारा एक दो Hell, तीन even K55 and Yuri, and you talk about the experience. 5 सेकंड में ही खत्म भाई पिस्टल का होप the इनका knowledge of what it's like to be the team on the come up. The guys feeling the nerves, and they know, they really know just how twitchy, how lost, how nervous Foot are feeling here on Nuke. It is a completely different tone to what we had to start this semi-final. And that can feel really jarring. That can cause a bit of whiplash. Because you try and zoom out, you try and look at the rest of the series, it is going to be a tall task to rein this back in if we get onto that third map, as it feels like we're going to right now. भाई फिर भी फॉलन ने दो निकाल दिया the ramp room, but with Molodoy set up, it's no contest. Shut down from Furia. मैं one sided जीत रही है lose towards that finish. And how uncomfortable we made you. Take us to a map where we know what we're doing, and it's no contest. I think that's going to be a massive boon for this Furia squad in the grand scheme of the semis. A rare opening for Foot, a 5v4 that goes untraded on the back of that spam. As new boy X-Cloud, top performer of last map. Spamming that smoke, catches your kid at crossing red. They're going to set him up to succeed here in the yard. You can see Foot ready to react on ramp. Kripenny with a second wall. Foot try to make it work. Oh, okay, that's 2 smoke shots for X-Cloud. He's not seen an opponent yet, and he's had tremendous impact here. Go on, Fallen. But speaking of not seeing opponents, look at Fallen hiding out of the orange box, a position that's so often overlooked. The symmetry with eyes on. Nice check. Fallen's tricks get denied. Love to see that. So breaking this silent streak, अगर सिमेट्री नहीं देखता वहाँ पे तो 3 किल थे फॉलन के. Finally some kind of response for Foot. When it comes down to 2 X-Cloud smoke spam kills out in the yard. Reproducible? For Foot, you know, maybe, but no, it shouldn't be, right? You're going to have to earn these rounds. You're not going to get chances like that every day. Well, while you're here, take away the guns if you can. Now, it's a try for X-Cloud, but 50-50, picks the wrong side. So Foot get a chance, an opportunity, if only that, on this T-half of Nuke. Gifted by X-Cloud. Terrorists win. I mean, there's a reason why the allure of Nuke has always existed to these championship level teams. It's a map where brains and brawn are paramount in equal parts, right? It's not just an aimer's paradise. And Foot are a squad that do like to answer with muscle, do like to answer just with brute force.
Furia haven't just had that, but they've had the reads, they've had the maneuverability, the protocols to back it up. Ewc with another entry. Back-to-back rounds now with opening kills falling in Foot's favor. Last time, that entry out in the yard was enough. Looks to be the case again. A clean sweep on the A-side take. Fallen hangs around for this. But do you really think he's going to give this 1v4 a go? Well, they'll come to him first. Reboost in the heavens. And eyes on for Fallen, who will just scarper down the ladder. Or not. Oh. No. Disappearing act. He grabbed that AWP. He ain't getting out of that. Thank you very much. Delivers it. Cemetery. And so Foot, they won't look a gift horse in the mouth. Get that entry off Ewc, they just pummel the top side. A lot more to do on this T side. It at least starts with an eco now for Furia. Back-to-back gun rounds. You get a gift. And this round could be Foot giving Furia a Brazil taste of अलग their आना गा medicine. रहे In that first half, there were a number of lower stacks for Foot. Furia moving into an uncontested top site. That's exactly what's about to happen here, but the other way around. Yuri not in a spot to fight for this. P250 in heaven. You were just hoping they played into your gamble. Yeah, stopping some saves would be nice. Punish the escape. Then he just drops down Ben. Round lining up nicely. Still do want to lock in from Furia in this next gun round. Why let it get close? Keep Foot under your thumb. Yeah, I mean, the big advantage you have is the veterancy in this squad. You want Foot in their heads. You want them kind of doubting themselves, their moves, the way that they play. Last thing you want is for this young group of guys to feel like they actually came through and kind of recovered here on Nuke from the most uncomfortable of beginnings. And I don't think it's going to take much for that to happen. Hell, we could even be approaching that point already. Because this was a danger of being an absolute blowout. Now you're making it competitive. You're putting the pressure on Furia. They call the timeout. You want them to feel despair, not resilience. 5-round game now, and the gun's coming back out for Furia on the tail end of this timeout. But just here to soak up every second on the stage. Keeping in mind, tomorrow, an arena game and a sold-out Accor Arena. It's going to get bigger, it's going to get better. Can Foot get there? Dash through. K55 more than ready for it. They'll try and scarper down the vent. Bomb in tow. 2 players making it down. And xFlow does provide some levity out in the yard. Still a good position with an AWP and a post plant as well, but Lobby locked out. Just going to have to hold the vent. Where will Furia rotate? You know, you've got the edge in this lower fight. You only heard 1 or 2 players make it down the vent. And so Furia don't concern themselves with the missing 3rd man. They try and battle forward into a crossfire here. But with Demon dead, that lower sight is lost. And with Symmetry out of position,
This is Furia finding that elusive 12. Yeah, he missed it, and that's a bit scary there for Foot. If Krabeni doesn't re-peek, he can jump on Demon's next contact, but he goes back for more a bit early, and both players get isolated by Furia. To well played by Furia not to rotate vent so soon, ready for a lobby lurk, and as Symmetry moves off the vent line, that's when Yuri takes it. So some awkward moments there in that post spot again for Foot, and you are just seeing the पहला defuse इस match का success on this map. Lack of comfortability exploited by Furia, and so that is the round that should lock down this game. Map point secured. Furia looking to force Dust 2 in this series. ये तो हो गया थर्ड मैप जा रहा है डस्ट When जा you रहा have a है team feeling like this, I think it just gives the CTs so much to fall back on, knowing that the fights are almost going to come to them, and you're seeing them in a lot of these moments. Furia just holding their ground, holding their lines. Foot come knocking and give the fights away. Hell, it even kind of echoes the ending of that Legacy Falcons game from the other day. Legacy just knowing that Falcons felt desperate, were the guys feeling the pressure, were going to make moves, and that game ended with Legacy essentially holding their positions. Falcons walking into their crosshairs. Furia have got to have that exact same feeling here. Multiple players crossing in the yard. 3 make it down secret, and an entry found as Motherboard bested on the ramp hold. Duke's has 6 kills, but he has 2 fantastic entries on this T side to give Foot a bit of chance. Serato, a position that might be unsuspected here by Foot. Shadow, perhaps. Serato, patience. Symmetry needs his quick shot. Nice one, Serato. That's the bomb now away from them at the feet of Serato. Krabeni even missing that timing on vent. The one position you were meant to have gets ripped away from you. And so it's down to these 2 ramp side. Can Demon and Jugs, 2 bottom performers for Foot, keep them in this, or do Furia end it here and now? Dust 2 waiting in the wings. And with that bomb lost, 20 seconds left, you are fighting a losing battle. First man dead on the crossing, and Demon iced out. A very different Furia at the arrival of their map pick. A dominant win as they steamroll through Foot. And now with Dust 2 waiting in the wings, Furia are flying high, heading onto map 3. Yeah, everybody's showing up in this second map for Furia is a resilient sign. Yakinda with a great game, a great day after struggling earlier here in the playoffs, and Serato keeping up appearances the whole damn tournament. No signs of stopping now. Those grand finals wait for a team, and Furia look to earn it on that third. What an incredible cast and what an incredible crowd. We are jam-packed here, and it is full of Furia fans on the left side of this arena. Pimp, we knew this was their map. We knew Nuke was going to be a strength. Did you expect this result? In a way, yeah, to be completely honest. It was good to see Furia coming in and delivering. It's good to see a favorite live up to the expectations. Maybe slightly disappointed that Foot weren't able to put more of a fight up, Peter, to be completely honest. This was the 8th loss in a row for the core of this lineup. It's been 134 days since they last won a game of Nuke, so 135 now. Yeah, exactly. You know, and it'll be unfair to say I didn't expect it, Peter, but I would love to see a better fight from Foot. And it just seems a little bit of a mismatch when you look at the playstyle that Foot keeps bringing to the table. It really seems like when you look at how they played Anson, it's all like most of the rounds are going to be finished before the minute mark. And here on Nuke, it's a lot about understanding rotations, making the right call, playing out the correct situation, the 3v3s and the 2v2s. And I just don't really feel like that's the strength of Foot, right? When they turn their attention to T-side, that was where they went with a lot of aggressive interplay, explosive interplays, and that's really what they expect of you. It's like it's brawly, fast-paced counter, that works out. But it's just not enough on Nuke because Nuke is just required too much support. There's been a lot of fans coming in from all over the stages here at EWC. We had 4 different games going on in the final week. For those that are new, Furia has a number of stars, but one of them is on the come up. He goes by the name of Yakindar, and one of his tougher jobs, he's helping call the shots. In fact, they're trying to groom him, it seems like, to be the next IGL. Jacob, how do you do in this one? I think he's doing a great job, you know. Yakinda's been an in-game leader before as well, back in Team Liquid in those days. Didn't necessarily, you know, transcend into becoming a great in-game leader at a time, but he gained a lot of experience, and maybe he's using all that experience now to give it another shot. If anything, Peter, individually speaking, he's playing well. He's a difference maker for Furia. He's aggressive. He's involved in a lot of the early situations as well, and so far this tournament, he's been looking
being like the old Jikinda that always finds impact. And Furia really need Jikinda to step up as well. You know, coming into the playoffs, he didn't have the greatest tournament. In the quarterfinal, we did see some of that old Jikinda, some of that space taking that Furia really needs. And he is the guy, he is the spearhead of this team. And he is also very much needed to go and create a space for Case Round to be playing around, winning out those clutches. So it's important to see the Jikinda continues to perform, because he is a guy in this team that has been so important for their recent success. And we can just tell also the fact that when Furia didn't play their best, it was also because of result of Jikinda not showing up. So he's a very important asset, and it's just good to see that he continues. He came away with the clutch. You saw his impact outside. Yukinder having a great nuke, but he's going to have a better Dust 2 if they're going to power over Foot. Let's take a look here at some of the B plants, though. Pimp, you thought this was an interesting strategy that was working? Yeah, I feel like that was story of the game, you know. Foot could do nothing to stop Furia from getting down to that lower bomb side. You're going to see a combination now of a lot of bomb plants on this B bomb side. It even started in the pistol. It felt like Furia could just walk all over Foot as they like to in this game, and that's where my disappointment came from. I'm pretty sure Foot were aware that was the game plan coming in for Furia, but you see it round after round, being caught off guard, being caught, rotating down towards the vent. The way that Furia played with the door, they played with the smoke, and constantly dropped down the vent with the bomb Peter. That was very impressive execution coming in for Furia, but also a little bit too one-dimensional for my liking not to be stopped. Yeah, Dupree, you were saying that this is almost on Foot. They need to get better at this map. What is it about their playstyle that doesn't fit this nuke? I think Foot is just so explosive, and they play so much on the Nvidia side and making things so chaotic. And sometimes when you come into this situation, also in what Jacob just brought up, when it's like Fury just has to figure out, right? It's when the rounds go into like very close, and they have to be like good with communication, understanding where the Fury players can be like late round. That's why they lack a little bit, right? And it's just a bit of a mismatch to what their strength is. So there's definitely some work to be done on Nuke still. And as Jacob mentioned, this is the 8th time in a row that they lose Nuke. So it's always been a little bit of a thorn in the side for them that they can be punished in a video like this. We've got some more highlights to roll through, gentlemen. The next one, it's coming from our sniper. Let's take a look at Modular and what he's doing on the op. Did you see an impressive game from him? Does he need to go off with the op on a map like Nuke? He's slowly but surely warming up into it. I think if anything, he's going to be needed on Dust 2. That's August Paradise, where he can roam around as he like, you know, both on the T side and CT side. So to see him find impact, to see him play well, T side on Nuke as well, not the easiest map to find impact with the AWP, but to get him warmed up, you know, to get him into the game, that's going to be a massive win condition for Furia heading into the 3rd deciding map. And it is a little bit of the story of Malta. He needs sometimes those maps to warm up into, and then whenever he hits that 3rd map, that's where he like really wakes up. And it's also going to be very much needed on our 2 now, coming into that being such a heavy op map as well. Tuning him up for a big Dust 2. It'll be Fallen's 1400th map played on LAN. A ridiculous accomplishment. क्या बात कर रहे हो? At a player who is on the rise again, xCloud with a good performance despite 1400 map. Good enough Oh shots my that we should God. revisit some of them. Crazy नहीं है ये What does he bring to the achievement table, Fallen and does से. he have his hands full on Dust 2, or is this another map that'll play into his hands? I mean, he's going to have his hands full if Foot wants to win. If anything, what he brings is consistency to this lineup. He's consistently been one of the better performers for Foot throughout this tournament. Very impressed with how he's always showing up, even in a loss like this, where the team clearly is not working out. xCloud finds a way to always have a bit of impact. So they really have signed not necessarily a superstar, but a very consistent player you can rely on. And that's exactly the consistency that's also going to be important now moving into those 2, because that is a map where he can, you know, keep his explosiveness, keep up his DNA of playing very aggressive, trying to catch those smoke timings specifically around mid when they turn to the T side, and just being a nuisance strike, being the guy that you almost feel like you have to expect the unexpected. And that is also a little bit of what Fury really brings to the table. If you're just waking up and joining us, welcome. This is our semi-final. The winner of this next map, they are playing in the A-Core Arena for the lion's share of our $2 million prize pool here in Counter-Strike 2. Let's take a look at this match and how it's gone through and what we have in store for us, because Dust 2, the classic map, is coming back into the mix. A fan favorite as always, Jacob. Yeah, it's been a very, you know, it's been a little bit of a one-sided game so far. I don't think many of us expected Foot not to win Ancient. Same can be said for Nuke. I think we have a middle ground now on Dust 2. Both of these lineups, they like to play Dust 2. They played Dust 2 in this tournament so far, have some decent results on the map as well. So, if anything, I think we're finishing off Peter here with a bang of a matchup on a map that's very open for interpretation. Both teams can play their own style, so to speak, without being too hindered in doing so. And then it comes down to who is the better team, who has the better individual
individuals and who got the better day-to-day form. Yeah, Fury, they've said themselves that they had to put in some hours and some work into those two, and I think that it has paid off, right? Where if you turn your attention to Foot, they played against Mouse on this map where they actually had a pretty bad start, but they actually managed to claw their way back and then themselves threw a very big lead to make it into overtime where things turned into their favor, luckily for them. But, you know, Foot as a team, you know, it's these maps where their DNA, their playstyle really comes into fruition. And I think that's also a good map for them to finish on, regardless of how they've looked, but it's still a map where their playstyle can be a little bit more, like, you know, explosive, and I think that is really what is needed for them. Like, they need to have a map where they can breathe, where they can have the individuals make these plays, finish it out with some fast B-pops, and just, you know, try and squeeze Fury together. Merci, Perry. You have been an excellent host here for Counter-Strike 2. We have a big map freak coming up in just a moment. Yeah, I have 2 bomb. 1 double. Picking double. I flash 1. Body single. Oh, body single again. Picking. Watch single. I'm coming double, cover double, guys. Okay, I'm flanking right. 2. No cheat. Omar. Weapon. Nice! Guys. We got some Foot fans in the house here as they're going up against Furia right now. They're representing, they're supporting. First of all, tell me, why are you a fan of Foot? Because Demon and Symmetry kills our friends and they're just fucking crazy and amazing. Okay, well, they're also crazy good at the game. How are you? What is your Premier Elo? My Premier Elo is 24K. Okay, that's pretty good. And what about you, Premier Elo? 24,000. Oh, okay, 224Ks ready for Foot. That's a good start. Let's see what the rest of the fans have got. My man, how long have you been a Foot fan? It's quite a new team. 2 years. 2 years? Not Foot exactly, but Navi Junior. Okay. Tell me, what is your Premier Elo? Last time I played, 23,000. Okay, that's pretty good. A lot of cheaters? So many. So many? So many. We need it fixed, right? We need to fix that, Valve. Work on it, boys. You're playing CS, you're supporting Foot. What is your Premier Elo? My Premier Elo is 1700. Okay, that's pretty good. That's a very good rating for it. Let's see if we can get some more Foot fans Elo. I found a Vitality fan, and they got eliminated, so he's now supporting Foot all the way with this one. Why are you going for Foot today? Because he's more fun than Furia. Furia's won shit, haven't they? They're already on. You want the underdogs? I want the underdogs. I want new people to win. We've seen Furia. Plus, obviously, they've got all the fans. They've got all the fame. Let the new guys. I mean, obviously, yes, they have won one before, but not like this. But not like this. This will be epic. All right, so tell me, I'm asking Foot fans what their Premier Elo is. What is your Premier Elo, sir? Not high enough. It's only about 6,000 at the moment. Hey, well, thank you very much for being honest. Tell me, it's 6,000. How hard is it? Do you run into many cheaters? I've not seen any cheaters. I don't know. I don't know what the cheater problem is. That's a good thing. Just a lot of people who don't communicate. That can happen. That can. Well, keep grinding. Thank you very much for your time. And there we have it. It's 6K. It's a nice place to play CS. All right, so the Foot team, they're exciting, they're young, they're up and coming, and they're proving themselves in Tier 1. But I was asking their fans what their Premier Elo was. And they have one guy with 6,000, so it brought the average down quite a lot. They had 18,800 overall. But hey, they can do better going forward, I'm sure. Let's see what other teams have got. There we have it.
Hello, Ollie. Welcome to your interview. I'm excited for the last elevator bit. What I will say is I don't know too much about our guest today. Bye-bye. Bye-bye. Hello. Hi. How do we want to do the intro? Just something about going fast and how funny you can't go. Hello, my name is Gina Darling, and I flew all the way to Paris to surprise Ovly May, who's been here for about 2 months now. So you'll be here, she'll be here. She thinks she's doing a different interview. Wait, should we make bets on what her reaction's gonna be? Maybe like €5 per, we'll put it in a pool. I say she is going to stand there and go, she might start crying. I'm putting my money on her standing there just, How do we want to do the intro? Just something about going fast. You know? Hello, Ovly, welcome to your interview. Are you actually real? I know that you thought it was over, but you still have one more interview to do. I called it. She was gonna cry. I get €5 from each of you. What do you say we start this interview, Ovly May? I'm actually crying. Don't cry on my show. Don't cry on my show. We need no tears on my show at all. Hello. Hi, how are you? I'm Ovly. Wait a second. This is my show, though. Just like everything we do in America, I am taking your show. It is mine now. I own this show now. Okay, so I have some questions for you, Ovly. Do you think that you're the only person in the world who is recognized for not recognizing someone? No, I'm pretty sure that's gonna go on my tombstone. Oh, you know what? Before we actually start the questions, I figured you have been working so hard and you must be so hungry. So we're gonna play a game of Chubby Bunny because when in France, we have croissants. Ovly, here's your croissant. Uncle. And after every question, we just shove a little bit of croissant in our mouth. Did you know that you're not allowed to put jam on that? Otherwise, they'll beat you with a baguette. I totally did that on the plane. Is that why they never gave me any freebies or anything when I was so nice to them? So, Ovly, what's more sad, you think? That you work in an elevator or that this is probably the biggest office you'll ever have in your life? You know what's funny? I was getting so ready for you to say what's more sad, this or your dog dying. But do I get to ask you a question? No, this is my show. Okay, that's fair. Ovly, you've been here for 2 months. I have been here for 2 months. This is probably the longest gig you've ever had. How does that feel? Honestly, I feel like everything that I've done has been about like 2 years. So why not speed run it into 2 months? Yeah, right? I feel like that's fair. Ovly, some people have red flags. Some people have green flags. As a person who has clearly given up, are you the only person with a white flag? I know where you're gonna go with this joke because I know you so well, but we probably shouldn't. Given given the atmosphere and the. Oh, I thought you were gonna say still pants or still pants. I got no underpants. क्या बोली? That was not English. It was French. मुंह से सुपारी निकल के बोल रहे बाबा. I'm just surprised that they let both of us on camera for this stuff. Jackson. Jack. Like put a picture of Jack like right here in the corner. Right here in the corner? Yeah, right there. Like find the worst picture of him, put it right there. Put it right there. That's Jack. What if this thing just plummets? Oh my god, I wish. Wouldn't that be hilarious? Wouldn't that be nice? That would be so funny. Oh my god. We wouldn't have to take the flight home. Yeah, save money on everything. You've been gone for 2 months, Ovly. I have. Leaving me at home alone in Los Angeles. What besides me is the thing that you miss the most? My computer. I miss that so much. I miss that so much because I just want to play video games all day. And Paris has like no freaking internet. My hotel did not have Wi-Fi for 2 weeks. Do you know how hard it is to stay mentally stable, or at least whatever our equivalent of mentally stable is? It's very difficult. Would you say you also miss air conditioning? Oh, girl, you have no idea. There were people that were straight up like getting into fist fights over fans and whatever the French equivalent of a Walmart is. Le Walmart. Le Walmart. Walmart. You know, I'm going to conclude this interview. Okay. That means I can break character now. Oh my god! Thank you so much for joining me on my interview. I wanted to come out here. Oh my god, we're gonna die. Did this? Oh my god. Okay, is this where they kill us? Is this where? This is where they? I told you I had the keys. Ball so hard. How to find me. Thank you everyone for joining us here on our interview today. It has been such a joy to be able to surprise my best friend Ovly. My name is Gina Darling, and my surprise guest
well, I guess it's me, but my guest here is Ovly May. Thank you so much for joining us. Thank you for joining me. And then, do you want to go drive a race car with me or something? Because I did that last week and I almost crashed. Let's do this. Jack! Let's go, Jack! Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by Play. फाइनल मैच शुरू क्यों नहीं हो रहा है भाई? We can do this. I'm in position. Area clear. Got him. But the defuse is coming in. He's still going. Oh, just Terrorists win. It's time to find a finalist. Furia versus Foot rages on to a third map, and Furia have felt like the stronger team across this BO3. Can they prove themselves come Dust 2? Similarly, weak map for Foot in recent months. 5 out of the last games being a loss, only breaking that trend here at EWC over Mouse, a formidable foe, but an easy one for Foot. It's time to level up against Furia. Yeah, these grand finals coming down at 2 Dust 2. And with Colin, the figurehead, a man whose career might be in its final chapter, but he has never yielded to the passage of time. He's chasing those last few hits of glory versus a squad who are on their first year glow up, their first years, their first steps, walking out onto these stages, these arenas that Fallen has called home for decades. And so with one spot left, with a map left, and a chance to grasp greatness, is it Furia for old time's sake, or do Foot's lives change now forever? Dust 2 is where we're ending things off, and a long take from Furia to get the ball rolling. They're moving in quickly here, Xploud alone. They may start to join him and get into positions, and so he'll steal himself away. What a nice up over the top, Fury gets rid of him. Sight taken, long wrap. Lots of trader positions here, and this one's still up in the air. That kill from Molidoy could be round defining, as it's giving you a way out. Bomb plant found. Juke's closing in. Molidoy dead as well, and Yuri finished off. That's Foot from the back foot. And a pistol round secured. Maybe gonna shake off some of those nerves from Nuke if they were following them into map 3. Yeah, Krabeni sets an example. 4 kills from the captain here in this pistol round. Shows them how it's done in a post-spawn, no less. And sure, you can look at recent maps and you can look at the numbers. You can say Foot aren't favored, but at the end of the day, half an hour, 40 minutes on Dust 2. It's a bit of a death match here for Foot. They've certainly got the players for it. Can they handle the pressure is the next question. Krabeni puts his best foot forward, and now Furia force up. To Galils, straight out long, late repeat here, teed up by Foot. They flash their corner. It's messy, but they get out. 4v4, got to worry about the flank though. Here and Yuri running up short side. Molidoy collects another kill. Symmetry wants to force this issue, get back control, and he will. They lose his sight. And they're playing pretty quickly here around these smokes. They're actually trying to get ahead of Good this. shot, They want to fight before that bomb goes down. Jukes with a double. And that changes the nature of this. A round that felt like it was hanging in the balance, but fought for hard by Foot every step of the way. Round recovered, round saved, and lead maintained as that force buy gets denied. Yeah, you call the pace out, but perfectly done here by Foot. The fact that they retake the site so quickly. Of course, Symmetry has to win that long control battle, or they've lost everything, all space, but straight up CT, keeping the pressure on, not letting Fallen get into a post plant. So Foot keep fighting and Furia keep forcing. Guns come out again. Fancying their odds. Hurry! Scout in middle.
foot dodge danger. Oh, dangerous setup here. Kinder stumbles in. And by the time they know, it's already too late. That bomb gets smoked out. Catch for K55. It's a curious push. Really trying to force every advantage off foot. It's Furia taking the pace out, demanding a bit of respect in the 4-on-4. Benny gonna try and fight and die for this mid control, but wasn't hoping that death would come for free. Team double kill for K55, an advantage now belonging to Furia. It's in these moments you get a little desperate, you try and push, you try and get something for your efforts. They lose that long player. A-site starts to feel vulnerable. You're looking at Symmetry, and he's got to do something big. Players right through this smoke. No. Molodoy firing off. Fallen gets both! That was the aim punch helping him through! Not even aiming there. Random stray bullet goes up top and kills the cat player. Run that back. I think it takes a lot for Fallen to be speechless, but surely that makes you so. That is shocking. That's the game just handing him a double kill. Hey, you're right, the aim punch, he had no Kevlar, just breaks the whole game. What the hell? Oh, क्या है ये? कुछ भी लग गया, bro. So, oh, I killed him. Okay. That is mind-blowing. I've actually never seen anything like that. It couldn't be more perfect. A round gifted to Furia. क्या है, bro? The game decides that force buy comes through. बेचारे FUT वाले भी. No. That's why we love Counter-Strike. Every now and then, see something you thought was impossible. Careful, Molodoy. Foot are not scared here on Dust 2. Maybe they should be. Yeah, neither's Molodoy hanging around waiting for that exact move. If there's one thing you know you can expect, it is a lot of these mid-round pushes. Now they do chase Molodoy down. They are going to get that trade, but he's made their life misery in his dying breath. That double kill sends Foot out of the round. So Furia competitive from the get-go. I cannot believe that they're going to get an early streak in this game off the back of that. Sure, it was still a very winnable position for Fallen. I feel like it should have just been a 1v1. Now Foot saving 2 guns, going to have nothing in the next. भूख लग रही है वे, रुको तो पूछते हैं खाना बन गया है क्या? I always just want to see that Fallen round again. I still don't think I've gotten over it. I don't think anyone should be over it yet. And I think that's the defining moment that shapes up the early game of Dust 2. Gets you onto this hot streak. Good cover from Molodoy, almost caught knife out here. And Foot want to bring it to Furia, all in round 5. Money where their mouth is. And they're very lucky that Molodoy doesn't actually hold the mid-cross, because they've only got one player here and he's very late. Could have been a punish. Long control through the smoke. Yakinda writes it off. It's going to be hard for Foot to try and force these fights in the usual method on Dust. Furia already setting a far slower tone. It's a map that can be brawly, but it would have to be on Furia's say-so.
whenever you talk about Fallen, you talk about mind games that come against playing with it. This has been a series where every step of the way, Furia have tried to match the pace of Foot, and I would say they've matched it very successfully. It would be one hell of a trick to completely change that on map 3. See how they cope with it. Slower, more asphyxiating style of play. Right site, right time. They catch Krabeni on a reposition, and that should be the round. I think you really should be looking to save your guns here. That's a huge exit to set yourself up for it. Furia come hunting a little bit. But you need that next gun round because Foot have nothing in the bank. One kill decided here for Furia. Foot play a safe game. Modoy is quite the AWP on the mid-cross, one of the few who can consistently hit the cross shots. Hope we get to see Symmetry's AWP out soon on this CT side, see if we can challenge him. Variety of ways to do so. See some teams be boosting AWPers up on the CT side, looking for those picks. Furia. Oh, they forgot the bomb. Looked like they wanted a gung-ho B round. They still do it. Facing it off with Molodoy's entry. Not going to come in, they'll just walk it in. Cloud. And Symmetry able to hold the line at first. Now they do lose that car player. Symmetry getting a bit hot under the collar here as the mollies make him very uncomfortable, and it's Fallen. Drive the knife in. Brings Furia into the conversation with that double kill. Shows how punishing this B site is. You can get 2 kills on the hold, string them out, but then if you get trades right back, Furia are suddenly favored. Gonna try and play it through the window, but you're at the full mercy of these crossfires. Demon looking for an edge, didn't see that all back in the tunnel, but Molodoy has repositioned. K55 up close, and this one's going nowhere quickly. Gonna learn very, very quickly that this B site and these retakes are very punishing. Demon dead at the swing of the AWP. So a cool move into the lead, building upon it now for Furia. That's a 3v5 as well. They get those first 2 kills. It looks like there's no trades in sight. Furia pause for a moment, backside molly. Trade onto X-File, Fallen just pre-fires that backside player. And suddenly Furia, smooth, B-site all theirs. We know there's no way back in. I'm back. Trying to make a play. Symmetry's all in position. Noted Fallen. X-Cloud not shying away from danger either. Nades come his way. And a re-molly puts him under pressure. He's going to have to push forward. Flash by it. How is he still here? They've got to know. Burning alive. K55 barely wins that fight. So 5v4 for Furia. What do they want to do with it? Still containing aggression, but looking at both B and long. Foot of gambling. AWP on the wrong side. Furia selling it further before they go back to this B site. Jukes and Krabeni with a lot to do. Uh-oh. Long push, but too late. As soon as Furia start to move, they're going to hit this site. Miss him entirely. Oh, good opener for Krabeni. Now telling Jukes to ready himself because this hit's coming. Cover there from Jukes out of the car, but now he's knowing about
discovered in this position, and two players ready to trade him. Second man, not even a requirement. Demon moves in, tunnel side, Motherboard ready for it. And Furia showing no signs of crumbling early on. They're in full control of this. And Motherboard wants another final. Wants another trophy. Cologne fell short. Furia gave us nothing against the Falcons. run and gun कर दिया भाई मुरुदी तो. With two of the heavy hitters eliminated, Furia eyeing up a heroic run here in Paris. I think, you know, from the moment the brackets for this playoff were drawn, you were looking at this side of it and you were saying Furia are the favorites. They are the team that is supposed to be making those finals. Where other favorites maybe have come and gone, let you down a little on that other end of the bracket. फिर भी मार दिया bro. Very Crazy. reassuring to see Furia pull through in stellar form. Nice Very shot. good point, because yeah, you can look at Fury and say, oh, they got lucky in the draw, but hey, even when we saw Falcons against Legacy, Vitality in a favored fight against Spirit, sure, less of an underdog, definitely. Well, these favorites didn't deliver. Furia right now are. So one thing to be expected, it's another to do it, and Furia are doing it right now. Already getting a bit of a similar feeling to what we had on Nuke, right? Where you're seeing these big holes open up on the map. The B site has not been able to withstand these hits out of Furia. That is a massive problem on Dust 2. It is a constant source of worry for CTs ending rounds in these B site retakes. You need favorable duels, you need the openers, you need man advantages, and even then, these B site retakes never feel safe. And Foot aren't getting that right now. They're not being given any respect. In fact, Furia are keen to show them the door, show them the ropes as to how a Dust 2 game can play when your opponent is dialed in. That is 4 B hits in a row for Furia, all connecting in these 6 rounds. They have made their objective very clear. And even though you have arguably the 2 strongest players of Foot, or 2 of the strongest players in Jukes and Krebeni, not able to stem the bleeding on this B site. And it's only a matter of time till this kind of causes a bit of a ripple effect, right? Your guys on the other side of the map aren't really getting to play the game. They're not really getting to find their timings. They're not finding any comfort in their fights. They're sitting back, they're waiting, they're saving. They're never getting to attempt these rounds. So there's a bit of a cooling off period occurring for the rest of the gang. That's Dust 2 for you. On top of that, you know, eventually you're going to make the call to lean more resources over, and that is where an experienced leader like a Fallen is going to use it against you. Yeah. He waits till you weaken the other half of the map, and then he's going to look for that killing blow out on A. So now you enter the mind games, and that's where Fallen is very, very comfortable. We see in that timeout, you know, Mike's live, we see Kindra and Fallen back and forth. As the 2 minds of Furia put this one to rest again, another aggressive B hit. Opener this time for Foot, and it still might not be enough. Gotta break that. Furia can't cross, and they won't. No punish here. Foot throwing everything they can, but Furia just relaxed. Gonna scramble, gonna try this one, playing through the smokes. Nice. Great double for Krebeni. Demon and X-Cloud flood on in, and Foot solved Confident the play problem with खेल numbers. Excellent. They throw bodies at the problem, and it's enough. Yeah, thank goodness they actually managed to stop it. If that gets into a post spawn, Furia again looking at a lock-in round and Foot saving, but they don't let them cross. Keep nading that smoke open, keep putting mollies down. And even though Furia re-molly window and you feel like maybe Foot aren't going to go as a result, they just flood the door. 3 players come through with a high flash, and Foot stop them dead in their tracks. Need to see more life out of Foot on this CT side. When you consider the X-Cloud putting on quite the tournament, 6th highest rated player has been silent in this 3rd map after a great series. That does come down to position, as you say.
It's back here on B. Nice one, Serato. अरे भाई दो निकाल दिया भाई. Massive entries. Furia, if it ain't broke, don't fix it. You're not even having to do your full rollout, you know? You're not taking all the precautions. You're not throwing the flashes in the mid. You're even peeking ahead of the CT smoke, right? And you just feel so comfortable in every one of these fights. You've got Foot really bogged down in the pressure, bogged down in the minutiae of a Dust 2 game, worried about all these extra bells and whistles that just aren't arriving. You think it's going to be more telegraphed. You think there's going to be more time. But Furia are not respecting you right now. And they're even going to start to come hunting. They want these losses to hurt. They want them to do maximum damage. That's the AWP removed. AWP remove कर दिए भाई, crazy. Up for success throughout the half, and Furia do so brilliantly. Hunt with four players get out, and nothing survives. यहाँ पे for this Foot CT 9-3 तो confirm है. Look at this game and say, oh, Foot, they're choking, they're crumbling under the pressure. That's not what this has been, not in the slightest. Furia just absolutely pushing it's different paces, full charge off of spawn, K55 breaking timings. They have just got them in the ring right now, and they are getting knocked up against the ropes. We called this street boxing earlier. Well, Furia still haven't put that bat down from Ewc. One more round here would just crush Foot, break them for the final round of the half, set Furia up for a 9-3 T-side on an already recently weak map for Foot. The Furia changed the game now. Do they go back to what has worked for so many rounds? I mean, this is where the problem we were kind of talking about earlier comes to fruition for Foot. These guys on A have not had a fight in a long time. They've not had to deal with the Furia util. They've not had to deal with the Furia timings and how they like to play. Finally. They're finally going to have a chance here to show what the A side of the map is made of. But it has to find success. It has to withstand this hit. If it doesn't, nothing feels safe. No round feels safe for Foot. Smart play for Symmetry not to repeat. Leaves it to his rifle instead. Mordoi holds the line and the bomb, but he might be a dead man walking. Wait a second. Not a 3v5. Not again. Not if Symmetry has anything to say in this site. Mordoi too late to help. Symmetry gets one more shot. And how do you cross? A shot from death to Symmetry makes it so. That is a young player showing great brains. It's every shot required. अकेला खींच दिया बे सिमेट्री ने तो 3K मार दिया उसने 4K एक्चुअली. यहाँ पे 14. For finally get a fight on this A site. Look at the stack out of the gates here. Well, you tell yourselves now, Furia are just going to go back to what was working, right? They're going to go back to that B hit. I think that is the problem with this type of a scoreline. The whole game is leaning against you. Furia are the ones still controlling this game. They decide where the rounds end up. And so sure, the simplest solution might just be to go back to B. It's Furia who get to decide that, and with an opener from Mordoi, the round really opens up. They could do anything. They're favored regardless. 5v4, mid conceded. XPloud coming back in to try and clear this. He's going into hostile territory. You have no clear picture where this round is ending. Flash around the corner. Thankfully, K55 actually cops it, and so XPloud doesn't get punished. Smoke's so annoying. They wanted to recommit. There's 40 seconds. They have to change their tune on the fly. Up Cat instead into the captain. Throwing an exec. Yuri plays out first.
double entry, double set of openers, falling with the next, and a clean sweep in the final round of the half. Nothing shy of impeccable from Furia. Couple of stumbles in there, right? This big cemetery round, one round into a B stack, but other than that, this is a damn near perfect T-side leveled against the Foot squad. Yeah, what a game out of Furia. I think it all started in round 3 with the Fallen luck shot. Goes on to build a massive streak of 6 rounds in a row, 4 of which on that B site. And Furia end it in style. 8-4 offensive half here on Dust 2. And X-Filed, he had his chances on B, multiple of them. It's been a great series, an even better tournament for him. But 2-9 at halftime. The bottom is falling out here for Foots. Gonna pistol round, invite them back into this game. Aggression right off the rip out of Yakindar and Molodoy. Yakinder And they're to rewarded for it. 3 players convene out towards the catwalk. Molodoy still a threat down here in the lower tunnels. That dink at least gets him away. Gives you a bit of room to work with. You're going in to the big daddy of Brazilian Counter-Strike, Fallen. Stealing himself away, waiting for the moment to strike. Can't find a thing. Krebeni gets one mid-air. And that is going to give a bomb plant over. You feel like you need this pistol round if you want a second chance, if you want a new lease on life. He couldn't be better set for it. Oh, careful. X-File backs up, doesn't want luck to be the deciding outcome. Furia renegotiate with Sport, 2 players coming up. K55 still needs value from his long position to keep pressure on, or his team cannot scale. Flashes land in their face, but wait in the sight, but they hit their shots when they're called upon. 3-on-1, shut down here by Foot. This game is back on. That's despite Yakinda's double up in mid. Unreal. It's it, guys. Every reason for Foot to crumble, they do not. You just got to grab hold of this now, right? This kind of second chance that you've afforded yourself, and you cannot let go. One slip up, one mistake, and this game can fall out from under you. Perfection being demanded of Foot. A young squad, a young roster. Having to dig deep. They want to make the finals tomorrow. BO5, they've already won one this year. That was in a studio. These are different stakes. Different level of pressure versus one of Counter-Strike's most experienced players today. Fallen has more maps than all of these players on LAN combined. क्या बात कर रहे हो सच्ची में? This is their 5th arena game. Right now they look to bring it back. फॉलन का 1400 मैच सबका कंबाइंड से भी ज्यादा है. क्रेजी बेंचूर. कुछ क्रेजी स्टैट थे भाई फॉलन का. We talk about kind of the life-changing nature of what this would mean for Foot. It's the idea that this would nearly double the prize winnings for this entire team. Were they able to lift the trophy? But even then, you know, I think you sometimes see these plucky runs from new squads, from underdogs. And they don't make a final, but they leave a bit of an impression in the playoffs. And sure, it makes you think there's potential there, but you get to a final at an event like EWC, and it kind of becomes undeniable.
people have to start prepping for you, have to start taking you very, very seriously. The whole world sits up and notices. Not even that long ago, this was an academy squad. Now looking to go blow for blow with the biggest names in Counter-Strike. We've noted them on this come-up, right? We've offered them the chance to be a playoff run team. They've always fallen just short, just shy. Won Pro League finals in the top 4, but for the most part, dodging those playoff spots, losing those final qualifying games. Now to sit, just a few rounds away from a BO5 final. It's a very different position here. Foot have finally put themselves within reach of glory. We're just awaiting Furia's gun round. This one is clean, easy. It was always gonna be. Now comes the test. Modular AWP online in the first rifle round of this CT side. And he was hoping to put it to work right away. That molly denies his peek out from the catwalk. For how long, that's the question. What a call, man. Are you really just going to try and do it straight back to Furia? It was these mid to Bs all throughout that early string of rounds. Here they come. Util in. Foot hit the go button. Yakindar hoping to play through, hoping to cause chaos in the back line. That is massive damage out of Yakindar. Still keeping the pressure on. Softening them up for K55. They go in his house now, but he only gets out with one of them. Bomb planted. Foot ready themselves as this retake looms. Tunnel is a massive reposition here for Trupti bhai, welcome. Available to him. Thank you so much for the 40 rupees. भाई खा रहा जो मेरे को भी दे दे भाई अभी जस्ट खत्म हुआ अभी जस्ट खत्म हुआ रोटी और सब्जी खा रहा था और दही है साइड में Furia pick up a retake on the hardest site in the game. क्या हाल है तृप्ति भाई? Sinking feeling right foot. That's a stark reminder of just how tricky they found that throughout the entire first half. Right? Unable to make those B retakes happen outside of the one round where they had a full stack there ready to go. I do Furia get it done at the first time. B is closed. Serato और यकिंदर ने वहाँ पे है. Post plants are not a guarantee to a round win. They're gonna make you work for it. I do love the call still for Foot. The fact they have the goal to just walk down in through the mid smoke, knowing Yakinder's late on rotation in that first gun round. It's not going to start middle with a rifle. But still have some tricks left. They're just running out of room. This is too close to call. They have money in case things go wrong. Off the back of their clean anti-ecos. That is the reward. 2 5 alive rounds, keep them stable here, even into the next. Never got this mid fight. Oh, he might today. Oh, wall bang. Mordoy wants more. That's good info for Mordoy, knowing he hit a tag. Sees the blood on the wall. Still early in their default, but with 4 players on Cat, that temptation to execute right there. Look like they're gonna just grab बता कल कितना लिंक अपलोड करे समीर भाई? Always move back over on a perfect timing. मैं जितना भी बोलूं कम है यार. आपने जितना भी किया है ना
pick players out of the round on this cross. It's too, मतलब now syncs up for the जितना ही बोलूँ कम है in the sense, मतलब बहुत ज़्यादा है. Like you did crazily job. अगर इसके बाद भी अगर मैं top पे ना रहा, so I was never meant to win the. It was always going to be an uphill battle. Whatever points. But यार जो भी यार आपको अगर ऐसे लगे कल 10 क्लिप्स निकलते हैं तो 20 तो वैसे ही हो जाएंगे. 10 क्लिप्स निकाल दो अगर आप चाहते हो तो. It's on you. Never really know what you're going to get from this young AWP presence, but today he's showing up. 20 निकाल सकते हो क्योंकि संडे बोले थे 20 निकाल सकते हो 20 निकाल देना 20 क्लिप्स तो 40 हो जाएंगे. But this is the round that decides it all. समझ रहे हो? क्योंकि मंडे को आएगा पॉइंट्स टेबल. एक बार पॉइंट्स टेबल आ गया तो पता चलेगा कि मैं कितना लीड में हूँ. उसके बाद वीकेंड अगर हम लोग बहुत ज्यादा लीड में होंगे तो वीकेंड काम डाउन 1-2 दिन आराम से ले सकते हैं क्योंकि 30 तारीख को खत्म होगा कैंपेन. कल 23, 24 को रिजल्ट्स आएंगे. 24 से लेके 15 तारीख तक. We are Furia are getting away, just getting away. Definitely need to hold them, bro. They are flowing. Low flow में खेल ले रहे हैं और हार जा रहे हैं and just getting with the round. Smoke comes down, shuts the door on this round. A dink for Fallen, who continues to impress. And even though Demons walk through, Molotov is going to miss it. Timing goes astray. Demon forces him back from a 3v5. Demon's handed you one hell of a chance. But you've got to realize this opportunity. Cemetery doesn't want it to be in vain. Bomb now planted. And Serato and Yuri, it's the fangs of Furia. कल निकलेगा 40 क्लिप. At the very heart of this squad, but they're going to ride it off. They want no part to play in this retake. एक काम करना समीर भाई, आप जब वो कर रहे हो ना कल अगर क्लिप 40 क्लिप कर रहे हो तो आप उधर करोगे, समझ रहे हो? तो एक काम करना, फॉर्मेट में ना थोड़ा नीचे लिख देना, नंबरिंग कर देना, डेट 20 ऐसे लिख देना, 23rd अगस्त क्लिप 1 या लिंक 1 फिर लिंक 2 कल, क्योंकि कल से लिंक 1 कल का इसलिए मैं डेट मेंशन करने बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर लोगों को लगेगा कि आपने टोटल लिंक 1 वैसा, समझ रहे हो? 23rd अगस्त लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, लिंक 5 वैसे कर देना, एक लेयर ऐड कर देना. जैसे रेफर्ड बाय RyuK है, रेफर्ड बाय RyuK के पहले एक और एक लिख देना, डेट मत लिखना, 23rd अगस्त लिंक 1 ऐसा लिख देना. एडमिन को ना थोड़ा फिर वो काउंट करना, वो कहीं बीच में मिस कर दिया ना, समझ रहे हो? मेहनत का पूरा चुद्दी लग जाएगा. तो एक वो कर देना, क्योंकि बहुत सारे नंबर थे ना, 40 क्लिप मतलब 80 लिंक्स मतलब, समझ रहे हो? 8000 felt like it was going according to plan. You could stomach the pistol, you could stomach the conversions. What you can't nowhere near is a 3v5 turnaround from clips, right as crunch time hits. I mean, if Furia were to lose this game, you just think they had them where they wanted them. 10-7 in a 5v3 as the favored team with the experience. Well, now their money is susceptible. You know, there's layers to winning, right? Sometimes 23rd your August, opponent clip doesn't 1, show up. link 1, Sometimes you're having a link really 2, good day. link 3 वैसे करना. Sometimes it's a mixture of the two, but right now, this, as we've seen throughout the entire series, it's an informed Furia. It's Foot having to rise to the occasion, and that's the unknown quantity. Again, found the gap. But if they are able to get there, it makes this win all the more impressive. We're ready for that. Opener for Krabeni, trying to play this great timing. Cemetery's got the cover. Off with your head. भाई ये 3v5 निकाल ले बस यार. With all this control lost, there is nothing left to play for in this round. We are down to a one-round game. And individuals have come through in this T-Cypher Foot, that's for sure, right? We've seen some 3v5s out of them in the pistol in the last round as well, but what a couple of calls Krabeni's given us. The walk through the smoke on the mid to be time. As still at. How the fuck is it possible? Symmetry, very heart of this squad of Furia. The away in this read from Symmetry. And it's still and half. Stomach the pistol, you could stomach the conversions. But refused to choke. They gasp for air. लड़के तो सामने नहीं रहे. लगती यार. Trying to will this. Thank you, Samir भाई.
गोटेड मूव कर रहे हो आप, जो भी कर रहे हो एकदम क्रेजी सपोर्ट में। मतलब साला पब्लिशर भी सोच रहा होगा ओह माय गॉड, इसका इतने कम सब्सक्राइबर्स में इतने वैल्यूफुल व्यूअर्स हैं, अगर इस बंदे को कल को 5 मिलियन मिल गए तो ऐसे इसको प्यार करने वाले कितने लोग हो जाएंगे। ऐसा सोचेगा कि नहीं, बोलो जो उनका भी तो प्ले टाइम बढ़ रहा होगा ना गेम का। सोचो जिस अकाउंट से 1 मिनट का प्ले टाइम नहीं आ रहा है, उस अकाउंट का इतना प्ले टाइम मिल रहा होगा। ये वीडियोस बन रहे हैं, सोच रहे हो मजा। Yuri 4 and 11. I had a horrible time here on Dust 2, but a chance. Dead on that smoke push. xCloud never took his eyes off it. Return to sender. भाई ये 10-10 हो रहा है क्या? ये तो रीटेक करना पड़ेगा, लेकिन कर नहीं पाएंगे यार ये लोग। सेव कर रहे हैं। And we are watching in real time. Foot level up. मैं हाथ धो के आता हूँ। The tail end of a semi-final. जाना मत, मैं हाथ धो के आ रहा हूँ। वहाँ पे साला इसका टीम स्पिरिट का मैच शुरू तो नहीं हो जाएगा, 10:30 को तो लिखा था। लेट्स सी। They've lost 5 out of the last 6 games on Dust 2. But here at EWC, everything is changing for Foot. They know the value that just 1 kill offers here. Oh. Smart from Yakinda not to repeat. Furia maintain money. But can they maintain this lead? Because that's a second timeout now as this game gets tense. I think it's really interesting to see on the cameras. Foot are always a team that is super high energy. They celebrate a hell of a lot. They celebrate for every inch of ground they get in a game, but we are not seeing that right now. You need to have a steely mentality, a laser focus. These final few rounds, as you close in on the opportunity of a lifetime, it's all about keeping those nerves in check. Not letting the occasion sweep you away. Because sure, you've tied this game up, but the job is not done yet. Far from it. Many teams have come close. Finishing the job is a whole different beast. The buy comes in. And Foot go for the knockout blow. They were looking for it there. They wanted that pick off the orb. Furia, I don't know that one smoke in the B tunnels has saved हर their एक life. पार्ट का क्लिप काट रहे हैं हम। अरे भाई क्रेजी ऐसा मेरे भाई, बस देखना ऐसा कोई भी कुछ हो रहा हो, लाइक आप कुछ टैंक को मार रहे हो या आप मर जा रहे हो जिसमें फनी क्लिप काट रहे हो, ऐसा कुछ करना, समझ रहे हो? वैसा थोड़ा वो देख लेना। No more available. Fury cannot stop or block a play on this B site. Kisarato holds the final Molotov. Fallen makes a play on long. Clear out. The picture's building. Fury might have an idea of what's coming, but can they stop it? These two fangs must sink deep into Foot. Here's the push. Yuri, big chunk of damage. Kisarato, his time to shine now. Pressure on him from all sides. Kisarato doesn't crumble. One more man will be too much to handle. Demon holding for re-aggression. Could get caught with util pulled, but doesn't think second of it. Just drops those in. Trying to buy a few more seconds. Fallen making noise on the backstab. They push out through the doors. They go into this crossfire. Missed shot from Molodoy. 15 seconds, time running real low. You got to plug this bomb in. They made the peak. Demon gets in. Don't tell me FUT जीत जाएगा. And Foot are moving into the lead. This is shocking. A first half dominated by Furia. The only team to be fully competitive on all 3 maps. And Foot are coming alive. Foot are leveling up.
victory feels like it is right there and up for the taking. Unbelievable round out of foot. Furia try everything they can to stop that bomb from going down. The Fallen fake pressure. Yakinda through the smoke. Molodoy hits a leg shot with the AWP. None of that is enough. All in for Furia. Come on, Molody. Remember how this series It's all in your hands, bro, now. started. Tie game. 11 all on Ancient. Furia forced. मेरे को तो R00 500 This time they're around behind. The force 100 comes from 100 भी आ desperation. रहे हैं. क्या बात है अभी. Crazy This सा है is भाई. Nice one, nice trade, nice trade. They're desperate, clutching at Nah, the straws to चलेगा try यार, and save Fallen. Good try, themselves in good the try. semi. Yakinda are blind, seen crossing there out towards the car. Molly falls at his feet and there's no smoke to get rid of that, so that's a free kill, a free entry. Not done yet. Molodoy's in the sight. Jerry here with him. But you need Molodoy now more than ever. This was the guy that really caused the uptick for Furia. Need him to deliver because he's your only hope. 1v2. Does Molodoy have it in him? Nice shot! What a first shot! Bye, bye, please, please, bye, are. And everyone in the No! crossing their fingers, but he can't do it. 4-12. They've got 2 chances to close. Grand finals are right there for the taking. Last one round, be. An 8-4 lead. Nice try, रे Molody. यहाँ पे अगर फॉलन या वहाँ पे वो 2 भी निकाल लेते ना, कोई एक बंदा भी जो 1v1 1v1 सब लोग अपना खेले. Molody, nice try, रे. ये वाला बंदा भी अगर एक निकाल लेता. They said this side of the bracket was open for business, open for the taking. Well, the favourites fell in the other half, and Furia might join them. Once again, another year running, EWC might welcome an underdog into those grand finals. Can Foot seize that opportunity? A broken buy, brittle for Furia. No क्या more buy on है अभी Molodoy. देखो उनका. And they must make it work. What a step up from Foot in this third map. You've just been running on pure adrenaline. Please Your नहीं, heart is 400-500 racing, views. क्या because बात है the thing कबीर that भाई, you've crazy. dreamed of is around रे away. बचा रे Serato. And that surge off the shot, does it tell you something? Is that B site weakened? K55, he's been the one delivering on this side of the map. Yuri's had a stinker. Time after time, K55's doubles have not been enough to hold the B site. Doesn't it just feel poetic to see Foot finish on that side of the map? It's where Furia bullied them all T-side long. It's got to be tempting. All of this comeback while xFloud still sits at bottom of the board. He has been the front runner for Foot throughout this Paris performance. But here in the semi-final, his team step up around him. The new boy on this squad, showing what it's like to be a part of the team. And as this push comes in, sure, you have a flank, but if Foot go ahead, they dodge it entirely. Bro, flank देखो Fallen का. Oh, Fallen. Oh भाई. And that at least gives Fallen the tell. This backstab, it has to do everything. Anything short of a multi-kill here won't be enough. Nice! Nice! Let's fucking go! Alongside him. And is this the massive sigh of relief that Furia were looking for? Let's go! 5v1. Grabeni in a box. Nice one. Spawn. Fallen goat man. They're not about to roll over and die. This one is going the distance. Enough's enough, say Furia. They were making plays all series long. They were not afraid of getting aggressive to make that push happen. बस अभी Molody संभाल लेना bro. Point against you. Your off is the thing. About to go. And Furia make the risky move, it pays off. Feels like there's only so many times we can say this, but now this is the ultimate test for Foot. Because up until now, you have been riding one hell of a high. This is a setback. Is this the knock before the fall? Or do they once again shock the world
and rise to the occasion. Just looking at the spawn here, it's got to be so tempting. Symmetry on the orb has the best B spawn. Don't you just Oh, want bhai, to put one that in more position, round, one more then wanna round. scope up and hope Furia make a mistake? It's got to be tempting. Foot's timeout elapsed. He won't take it. Foot look further afield. The pressure smoke forces a lot of util out early in this round. Furia just have to dump what they've got in this B-bomb site for fear of losing it instantly. Look at what it's done to the minimap. Drawn 3 players to the wrong position. Molodoy does not have an orb to defend from an A play. Furia understandably shaky on the most punishing side of the map. But Foot are going out long. Aggressive moves. Nice one! Keep it up. Gives you an opening. Long control taken. Okay, उनको पता चल गया but they are ये आ moving रहे very हैं. quickly. Eyes set on this A play. And no matter how fast Furia move, they will struggle to disrupt this. Players make it across. K55 with a gap on this smoke. Nice one. Reinforcements now arrive. Nice one. Softening them up. Players start to disintegrate. Come on, 4v2 please, Throne. Flash on. Let's go. Inside smoke. Go. Time. And this was always the looming danger, that ever-present threat. Let's go. One thing the Brazilians say about Furia, it's that they don't give up. Not without some overtime. Bye, goated. Foot had their chance. भाई फॉलन ने बचा लिया भाई जो भी बोलो. Well, now they have to do it again and again. अगर ये फाइनल्स गए. Money relieving here in OT. Molodoy's going to get his orb. Demon brings pace. A bit of freedom here with the promise of more rounds to play. And so Foot can get aggressive both ways. Molodoy pushes in. Thing to watch out for here, though, this is where that adrenaline that's kind of been fueling you up until now, this is where that turns to nerves, right? You're going to be shaky, you're going to be twitchy. And these are feelings that Foot are having to contest with for the very first time in these circumstances. Molodoy down towards lower tunnels. This is a guy who's been no stranger to the pressures of these stage games. Looked like he was someone that would throw them off, right? We all remember Istana, his debut event, had some good runs in playoffs, but it was at majors for this guy where that pressure's consistently gotten to him. He knows how Foot are feeling. No! But spammed out at the start of this round. It's an advantage for Foot. At the dawn of OT. Do they play with him there? Everybody jiggling. No one committing. Molodoy barely. लेकिन वो सही टाइम पे निकला था हाँ. रीड अच्छा था. They know where Foot are going. That's a fantastic. Nice one. Nice one. बे फॉलन क्या नीड मारा. And the backstab is in as well. Fallen still. Let's go. Up performances, but that bomb has made it in. 14वां मैच में अपना फॉलन दिख रहा हूँ 19 in 11. Moment of silence. भाई ज़्यादा तारीफ कर दिया. 1v2. You thought they were going to try and lend you Kindar some time. They've left him in it all alone. Spot Cemetery. But he's got support. Demon holds from the cross. Demon swings. Kindar now with the info. Something to play with. Demon ये अगर मार देता वो भी मिस किया था ये अगर मार देता. And the first in OT firmly belongs to Foot. It's one thing to do it, it's another thing to do it after Furia come back and force overtime with 2 rounds against them. भाई ये नेड अच्छा था बे यहाँ पे तो पूरा क्लियर हो गया भाई फिर भी यहाँ पे विप कर दिए बे ये तो get obliterated. Let's go! But Demon and Cemetery drag them through that first 2v4 round निकाल of OT. दिए ये 2v3 था. One OT timeout granted per team. Used यार. by Coolio. I mean, he's been with the core of these guys since their first steps.
into the ये server. ऑफ गिरा के क्यों जा रहे? You wouldn't, would you? Are they really going to run it back with a B here? Is that what they've come down to on the back of that? Nice one, pause? Serato. Bit of disrespect as they completely changed the pace on this one. K55 flashed in, but only चलेगा good for a 3v3. on that But peak. Yakinder is glow. Leaves it down to a retake. We've seen how hard these have been, all the cross dust too. But it was Fury इनको तो able to मिला pull these होगा कि off सारे earlier on on. site है. So they have another B-side retake in them. Util getting lobbed down. That buys you precious भाई time. most for difficult site है पे ये. Seeing them not look for the most standard post plants. This is a team that like to scrap, like to brawl, and it's not hard to see why. Save called for Molodoy, because you've got to start thinking about your money, Furia. If you want an AWP going forward, it has to survive now. Molodoy heads for the hills. Foot with 2 in overtime. Can they make this a clean sweep? This young team decided to go down fighting. Unreal call off the pause. The first full B rush of the game, and they do not stop, they do not slow down. Send it into this site. And I bet Furia wish they started their overtime on the T side. It was going so well back in regulation. But Foot have powered up. They look for this clean half. K55 taking an AWP and taking a spawn. We got double up here for Furia. Moldoy's going to try and keep the fights coming. Flame connects! And off with your head again. Considering all the effort that went into saving that AWP, that is not how Molodoy imagined this last round on the CT side would pan out. He's still ready for K55 though, because he can still hit shots in this position. Foot need to throw their cross smokes in. They might be lackadaisical because they killed the AWP, but there's another head to this beast. K55's been the guy for Furia across this tournament. Will his secondary AWP be enough? Can he be the difference maker? They're demanding a hell of a lot of their star. And Foot don't respect it. They run right through. A flawless half is right in front of them. 4v2 left to find. Yakinder shut down. And Yuri's been quiet across this entire third map. Right now, not feeling like the man for the job. 2 players waiting. They know he's under the pressure. They wait for him to come swinging. It's all in vain. But keep giving themselves more and more chances at those finals. And Fury have had theirs. 8-4 lead, 5v3 in the pistol. 10-7 lead, 5v3 in the gun round that would have broken Foot. But Foot have broken through. An incredible comeback for a team that has barely seen the stage. And a clean sweep in overtime. Foot sharpen their guillotine here in Paris. And look to decapitate Furia with a flawless streak. और मेरा नहीं चैट नहीं दिख रहा क्या? 400 500 वाले दिखा, उसके बाद और कुछ नहीं दिखा है. Penny with an entry, no trade found. This is one of the rawest, one of the realest, one of the wildest underdog stories that we've had in a very long time, and it's been legit. Besting Mouse. बेंचो में अच्छा अभी दिखा. बेंचो मेरा गेम का FPS ड्रॉप होता है 5 FPS में खेलते हैं. 5 FPS में क्या बात कर रहे हो भाई? सच्ची में भाई 3v5 है भाई. A core that believed in each other from their humble beginnings. चलेगा यार. In their academy roster. A shocking change, the addition of xCloud, who has been in fantastic form across the tournament, slotting in like it was meant to be. And now just 3 kills away from the dream of a final tomorrow.
Molodoy gonna find the first, but look at those rotates. Foot are not second guessing themselves here. They know the tricks. They've seen this from Furia. They know where this is ending. This is the final push. Out come Furia into the crossfires. Molodoy is doing everything he humanly can to keep them in this. One back from Yuri. And so it falls now onto the shoulders of Demon. The weight of this on his shoulders. First in, last out. Yuri gets rid of him. More rounds required. And how is that the round that Furia PV5 nikal diye bhai. How is that the round that keeps them on this stage for another at least? PV5 A straight up PV5 3v5 with all positions known. And one by one they isolate Foot in that B-bomb site. They are not done with them yet. An ugly, ugly ending to that one. Foot still have 2 chances. Again, we saw what happened when they took the stumble in regulation, right? That one round came through for Furia, then a blanket of them. I'm very scared here. They're going to get dealt another one of these B plays by the looks of things, and this was the way in for Furia in that first half. X-File got legged on the cross. This is a weakened B site. Furia pounds. Jukes with the first. X-Cloud trading on his contact. It's a nice set of openers, but Fallen and Co trying to turn the tide, and again it ends even 2v2. I know they've got Fallen out here in middle. And they might just have to deal with him before they begin this retake. He's in behind enemy lines. They find the veteran. Now it's on to Molodoy. 1v2. And he's feeling pressure to try and thin the herd. He's feeling pressure to try and turn this into a 1v1. So it all becomes a game of timings, a game of chance. And they beat him to nice the one. punch. Out the door. Please. Can Molodoy really no, he is gone. And then the second time of asking, Demon provides that clutch. Foot stun the world. They beat back Furia. They battle their way to a grand final. And up against overwhelming odds the entire time, we watch as this young team, youngest at the tournament, level up in real time to get to a final. So many times in this third map you were ready to write them off, that you thought this would be a Furia finish. Another final from the team that just made it all the way in Cologne, but cut down at the end of Dust 2 by the young, plucky underdogs. Their first grand final in an arena tomorrow, a best of 5 to prove themselves. And what an unbelievable show of resilience from this squad. Foot are here, Foot are legit, Foot forged their way to this final. And that's what Counter-Strike is all about right there. Not 5 household names, not the big men that you've come to expect, but it's Foot battling through, showing grit and determination. Oh, wow, 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 what a game here at the STC Arena. Foot take down 2-1 Furia. X-Cloud, Zafarishin Tebrikler, congratulations for this insane win. I imagine you must feel incredible. There was clutches, you guys came back on Dust 2, then overtime. What are you the most proud of on this game? I don't know, I'm still shaking because that was a close game. I think first map was smooth, but second and third was very hard for us to, close the game. But we have like good team. I don't know, like last map I was fully off, but my team is just doing so good. Demon is so good. It doesn't matter the kills, etc. यहाँ पे भी डीमन जिता दिया भाई. एक हमारे टीम में डीमन है. दो साला. J'en tremble encore, j'ai un peu de mal à régler mes émotions. On aurait pu forcément conclure un peu plus tôt cette 2-2. J'ai pas trop bien joué sur la dernière map, mais mes teammates. भाई बताओ वहाँ पे वो Valorant का डीमन. वो भी एक वर्ल्ड चैंपियन है. और अभी यहाँ पे भी ये डीमन वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है भाई वापस से. Of CS in front of 7,000 people. So how does that feel? How do you guys beat the pressure? I think we are not beating the pressure, we are just accepting it's the pressure and we are just trying to enjoy it. There is sometimes we are struggling, but still we enjoy it. It's so good.
I mean, you guys are bringing up the good vibes on stage, and we can see that for sure. Deuxième question, comment vous arrivez à battre la pression comme ça devant 7000 personnes, devant l'un des noms les plus légendaires de CS Furia? Franchement, on la bat pas. Cette pression, on l'accepte juste, on sait que ça fait partie du jeu, et on apprend même aussi à l'apprécier. And I want to know, inside your team, who's your MVP today? Who do you want to give props to? I think everyone stepped up when needed, I will say, because first map I was playing so good, Dima stepped up in last map, so I wouldn't say we have MVP. I think everyone is MVP in this team. Everyone MVP on this सही team. मेरे भाई यार समीर भाई Donc deuxième question, qui est ton MVP? ये जानने के बाद तो मेरी Chacun des इज्जत teammates a réussi अब à किल और step बढ़ गई up भाई quand c'était le moment, donc j'en suis इज्जत trop क्या fière. भाई Now we can talk about what's next. Crazy You're support at भाई the grand final. That means Crazy you're support. gonna Thank you, face everyone. either Thank you so much. legacy or Love you. spirit. So I want you Love to you, do man. our Thank you job, so analyst very desk much. jobs and stuff. Who do you think you're gonna be facing next? I don't know who's gonna face, but I know we're gonna win the final. Oh, so we have beautiful confidence from you. Why is that? Yes, I wanna say je suis Explode, je suis une légende. Je suis Explode, je suis une légende, mesdames et messieurs. On peut applaudir Explode. And if you're a legend, then it's time to prove it. Let's go to the key crusher together. Should I say Elal, Adi? Hadi, let's go. Let's go under Turkish banner. For Explode is eliminating Furia out of the EWC here at the STC Arena. The young roster makes it to the grand finals. Felt pretty good? Again? Felt pretty good, that key crush. I mean, right now we didn't lose a single game, so we are just breaking them, but yeah, so we get used to it. Just used to breaking the keys. I'm gonna welcome you in front of your fans, of course. X-Flat, I wanna tell you, I'm sure that you made many French fans also today. So many people chanting for you from Turkey, from everywhere. What do you want? What do you want to tell your fans, whether it's in Turkish, in English? Go for it. They are so insane, they are so insane. We didn't expect that much fan base, but right now the support we are getting is insane here. Yes, you guys have the fan base and you're gonna get even more. Thank you so much. Röportaj için teşekkürler. Thank you, and once again, congratulations to Explode and Foot Esports. Congratulations to Foot. We will see you in the Accor Arena tomorrow. And our condolences to Furia. We've got Pimp and Dupree to break down all of the action that we just witnessed in overtime game 3. You can't ask for a better semifinal finish than that unless you're a Furia fan. Pimp, walk me through some of the big plays. Yeah, what a way to finish that for Foot, you know. Putting it on again a hard break for Fallen, bro. From Again. being down 12 to 10, Peter, I thought to myself, okay, back to square one, back to where the experience is gonna win out, but I gotta tip my hat to Foot. They kept the head in check, so to speak. They kept calm, they kept composed, and what a performance from such a young squad. Booking a spot inside the grand final at a tournament where all the favorites seems to fall like today. I really feel like Forbidden deserves a bit of a shout out here, because that comeback on those two on that C-side, that was very phenomenal. And even if in the rounds where he would not be the main character to create all the space, he just created such openings for his teams where then the teammates would go out and finish missions. And I mean, also Demon, he had a phenomenal 3v5 conversion where he went through the smoke on short to bring it back. And I don't think, if it would have been for that specific round, I honestly think the Fury would have run away with this one. So all in all, this is a very big victory. I was going to ask, Pimp, when this is compared to some of the other major upsets, I remember Mongols winning at EWC wasn't as expected. How crazy would it be to the CS world if Foot goes on to win this whole thing? Oh, that'll be an even bigger upset than the Mongols, to be completely honest. The Mongols, when they won EWC, was a big surprise, sure, but they were somewhat competitive at the highest level. Whereas for Foot, I think a lot of people after the break and after changing their roster, they maybe had them as a team who would be top 10, top 12, top 15.
for them to go in straight away and book a spot in a grand final and potentially win a trophy, that would be groundbreaking and would set the world on fire a little bit there, Sade. I think that would be one of the bigger surprises I've come across in the last couple of years. You heard from the commentators, this was a $200,000 difference between 4th and 2nd place. Congratulations to the young FUT players who are now guaranteed at least that much. They're in the running for the greatest share of the $2 million. Before we get more into the depths of what went down in this game, let's hear from Yakinder from Furia backstage. Very tough game all the way into the very end here for Furia, whose at least trophy run will end here, still the 3rd place decided tomorrow. Yakinder, just talk to me about, first of all, this Ancient in there where you were able to push them. It was a lot of back and forth in these rounds. Also, you're the one now calling through it. It was my biggest opportunity, and I don't have the words. I'm sorry. We know you can do it. You've done it so many times before. Why couldn't you do it today? I have no idea, and I'll work on it to figure it out. I don't know what to say. I'm just so sorry. I'm just so sorry to everybody who supported me. We were all watching during that, and everyone was saying, don't write Carl off. He's going to come back. He's the one that's capable of making these epic comebacks. We all believed. You were still believing right till the end, right? Yeah, of course. I never lost it. It was just a bad map order for me. But it's not even map order. I just suck simply as that. It happens. Well, not really, but I don't know what to say. I'm mad, I'm sad, I'm tilted. I don't know. Are we seeing a new generation of Trackmania competitors coming through? Obviously, we know Pac and your relationship, but Neon, we thought he was going to go through today, and didn't. Zotac is the one Yeah. knocked you out. Yeah, good job by them. They are friends, so I'm happy for them. But yeah, new generation is getting better and better, and I'll have to work harder to challenge them. What are you going to do right now? Take time to process it? What is next? I have no idea. I have no idea. I'll let you. The time will go, and I'll figure it out. Thanks for chatting to us, Carl. You're welcome. Go and process it. Thank you. Thank you. Thank you. You know, being in those moments and you see the ovation from the crowd acknowledging Carl, it's tough. You can't ever look at one moment like that and make a decision on yourself. You know, there's times that life, luck, opportunity doesn't quite align for you. Carl, certainly the player that could have done it, didn't do it. And you have to take yourself back and say that maybe this was G-Geek in my eyes, you know, maybe somebody else's story. Maybe I'm here to come back later and learn from this and be bigger and better, but this wasn't my time. Maybe I'm not the main character, indeed, but yeah. I gotta say, watching through that interview, and Kai can attest to that, never have we, it's very rare to see Carl being dejected. That was beyond dejected. He felt distraught. Like, there's no other word for it. I mean, I was very surprised by that as well, really. It was such a hard interview, a tough watch, one could say, because you could really see his emotions. You could really see that he's sorry. He tried his best, but then maybe his best wasn't enough. You were already saying, at the end, it's luck. It's maybe one round that decides everything. And yeah, seeing him going out and being out for words is just, yeah, it's just sad. Yeah. That is life. C'est la vie, as they say. And sometimes all we have left is not to remake these decisions or change the outcomes, but to do our best to process them. And Carl on his way to do that as well. The tournament continues, however, and the implications, they do not simmer. They actually start to boil. As Gwen now in this semifinal with Grenade, Mime, and now Zotac, who is driving as good as he's ever driven. That needs to be a win for Gwen. Gwen needs to top 2 there if AGAL are going to win the club championship. And then it's not over, because he still needs to place at a certain point in the grand final. He cannot come in 4th in that grand final. 3rd would be the requirement. So still, if you want to see if AGAL win the club championship, or you want to see if Falcons retain onto it, if Gwen wins a semi, you must watch all the way to the very end of the grand final here at Trackmania. G-Geek, are you excited? I'm hoping my heart can take any more after what we just lived through, but I am so ready to see
potentially, well, history being made for Trackmania, but also overall for EWC? Well, EWC has one tie that connects all of the games across 7 weeks, the 24 titles, the best players in the world. Of course, it is that trophy, the exclusive, the elusive Club Championship. Here's a little insight into what it means to the players participating. And when we come back, we begin our semifinals. स्टार्ट हुआ It's about yellow. I love the idea of the Club Championship, to be honest, because playing for a team rather than just yourself, it feels like you are part of something more. When other people in your organization sort of care about what you're doing and it affects the whole team, then it does give that wider feel. If by some miracle the week 7 we win every event, then what a story that could be. My goal is to finish where I want to finish, in the top, get points, and make sure that we get to our top 3. Falcons, they have put their trust into me. I want to deliver for them, and I'll try my best to do it. Alors du coup ça me donne plus de pression parce que forcément il y a pas que je joue pas que pour moi-même entre guillemets, je joue aussi pour l'équipe en général pour gagner des points pour leur première victoire à cette Pro Club Championship, et je vais tout faire de toute façon pour ramener le plus de points possible à EGAL. Winning EWC would be incredible, and I feel ready more than ever. I've put so much work into my Trackmania career. It's just like what you get for working hard all these years, and I'd be so happy, obviously. Alors gagner le WC pour moi ce serait vraiment quelque chose de vraiment incroyable, parce que ça fait 6 mois qu'on s'entraîne énormément, et ce serait vraiment le point final à ce long entraînement. Zoma, he's done. One of the, honestly, I've worked in esports for a very, very long time. Okay, Unc. No, I know I am a real Unc. That was one of the maddest things I've ever seen. So Getting EWC 20. Pretty so many people, there's a lot of pressure, and it's a very stacked tournament. You've beat like a super good opponent in such a big environment. Do you think that's also what's going to out there? So we have In Paris with AGL and Falcons not getting any points in Fortnite. It's down to Trackmania, but I just heard the legend, the world champion, back-to-back, 7 times, back-to-back again. Chris, what's going on? he's gonzo, mate. He's done. One of the, honestly, I've worked in esports for a very, very long time. Okay, Unc. No, I know I am a real Unc. That was one of the maddest things I've ever seen. So in Trackmania, you have to get a certain amount of points to then complete yourself in finalist mode, and then you're going to win the race after that to go through. All 4 teams are on finalist mode at one stage. So all 4 players, we said at the beginning of the day, this was a slippery slope potentially for Carl Jr. He's the GOAT of Trackmania, 7-time world champion, as you said. He was struggling all the way through. I'm at a loss for words, to be honest with you, with how it actually ended up happening. Rip off the Band-Aid, bro. Incredible. It was Zotac who went through, Pac from Vitality, one of the other favorites, went through first, and then Zotac did it. It was a mistake from Carl Jr. that did it. I mean, the Falcons get 0 points here. So the situation now, Gwen, who plays for AGL, is already through.
He needs to finish 3rd or higher. Okay. And if he does, AGAL or your EWC 2026 Club Championship winners. Oh my goodness. This is AJL's race to win. Falcons have given themselves a bit of a lead. We're going to keep you updated if AJL can actually catch up. So stick around and find out who wins a $7 million EWC Club Championship prize pool. Wow, so Trackmania could be the decider of who's walking away with $7 million and who's walking away with $5 million. We know it's either going to be AGAL or Falcons on top. Falcons looking for the 3-peat. But let's turn our attention back to Counter-Strike because we're gearing up for our second semifinal, and the last Brazilian hope is in the form of Legacy. Pimp, talk to me about this. Yeah, another massive surprise to the tournament to find them in a semi-final. Been playing well so far, have really been doing the dirty stuff to some of the favorites, as according to the bracket as well. You can see it. Nobody expected them to beat Na'Vi. They did that in a convincing fashion. No one expected them to beat Falcons. And by the way, that seems to have consequences for Falcons at the Club World Championships as well. 2-0, Peter. They're yet to lose a map in the playoff. Wow. However, I think they will today. Yeah, it's a super legit run they've pulled off so far. I mean, like, it almost feels like if they also take down Spirit, then it's like a team like, what can actually then stop them? It's like actually going to be foot stopping them. So they have to be very proud of what they've achieved so far, but they still have a juggernaut to slay to make it into the grand final. Team Spirit has a man with all kinds of aura. He goes by the name of Donk. I tried to say what's up to him behind the scenes. He paywalled me, kept walking. He is focused on this matchup. Gentlemen, give me one more hot nugget. Why should I stay tuned to the second semifinal? It is one of final 3 matches here at EWC. Because you get to watch the best player in the world to duke it out, against Legacy. Donk right now is on a tear. He's playing fantastically well. Throughout this tournament, Spirit haven't always looked great, but he's always bailing them out. So if there was one good reason to tune in, it's to watch the best player in the world do what he does best, and that's playing Counter-Strike. Lock in, ladies and gentlemen, around the world. The day is only halfway through. When we come back, it is your second semifinal live from Paris. Who is going to make it to the Accor Arena? Fire with a 3-0 dominant win over Liquid, getting 1,000 Club Championship points, but this is the only game they're competing in and the only game they've won, so it has no CC updates complications. However, Liquid now up to the 6 points after having a rather rough start to the event. After spending 2 months here in Paris, I never want to leave. Okay, then I'm gonna need to ask you some questions to make sure you're ready to live here full time. Okay, I'm ready. Okay, perfect. Let's begin. What side of the road do you drive on? Whichever side has more room. Oui. What are French working hours? Very limited. That's very correct. What's the city's biggest tragedy? Emily in Paris. Okay, yes. What is the cost of riding the metro? Your dignity. You're very good so far. What's our most important holiday? The entire month of August. Okay. Last but not least, do you like French people? Of course! No, wrong answer. Please think before you respond. Désolé. I need to test your senses, starting with your reflexes. Pourquoi? Parfait. Very good. Now, what's the loudest sounds that you can hear in the city? An American bachelorette party. D'accord. What do you do when you smell something terrible? Eat it. That's perfect. Finally, your eyesight. What do you see in those 3 pictures? 3 baguettes. That is completely wrong. 3 baguettes? Non. Baguette, ficelle, and flute. If you miss any other answers, you're gonna fail your exam. Flute is an instrument. Okay, look. The next question is language proficiency. Please say the next words in French. Okay, good. Next one. Ugh. Acceptable?
Ho ho! Okay. And the last word. Perfect. Très bien. Now, sing the national anthem of France. Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. You know what? Close enough. Welcome to France. Merci beaucoup, merci! The rent is 5,000 euros. Pourquoi? जब तक ये स्टार्ट होता है तब तक मैं आता हूँ guys, ठीक है आप लोग देखते रहो मैं आता हूँ फटाक से Would you rather play with inverted sound or an inverted mouse? What about both? Inverted sound. Inverted sound. You don't think you could do the mouse? No way. There is no way. I tried already. Inverted mouse. Inverted sound. I'll go for a mouse too, cause cause mouse is more adaptable, you know. Sound. Invert sound? Yes, for sure. Can't do the mouse. Like imagine spraying up. It's hard. It's like mouse. It's hard, but like to hear it, I think a lot of players play. Gympad play. I know also one more guy. Gympad plays with inverted sound. Yes. And also I know one more Kosovo player that plays. Really? So I think it's not easy, but I think better. Easier. For sure. What do you think? I also agree. Like I played also with SXC, a Romanian guy who played with inverted sound. Sound as well. I think mouse is too much. Sound actually, some players played with inverted sound. Jimmy. I'm an egg as well. Oh really? Yeah. Okay. Yeah, it's crazy. I think I could get used to inverted sound much easier. Inverted sound. Sound? Well, you both quickly. Why sound? Yeah. Yeah, but because you can shoot and win yet. I have one my friend who changed his mouse to inverted, and now he's playing like with inverted. So he sprays and he pushes up? Yeah. Huh? Like he likes it, but like sound, I think it's not comfortable. Like to mouse, you can like play train and you can play after. I think I choose mouse. So I think mouse because sound it's incredible. Both are a matter of like the more you practice with it, the more you're gonna get used to it. Sure. But I do feel it would be a little bit easier to manage your hearing. Maybe inverted sound. I think inverted sound is easier to get used to than mouse. I think aim is so much more important. Just inverted sound. I even tried it once for one round because I got new in-ears and I didn't know left and right, and then I fucked up. So doesn't it kind of space you out? Like sound is so important to Counter-Strike 2 though. I did insta take after the first pistol, but I didn't realize until we started, so it's not good. Oh, so those the tech pauses when I see players messing with their headphones and stuff like that? It might be a individual mistake. Okay. What about you? Yeah, I chose the same. Sound? Yeah, For sure the sound. I think mouse is just you gotta be playing some pilot simulators and stuff like that to get better at it. So no. Mouse. With inverted mouse, bro, you can't handle that. What? So you spray upwards? Yeah. You can do it? It will just take some time to adjust. I think the sound is the better option out of the two. I would probably just choose that one, not the mouse, because even with the mouse I would be cool, fully. Yeah, but fully cool. Yeah, that's fully, yeah. World Cup up.
You're watching the Esports World Cup live from Paris, France. It's 2026, and we have one of the French legends back in the studio. Welcome, Nathan, better known around these parts as NBK. I watched you back in the Global Offensive days. How are you enjoying CS2 in this venue? So far, the games have been excellent. I mean, obviously, the last one was a blast. There was everything in that game. Clutches, big moments. Absolutely love everything in Paris so far. Yanko, you've been smiling in the green room since I first saw you to start the day. Why is this such an exciting semifinal? The one we have coming up, I think, because Donk is on the server, first and foremost. Okay, the Donk show. But also because we have Legacy, who I think is the surprise package, really, in this semi-final, especially considering, you know, the side of the bracket that they were on. They took some big wins to get to this point, and that's why you'd be a fool to look past them. We got our eyes on some of the top stars in this matchup, but none are very familiar. If you haven't been watching Legacy closely, let's take a look at the squad that has been knocking out all of our juggernauts. They 2-0'd Navi. Then they took down the Falcons, which is the surprise of the tournament. Falcons were considered favorites coming into this thing. And now if they complete the road against Spirit, you have to say this is probably one of the hardest possible brackets to a grand final. Possibly one of the biggest upsets of all time in Counter-Strike at that point, because with all the games that we didn't expect them to get through Navi to start things off, and then they're just starting to 2-0 everyone, and then they're just here to play beautiful Counter-Strike. I think that's the most impressive. They saw the bracket that Falcons had at Cologne, and they said, we can do you one better here at TWC. And I mean, that win over Falcons might just cost Falcons $2 million in the club championship. We'll see. It's getting dicey over there, and obviously they had a lot of faith in their Counter-Strike squad, but Legacy sort of ruined all that for them. Legacy are now 2 maps away from the A-Core Arena, and right now we got Stunna over there with Pimp. What's up, guys? Tomorrow, we get the party started inside of this A-Core Arena right behind me. We've got a 3rd or 4th place decider. We've got a best-of-5 grand final to culminate the entire Esports World Cup right here for the Counter-Strike 2 side of things. But before we get there, a semifinal is afoot. Legacy and Spirit. Pimp, we've got this one right in front of us. Let's go ahead and identify 2 players, and let's start on the Legacy side. Who do you got? Yeah, massive surprise that Legacy even find himself in this game, and partly thanks to Dumao. I think he is the win condition, the big win condition for Legacy if they were to pull up another upset, and I guess playing the A-Core Arena tomorrow in the grand final, then it has to be Dumao who's stepping up. He's a fantastic Counter-Strike player. He's been playing a good tournament so far as well, and I think without him playing well, there's no way. Yeah, it does make it a little bit more of a challenge over there because they are looking really good over on Legacy, looking sharp. Obviously, on the other side of things is a team Spirit, and I almost can guarantee you would pick a player like Donk. Like, who would do that? Kind of hard not to, you know. Yeah, he's been playing fantastically well so far in this tournament. He is, without a doubt, keeping them alive, even in moments where they're not playing well. So, fair to say that Spirit maybe haven't looked at their best, despite being in the semifinal, despite being the favorite to win the entire thing. But that's thanks to Donk, who's just, whenever there's a moment of doubt, whenever there's a moment where they're not looking good, he'll step up, he'll get the job done. So what happens if Donk's quiet? Oh, that's a good question. I think Legacy have a real shot. Legacy have been playing well so far, and Spirit, as I said, you know, as a team, maybe not all the way out there, but Donk individually, he's just a tough man to deal with. Look, Jacob, I think we can have all the cue cards in the world, but the truth is you can't quite script exactly what's going to unfold here in the A-Core Arena. So if you're in Paris, make sure you're here on Sunday. It's the place to be. Grand finals, 3rd, 4th place deciders, and the culmination of the Esports World Cup Club Championships. I am tired of stunting on us like that. Man looks good, but so do these two. Let's break down what we've seen from Legacy because it is a 2-0 win over Falcons that shocked the Counter-Strike world. And I want to revisit some of the big moments. Yanko, what did they show us? How do you describe the Legacy playstyle? They've shown us a lot of stubbornness in their approach on some of those T sides, right? And they were going to be relentless. I think that might be a good way to describe Legacy. They're very aggressive. They like to fight on both the T and the CT side, right? And they're not going to back down to anyone, really. If you really look at it, and we talked about it earlier, they have A game plan. If this game plan doesn't work, they will try it again, and they will try it again, and they will try it again. The problem is, when you have players of world class like Donk, for example, right, you can do it 10 times in a row, you're going to get bashed 10 times in a row. Right now, they managed to get every single time a few rounds here and there, and it was enough for them to have good city halves. Is it going to be the same against Spirit? That's going to be a bit more complicated. We have to talk about Try as well. You know, he was the latest. He was the latest addition in that AWP role, which is also important. And he was their best player on Dust 2, and by a large margin, had so much impact, especially on that CT side. Like Falcons couldn't get anything going because of him. And you know, for a while, it felt like Legacy could upgrade in that department. And
how everything unfolded with Passion UA and whatnot, Try suddenly became an option. They pounced on that opportunity and they're already getting some dividends on that. Another player we want to show some love to is Nassim and Lotto. Both of these guys were mentioned by players and, of course, the folks that were taking the interviews on the main stage. NBK, what should we know about Lotto first? Just a fragger overall. He just has so much output. He's everywhere on the map, and he's just very efficient in everything he does. He's very active. He has a lot of, as you can see, a swing. You know, there is a thing where of all the MVP events this year, he was the 5th highest rated player, and we're talking right behind all the top players that everybody knows, right? Donk, Monesi, Zayawu. He's right there. So that means that how big this guy is playing and how important he's going to be for the team. He is having a massive impact here throughout 2026, especially at EWC. When you look at the rest of the squad, we want to highlight Nassim. What is his role on this team? Yeah, he's the anchor / lurker, right? So in a lot of those rounds, when the team is working one side of the map, he's going to be left to his own devices and sort of be the closer for them. But on the CT side, we saw him yesterday on Mirage early on, set the tone for Legacy against Falcons, hold down that B bomb site. And I mean, he had his best series against Na'Vi, that has to be said. He just had an incredible Ancient really over there, and it's good to see because they had this weird situation where he was benched for 2 weeks during the off season, and it was like, oh, maybe come back, and I'm sure they're glad he did. We've got a lot going on here behind the scenes. Freya was fast enough to catch up with Art. Freya, what's happening? Big game today for you, Art, but you're probably used to that by now. You've already taken down Na'Vi, you took down Falcons yesterday. Tell me about that Mirage where on the second half, you didn't allow Falcons to get a single two-sided round. Yeah, I would say, I think everybody noticed Mirage is a pretty city-heavy map. I think it's one of the most city maps in the map pool as of right now. Even I would say so more even than Nuke, in my opinion. So when we make 5 rounds, I think that's something we are confident with. That's good enough. And if you can make a pistol, it's going to be way easier. If you lost pistol, it's still a competitive game. So we managed to get a pistol in our favor, convert the force buys, and after that we just play good CS. I think what's been so impressive is not only have you taken down some huge names, you've done it across 4 different maps, right? You had Inferno and Ancient, obviously versus Na'Vi, then you had Mirage and Dust 2 versus Falcons yesterday. How confident are you in your map pool at the moment? Yeah, I think it was a little bit shaky in the start of the season for us after we made the roster changes because it changed so much. But during the tournament we talk a lot and we take a lot of time to prepare better. So I think that now we feel way more confident on the way we are playing and the way we are planning to play the maps. Obviously, you got Spirit as an opponent today. Really interesting history between you guys. They haven't played Legacy before. The last time you played Donk was back in December 2023 when you were on Fourier as well. Yeah. How well do you feel like you know them? Yeah, I see. With all of that noise from the Vitality fans, Gwen. the home fans. Yeah. We'll see if Gwen can pick something up here. I'm back, guys. All eyes on Gwen, bro. All eyes on Gwen. For that first position. All eyes on Gwen, भाई. अगर Gwen यहाँ पे थर्ड या उससे ऊपर आता है तो AGL ले जाएगी पूरा esports वर्ल्ड कप चैंपियनशिप. फिलहाल के लिए Gwen is around, अभी तो बहुत बराबर का ही चल रहा है. Nothing can be said here. 26, 28, 36. फिलहाल के लिए तो थर्ड में चल रहा है. फोर्थ में है. But 2 points is nothing. भाई Gwen. Gwen is going to be hunting for that all-important. Oh my God. Round, right? Yeah. As soon as you get a round on the board where you're feeling good about yourself, that's when the floodgates can open. Yeah. Cole Jr. had it come a little too late. We were saying in the green room, oh, he'll do it eventually. भाई सोचो तो Gwen के कंधे पे कितना बड़ा एक प्रेशर है पूरा चैंपियनशिप जीतने का. अगर वो नहीं जीता यहाँ पे या सेकंड नहीं आया, इनफैक्ट थर्ड का भी ऑप्शन है, थर्ड भी नहीं आया और पूरा लास्ट आया तो पूरी इसकी क्लब नहीं जीत पाएगी ब्रो. Such a big responsibility on his shoulders, bro.
As long as he stays clean here, giving that AGL का ओनर तो पर्सनली कॉल किया होगा कि भाई कुछ भी करके कर ले यार प्लीज प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे ऐसा किया होगा कॉल यस ग्वेन ले लिया ठीक है मैं बोला ना will wake the AGAL fans 36 up. Zotac taking second place once again. He has started to put some consistency together here on Poland. Grenadi's map pick, of course, he has been pretty straightforward. अभी जैसे चल रहा है उसमें तो AGL will take the well, this time around maybe not working out for him so much. Yet to pick up a win as we head championship into round 4 of the map, and once again it is Zotac and Gwen out to flying starts in this round. Poland सबसे tough मैच पहले ही आ गया है इनका. Completely fell off the platforms at the start or what, but he's 6 seconds down and that is an untenable position. Gwen second में ठीक है, second में भी 6 पॉइंट मिलेंगे, 42 तो हो ही जाएंगे. फर्स्ट हो गया भाई. 10 seconds the DNF timer here at EWC, but more importantly here for EWC is Gwen's performance, how well he does, and he slams into the lights, and he will not be progressing with the rest of the crowd. Fortunately for him, Grenadi's so far back that he may just be able to squeeze one extra point. He DNFs, he doesn't even want to try. Fair enough. Well, Gwen with the DNF, 0 points for him in this round. Zotac looking to pick up another 10-pointer here on Poland. This map has gone not quite as well as you could ask, but pretty damn well for Zotac on this occasion. And there's a PB as well, a 108.995. He joins the 108 club here at EWC on Poland, and he is feeling good. Gwen, after that DNF, just hands together, deep breaths, try and lock back in. थर्ड आ जा भाई, थर्ड भी अगर चलेगा, सेकंड आएगा तो बहुत ही बढ़िया. Oh yes. This is what, our third time seeing Australia all tournament long, and we only have 3 matches left. We have been avoiding this one. Players have been avoiding this one. Yes, we haven't. We've been asking for it repeatedly, begging on our knees. इसको भी पता है कि ये अगर यहाँ पे इतना लेवरेज है, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा भी नहीं कि कल जीतना ही पड़ेगा. फोर्थ नहीं आना है, टॉप 4 में थर्ड आना है बस, और they will win the championship. भाई maybe you just became aware of Trackmania after that last game, and now we are here. Yeah, exactly. This is it's a pretty difficult map. It's very fast, incredibly fast. The whole point is that until you get to that slalom, that zigzag right there, you're pretty much going full speed, and then you go right back to full speed, and you have to make jumps over very precarious platforms while you are going full speed. Yeah. Now, Twiggy, I'm going to make a bold prediction here and say we are probably going to see at the very least a tournament record or world record. Gwen फिलहाल 4th में है, लेकिन 37 में है, एक ही पॉइंट का है, डिफरेंस तो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा. और बहुत क्लोज चल रहा है यहाँ पे, नॉट वन साइडेड. सिर्फ गोइन को ही दिखाओ, मैं तो बोलता हूँ ऑब्जर्वर भाई, क्लब चैंपियनशिप का बात है भाई. Let me teach you about plastic for a bit. It's a we have a couple of plastic Australia pieces over the course of the EWC map pack. It's not bouncy. It's bouncy. It's a bit slippery. It's bouncy. You need to be very careful. क्या स्मूथ राइड कर रहा है भाई, मेरी तो फट जाती ब्रो. Losing out on a lot of time and plenty of gears as well. But Gwen out in first. He's looking pretty good. These are good times these players are setting, and everybody processional right behind each other. अरे ये कैसे ले लिया ग्रेनेडी ने? Out of the exit of that turn. Now be very careful. You want to maintain as much speed as possible, but you can not fall off the platform. It's looking good for Grenadi with a 114.5. Mime right behind. Zotac और इसका सेम पॉइंट्स हो गए अभी. Gwen is going to have to settle. अच्छा नहीं, मीम सेकंड आ गया. Was catching. He was मीम सेकंड आ गया ब्रो. 3 पॉइंट का डिफरेंस हो गया यार. भाई वो टर्निंग में एक वेन स्लो हो गया अभी, वरना गोएन हैड ऑल द लीड इन द. Maybe catch back up to those leaders. It is still Grenadi in the lead of the match on 66 points, and then 11 points down. Zotac on 55 as we head to the middle sector. माइम को पार करना है ग्वेन, बस माइम को. माइम टॉप में आ गया अब ले. But we get one here. It doesn't look like it. Mime jumping very, very high. He will lose a little bit of ground to the chasers. Gwen trying desperately to keep up here. Unfortunately, being put onto a map like this as somebody else's pick can be quite distracting, difficult to deal with. He's going to have to reset once again
after this track is done, unless he can get come on, Gwen. into first place and on the board with some more points here. He is trailing behind the leader by 20. ये टर्निंग आएगा, ये टर्न में अगर ग्वेन कर पाया तो हाँ नाइस ग्वेन. अरे यार यहाँ पे ग्वेन स्लो जाता है भाई, पता नहीं क्यों. From Mime, it's looking quick as well. He's entered the identity with a lot of speed. He's not slowing down whatsoever. Fully risky. Grenadi goes a little wide. He's absolutely fine. Oh my god, it is neck and neck between those two. It's only 3 thousandths that separate them in the end. But importantly for Mime, he's got his 10 points from his map pick. I mean, great for Gwen, right? You win. Gwen जीता second ना, हाँ ठीक है. It feels good at the अबे end, लेकिन but 46. both of them were 4/10. Yeah. एक भी Gwen जीतेगा ना तो it's close. Drove very, very fast indeed to pick up that round win. And Mime को पीछे रखना है बे. 7 points का lead है Mime पे अभी. just a little bit. The gap from second to third now only 5 points back from Zotac. But Grenadi is looking quick as well here on Australia. We have yet to see him on it. And Come on, Gwen, come on. So far, he's gaining a lot of time in these identities as well. Yeah. On very good times here once again for that. Zotac भाई पीछे हाँ, Zotac भाई पीछे gain there on the full speed section of the map, but of course, well, we'll teach you about SDs another day. I don't know, that's a lot. Don't know if we've time right now. There's only like 10 seconds of one map in the pool that really uses it. Anyway, Grenadi and Mime pretending, and Grenadi clips the inside of the checkpoint. He's going to concede first position to Mime there. This is a very quick round. We're below 52 seconds there on that checkpoint. It's looking good. It's going to be another 114. Who would have guessed? Come on, Gwen! And they are neck and neck as they enter the identity here. Gwen trailing from Mime by about 1/10. Oh no! And Mime is having a tough time as well, maintaining the speed. Grenadi's right behind. He can't quite get it done in the end. That was Oh my Zotac. lord. It was Zotac who was right there. Really? He missed. He fell off that final platform. He had to respawn. And ultimately, he's not quite made it through. So, भाई Gwen it was close between पीछे आ जा रहा है bro. नहीं bro, please no. ऐसा मत कर यार, गोटे मुंह में Gwen. Third position तो आ at least bro. You can crash. You will be sent to space if you clip wrong on plastic. There is no hope of recovery as Grenadi now leading the way into the next round, but it is a close and hard fought lead as Gwen has overtaken him. Mime looking to overtake him as well. I like Grenadi's line through there. He is carrying a lot of speed, closing back up to the back wheels of Gwen, who is struggling a little bit on this dirt. That is one of those corners that Grenadi on wheel gets a little bit of advantage on, able to hold the line so steady up against the outside of that dirt corner. Yeah, Gwen again contending for this one as much as humanly possible here. Grenadi concedes a lead and down goes Mime again. This is a world record attemptable time here as Gwen moves on through, looking for a good exit here. Come on Gwen. चलेगा भाई, बस ये वाला कर ले भाई, ये पूरा कर ले भाई, और थ्रो मत करना प्लीज भाई. थ्रो नहीं Gwen प्लीज. Let's go. Just under a 10th off that world record from Gwen. And Grenadi, he just a little bit too high on that second jump up to the left. The wheels went out from under. चलेगा भाई. The speed back Win. Very nearly. Grenadi carried the speed through that identity to snipe. And well, that's it. Goodbye, Australia. It was nice knowing you. I had a lot of fun seeing it. Our first time and maybe only time getting to cast it here in this tournament. Hey, although we'll see, things could get weird. Things could get weird in the second semi-final and of course the grand final. That's an excellent drawing. पूरा प्रेशर उसका चेहरे पे दिख रहा है bro. Well, he is looking पूरा to चेहरे पे this दिख रहा है उसका semi-final. प्रेशर. In many ways, you could say Twiggy is still out to a lead, still looking very good as we do now head पूरा to चेहरे पे Saudi प्रेशर दिख रहा है Arabia. भाई उसके. Start with a 2 or a 1. कौन सा मैप है? Yeah, that's true. Unfortunate. That took me a second. Tragically. We'll see how things go. कौन सा मैप है? Saudi Arabia. Okay. We'll say Gwen has looked very good on this map, and he has been. Gwen 59, 66. दोनों second, third 66 में है, तो एक win will make him more close. 6 points का 7 points का difference है. Get out of this match. I would like to point out there is still, you know, Come on Gwen. तेरे को बस third आना है bro. तू तो अभी second भी आ सकता है. It's almost like I set you up to see that exactly. Grenadi से fight ही नहीं है तेरा. Yeah, I can.
Gwen. Oh, it's looking good. It's not looking good for Grenadi, who goes a little too high there. And it's Zotac. Gwen top में नहीं सेकंड आ गया. इतने अभी भी top में. Risks clipping the checkpoint there, but manages to avoid it. Oh, he's going to clip that checkpoint, however. Heartbreak again for the AGAL fans. You can see it on their faces. Yeah. But now, Mime and Zotac, what can they do here at the finish line? It's going to be incredibly close. It's going to be down to the angle of your car when you land. It really is. And both of them get it perfectly. But Mime, splendid landing and a splendid finish. It's exactly what he needed. And Grenadi isn't going to finish the track. 0 points. चलेगा. ग्रेनेडी टॉप में था ना, तो हम लोग और क्लोज इन कर रहे हैं. भाई ये तो पूरा नेल बाइटिंग फिनिश होने वाला है. 63, 72, 76. तो डिफरेंस और बढ़ गया 10 पॉइंट का. गन का पूरा पीछे है अभी. गन भाई क्यों मेरे दिल के साथ खेल रहे हो गन भाई. Time around, not looking to give it up to Mime. But Grenadi is right there, boys. इसमें भी गन पीछे रहेगा. As well, and it's good speed through here. Good landing. Another good landing, and Mime this time falls victim to the same area that Gwen did just last round. And Gwen, it's looking like he might not finish this time. A DNF that does not come from the back end of the track. Great landing from Grenadi once again, and Zotac is all over the place. It should be free here for Grenadi to take. It's a good landing. Zotac doesn't make it work. Maybe Mime was within striking distance. He is! Yes, he is! Flies in over the back shoulder. Mime picks up second place and extends the lead he has over Zotac ever so slightly by a hair. And well, staying a little bit closer to Grenadi as well, who really has, before that round, gone quite quiet in the match. It's exactly what we talked about at the top of the... maximum वोट देके निकाल लेता था. अभी मैक्सिमम वोट देने के बाद जज डिसाइड करेगा कि निकालेगा कि नहीं. जज को जज एक जन को दिया जाएगा. जज अबे आना तेरे पहले चाहिए यार भाई. पीछे आओ पहले, तो पीछे आओ. केओ के चाकू में रिवील नहीं होना. आ जाओ पीछे आ जाओ. पीछे अगर बैकग्राउंड से आवाज ज्यादा है तो मेरे को बोलना एक बार. हाँ बहुत आ रहा है. केओ का चाकू से रिवील मत होना भाई. नहीं मतलब ज्यादा डिस्टरबेंस, मतलब पूरा प्रॉपरली आ रहा है क्या? धीरे धीरे आ रहा है, हल्का हल्का? पूरा क्लियर आ रहा है. यस, क्वेश्चन का आंसर. ओ गेम में मेरे को बोलना अगर डिस्टर्ब हो रहा हो तो. आई विल टेल हिम टू. क्या बकचोदी है यार ये. क्या बकचोदी है? तेरे तो ये क्यों नहीं करता है? तेरा माइक को ओपन रख फॉर यूट्यूब, बट गेम के लिए, पार्टी के लिए एक बटन रख और टीम के लिए एक बटन रख. वो है, वो मेरे माउस में ही रखा हुआ है, लेकिन फिर वो मैं दबाना भूल जाता हूँ ना. अबे वो मैच में कॉल देने का टाइम में. चलता इतना भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. कब सीखेगा? अरे शिट, ये राइन्स आ ही नहीं रहा है पास में, कैसे सीखूंगा? क्या दबाना? क्या बातचीत है? अरे बाप रे, मैं फेड कर लूंगा. फेड देखा राइन्स तो 30 भी है, देखा हमने. अरे राइन साला सबको दिखाता है. रांड है ना, मेरे अलावा सबको दिखाता है. और कितना देखना है? तुम ऐसे सो के तो आया हूँ. अरे शे, बात तो सही है. ज्यादा डिमांडिंग मत बनो. साला RyuK डैडी भी लिखेगा और मैं डिमांडिंग भी ना बनूं अब, हैं? आपसे ज्यादा बकचोदी नहीं. वाह. कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है अभी? फोर्थ मत आना यार. ये वाला लूप कि मैं ऊपर
RyuK डैडी लिखा, नॉट RyuK डैडी। वुमेन बिग मैक, बिग तो वो भी है, वो भी थे। Nothing stays hidden from me. वो भी थे, ठीक Nothing. है। वो भी थे, कितने जन थे? एक के तो दो हो सकते हैं ना, दो हो सकते हैं क्या, दो होते हैं। अरे वो BenQ का देखा है ना, सब बुद्धि बोलता है, अगर वो चीज तो दुनिया जीत लेता। True. Omen, I wonder, how quickly can we unravel their will to fight? भाई क्या है, ग्वेन कितना पॉइंट्स का लीड? Need a drop. अरे शिट यार, ज्यादा क्लोज। अच्छा क्या चाहिए I शेरिफ? need this. My thanks. कम ऑन यार ग्वेन, चामोद दे इनकी माँ का। कम ऑन ग्वेन, कम ऑन। हम लोग भी भाग रहे हैं। क्यों? कॉल आ रहा है ना। That goes there. आया Multiple enemies A. साइफर का अरे मारा ना मटका दिया। कौन? अरे नहीं, लास्ट मोमेंट बोला मैं ये। Spike planted. Last player standing. तेरे पीछे पीछे है, नाइफ कर दे, नाइफ कर दे। One down. नाइफ नहीं। Phoenix, our little star. Keep that furnace burning, okay? दौड़ खड़ क्या है मेरे पीछे, कहाँ से आया ये? बिशु मरूंगा ही। अरे बाबा। अबे जस्ट टेक योर यूटिल्स रे भाई। भाई मैं फिनिक्स होके सारा यूटिल लिया हूँ। किसको बोल रहा मेरे को? तुम नहीं भी। अच्छा। मैं इसमें अभी कुछ लगा नहीं रहा, बस कैम लगा रहा हूँ। अभी मैं सेव है, अभी कोई यूटिल नहीं है इसका। यूटिल लो। मैं यूटिल लिया हूँ लेकिन यूज नहीं कर रहा। एक ट्रिप लगा दो, कोई नहीं कोई नहीं। Spike planted. आया। Last player standing. हला रन एंड गन करता है बे, मदर जात। I'll outshine all their radiance. कम ऑन ग्वेन, कर दे चढ़ाई। कम ऑन ग्वेन, कम ऑन। खड़ा आना है बस तुझे भाई। इधर भी है, इधर भी है, दो है इधर। I'll crush your eyes, Amir. इधर एक है, Here. इधर एक है, दो है। आया। ठीक है। Yes, this should do. अबे साइड पे ओ कर्सन। Last player standing. Spike planted. बहुत 120 भाई। तुम लोग जाके कार्सन का देख कर आओ भाई, तुम देख कर आओ। अरे बाबा, Where will they go this time? तुम देख के आओ नहीं हुआ भाई, तुम स्प्रे कर रहा है। पहला शॉट तो मेरा हेडशॉट ही करे, कुछ डीले नहीं लगाया उसको कुछ। मैं कैसे मारा देखे तो? I will say. हाँ देख लो।
शर्म है कार्सन. That goes there. Gotta plug those holes, guys. That goes there. Mark 3. फालतू मेरे को दिखा ही नहीं था. Spike planted. Last player standing. अरे इसका रन एंड गन इसकी मार. Nailed them. ये कायरो बोल क्यों नहीं रहा है कुछ? You man ready? I need a drop. Cheers. Reloading. क्या बोलूँगा, फायदा नहीं है कुछ बोलने का. अरे लाइन मार इधर से इंस्टेंट लाइन. तू राइन्स कब से बन गया रे? राइन्स ये डोर तोड़ क्या? जा. Need a drop. That goes there. Yes, this should do. This goes here. Who's next? Fire in the hole! Marked 1. Nice one. Enemy spotted. रिवील हो गया. रिवील नहीं थोड़ा को. Planting. Careful now. Ult मारा था ना. Spike planted. Give me a Ult मारू. Reload him. जल्दी मार. रुक मैं बॉडी दिख नहीं रहा. Give me a corpse. मैंने योरू. One enemy remaining. Going up. Last player standing. स्मोक के अंदर क्यों घुसा? शॉट की तरह. टैप तो कर ले. अरे किया था उसको साउंड नहीं आया. Kludge. इतना देर लगा रहा है नहीं कर रहा. टैप भी तो नहीं किया था. We know the drill. नहीं किया Stick to your roles and we'll crush it. स्टिक कर लेता ना तो उसको आवाज नहीं आया था. मतलब 50-50 का वो चीज. शिट यार. This is a nice spot. This goes here. रिवील आया वो थोड़ा ही. Where are they? खुद एनिमी मैच खुद मार को गया फिर. This is a nice spot. They're blind with fear. वाइड स्विंग दिया. मार लेना, क्या फर्क पड़ रहा है. Careful now. Tripwire destroyed. इधर आ रहे. दो है. केज डाल. केज डालना. RyuK किसके लिए रखा है केज? Last player standing. Spike planted. सुना इधर है फिर भी ब्लाइंड पकड़ रहा है. रुक के तो सुन लो ना. तो लेफ्ट रास्ता. Eager to laugh. तो ब्लाइंड था कहीं उधर जो. No charges. Where are you? Look, don't start resting. Still work to do. अमन बेटा. That goes there. This is a nice spot. Yes, this should do. Watch this. Face your fear. साइफर बी तरफ रहता है.
I know exactly where you are. ऊपर टीपी क्या रखो ना जिंदा है Spike planted. कार्सन को पता नहीं, कार्सन अंदर मैं अंदर तो Last player standing. टीटी तेरे लेफ्ट में मैं ही खेलता हूँ मैं This is crazy. It feels like we've been doing this forever. Anyone else feel like that? I need a drop. Cheers. ओमेन सेट पड़ा मूर्ख वाला हेड कहाँ ठिया है That goes there. कवाटा हेड भांगी तो करेबो कौन लिंक खेलना डायरेक्ट लिंक खेलना डायरेक्ट I will find you. This goes here. Bring them down. बी जाओ मैं देख रहा हूँ No, you don't. Duck. Enemy spotted B. One enemy remaining. I must wait a moment. साइड में स्ट्राइक देख रहा ना This goes here. ट्रिप तो है साइफर पे ही कोई There you are, you little shit. Spikes B. Let us use our sight to our advantage. I need this. Thank you. फेड भी जा तृप्ति क्लोज खेल इधर खेल इसके ऊपर खेल नहीं खेल ब्लाइंड करता हूँ मैं हाँ ठीक है तू ब्लाइंड बना बस रिवील तोड़ दे यहाँ पे गिरेगा अगर पीछे गिरा तो नहीं This goes here. प्लीज कर दे Yes, this should do. Scatter. Careful, alt मारा है. Who's next? Come on, let's go. Put down. Drop careful. मेरे पे आया नाइस Nightmare, take them. Multiple enemy marked one. बोला था drop careful. ऊपर One enemy remaining. alt मारूं? अच्छा नहीं पीछे कैसा है मेन था पीछे जा क्या पीछे को चुप रहे 93 लो है Where is everyone hiding? Found you. They found my wire. ठीक है साइड पे मेरा कैम है. Got you. Spike My tower is planted. destroyed. लेफ्ट साइड आएगा क्या आएगा लेफ्ट सॉरी मोहम्मद मैं आपको भी दौड़ दो पहुंचे मुझे आने से ठीक है Spike defused. Remember, stay out of the fire. Super high level reloading. मैं ड्रॉप मार भाई है मेरे पे जीत जा ग्वेन. क्या देख रहे हैं जीत जा गोइन करे जा रहे हैं बस मैं इधर ही बैठ अरे मैं आ रहा हूँ भी. अरे जीत गया क्लब चैंपियनशिप. एजी ले ली फैल्कन से जगह. कौन लिया एजी ऑल गेमर्स चाइनीज वाली ग्लोबल से ग्लोबल Bring them down. पूरा क्लब चैंपियनशिप ले लिया. That goes there. स्मोक Bring them down. नहीं घुसे कैमरा तोड़ना वो तो मर चुका है उसका कैमरा थोड़ा क्या होगा. साई भाई साइड भाई अरे आओ ना जल्दी Spike planted.
दोनों उधर है, कहाँ देख रहे हैं? सॉरी दोनों एक गोली का, ठीक है। एक तो ऑफ हो सकता है, बता रहा हूँ अभी। क्या मैं रुको साई भाई साइड में ऑफ इधर। Got camera taken out. One enemy remaining. Reloading. अबे डीप तो करो एक बंदा। शिट दोनों ऑफ पे जा रहे। डीप इम्पोर्टेंट है ना ऑफ इम्पोर्टेंट है? ठीक है। क्या बात है? They will sky. Let's go Falcons हार गई वे। God. मैं तो देख लूंगा अपना, तो उसको मार। उसका टीपी जाते हुए देखा, मैं उसके टीपी पे खड़ा होना ऐसे शॉटी लेके, भाई वो फिर भी मैं फुल ब्लाइंड हुआ। दिखा ही नहीं मुझे कुछ। यार मैं ड्रॉप मांग दे 7700। नहीं मैं तो फुल सेल थोड़ी खेल रहा हूँ मैं। अबे तो गन तो ले ले फिर भी। ये चलता मत। This goes here. This goes here. This goes here. Spike down A. पीछे कार्सन मुड़ जा। इसे ओल्डी क्या बोल रहे हैं? Last round in the half. अबे वो देख के अनदेखा कर दिया उसको। अरे नहीं, अरे मेरे को लगा ये निकलेगा, फट के मारेगा। अरे ये निकलता है, ये इतना ये लड़का है भाई। इसी वजह से मैं साला स्काई That goes there. तुम साला वहाँ पे सपोर्ट नहीं दे रहे। Yes, this should do. रियल भाई। Yes, this should do. इधर है क्या? वो लोग डोर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देख के मरना मत। Spike down A. ओमेन उधर है ए पे। जा Spike planted. मेरे पे डैश है, साइड में डैश मारता हूँ। मैंने फ्लैश कर दिया। Going up. Flash. Blocking sight. Where are you? भाई कैसे देख तो मैंने कभी Enemy remaining. बैठ जा क्या कर रहा है? उसको भी साउंड नहीं आ रहा था क्या? क्या पता भाई। मैं जो चूतिया। Switching sides. We gotta pick. Moving. Got it? उसको अपने अल्ट में खुद ही अल्ट हो गया क्या? बीजेपी। Anyone feeling generous? Check your life. Thank you. अगर काश मेरा वॉल यहाँ से पूरा यहाँ तक कनेक्ट होता ना तो मजा आता, पहले पहुँचता नहीं है। That goes there. हाँ थोड़ा सा गैप रह जाता है, रिस्की है वो। ये आएगा उनका यूज़ साला शरीफ लेके खड़ा हुआ है। मारता है एक ब्लाइंडर को। मत मार। Bring them down. Reloading. Reloading. फेड और रेज इधर पे। किल कॉल दिया ये। Reloading. एक ही बंदा मार लो ना। सुनो रुक, चुप मेरे को वेट करो। तुम पे दोनों स्मोक है। हाँ तो ये स्मोक कर। ठीक है, ब्लाइंड भी करना। हाँ तू चल ना। Cover going out. Blocking sight. Yes. Going up.
One enemy remaining. Reloading. Plant. Fade plant कर. Spike planted. Take hold. Reloading. I'm twitchy here. Let's go already. बाबू इसके ऊपर टीपी मार के आ रहा अभी. Reloading. मर गया. मारा कि नहीं पूछ रहा है. कहाँ पूछेगा? मारा है कि नहीं? मारा भाई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वो मारेगा भाई. नहीं देखो रे बाबा. मरने के लिए They are mine. Bring them down. Right technique है. Shadows traveling. Blocking sight. I'll find you. Oh, this is a nice spot. Phoenix plant कर ले. Cave 2 cave. Tripwire destroyed. ए backstab. मैं भी जा रहा हूँ backstab देखने. जा. Cave देखो बस प्लीज. मल्टीपल आना चाहिए. लिंक आया है. Camera is destroyed. I must wait a moment. अबे मेरे को क्या फ्लैश कर रहा है बिगाड़ी? चिल कर. One enemy. इधर है backstab है ये. Flank. Flawless. चिंता मत कर. वो ब्लाइंड हो तुम भी ब्लाइंड हो गए ना. I mean तुम ब्लाइंड हो रहे तो भी हो गए. New tactics, keep it fresh, yeah. medium. साला sabotager. sabotage थोड़ी दोनों. वो एनिमीज रुकेगा. मैं पता है कल एक सुनो कांटेक्ट करो. Here. वो खड़ा रहेगा मारेंगे. वॉक करके जाओ. Yes, this should do. मैं कल एक वो अपना वीडियो देख रहा था. एडिट कर रहा था. वॉक करो. My eyes will tip the balance. भाई का एक दिल से गाली निकला हुआ क्लिप देखा मैं बोलता हूँ कौन सा कौन है ये लंचट ऊपर चढ़ा. सॉरी दोनों दीवार गिरा दिया. दोनों ने क्या एक ही तो गिरा. Enemy spotted. Bring them down. जल्दी करना. Shadows traveling. You're blind with fear. I'll find you. Bring them down. Headshot. Lean करेगा. Reloading. Got him. Spike planted. We'll catch them. This goes here. Enemy killed. One enemy remaining. सिटी पे ओडिन. ले लो ओडिन मास्टर. मादर चोद मेरे को लगा ओमेन को कौन मार रहा है पीछे से. थोड़ा गांड फटना चाहिए ना. सही में मारने तक करे. सही में मारने तक. Easy, mate. भागता गया. There can only be one hero. ओडिन. You got it. Reloading. मैं तो साइड में घुस के दो को वन टैप मारा हुआ है. रेस को ओडिन के लिए वो ओडिन के लिए बैठा ना. ऊपर मारा ना उसको टप करके मार दिया. सोच रहा हूँ पीछे. ठीक है. रूम पे टीपी मारा हूँ. कौन फूक कर रहा है अभी? Reloading. I am everywhere. Bring them down. Shadows traveling. Mark one. I know. गन सब गिर गए. मेरा ओमेन कहाँ मरा है? ओमेन जिंदा है बे. ओमेन बोल रहा हूँ. कहाँ मरा है? उधर ही. क्यों? पता नहीं. कौन किसको पूछ रहा है? मैं. तू थोड़ा पीछे रह के खेल ना. जिंदा रहे. तेरा ट्रिप से भाई. अरे ये वो हुआ ना तो मैं सोचा कि मैं घुसता हूँ इसको हेल्प करने. बताने का. तो रे भाई
देगा ब्लेंडर पीछे टिपी मार। Spike planted. Nice. There, take them. दो। बीमेन दे। Flank है। Nice. Last player standing. मोमेंटम ब्रेक कर दिया वो लोग। Thrifty. अरे सुनो मेरे को घुसने दो, मेरे पीछे दो लोग मत मारो दो। मैं तो मरा भी नहीं था। Show me where to go. तो कैसे मरा? मैं तो बहुत मैं सबसे लास्ट मरा हूँ। तो वही सबसे तो। लास्ट। हाँ। मेरे बाद अबे सब है। वही ये मरा बोल के मैं स्प्रे करना चालू किया, रेस को मारा और दो थे। नहीं सबसे लास्ट तो टेक्निकली देख अपना वोमेन मारा। ए भाग। आओ मिट्टू चलो स्मोक कर। चला गया। मैं आ रहा चला गया। पेमेंट पुश हो रहा है, ठीक है बोल। ए मैंने कि बी में ना लगा तू। अबे मिड देखो बे। वॉली डाला था। Enemy down. My ultimate is ready. Where is everyone hiding? मार बे। One enemy remaining. वो कहाँ है? वो उधर ए में Yes, this should do. मुक्ति लौड़े तेरा काम में मिड देखना, स्मोक कर और मिड देख। 10 वॉली डाला, वो पीछे में मुड़ा। वो 3 को कैसे मारा लौड़े? ब्लाइंड करके निकला। मैं ब्लाइंड हो गया। हाँ सिटी है। इसका कैमरा है। I must wait a moment. ये मेरे सामने आया है। ठीक है चुप। तेरे पे दोनों कैसे? चलेगा देख रहा। एक्सपेक्ट नहीं करेगा। निकल गया स्मोक से बच नहीं। अमन मालू पे का था ना। Whatever happens, तू मेरे को बात बता ना। don't panic. इधर क्यों आ रहा है? इधर रहना मिड स्मोक देखने के लिए। हां देख वो पीछे तो मैं ब्लाइंड करके से निकला। मेरे भाग आओ। अबे इधर खेलना। हां वही 4 जगह है। होल्ड कर ले। डुअलिस्ट हूँ मैं तो जाऊंगा ही उसके साथ। बाय दे दो। हाँ सॉरी। Thank you. मिड करने होता। हां मिडो स्मोक करिए। Cover going out. Save it. Wow, this is a nice क्लियर spot. है? Cover going out. नहीं आ सकता, बैक से ट्रिप लगाया हूँ वोमेन। Can be man. नाइस। निकल। Sorry. अरे इधर से आ गया वोमेन नाम। Spike down A. हाँ। I got the spike. दो है। Multi-spike down. वोमेन आ जल्दी आ वोमेन जल्दी आ। अबे मुक्ति लौड़े। तो उसका साइड में टीपी आ रहा है। टीपी मारेगा अमन साइड। I'll find you. Marked one. One enemy remaining. That makes 3. ओमेन मिड लगता। ओमेन भी मिड पे था। अरे बेंचो, इसको कोई रोको रे बाबा। हाँ? They're usually distracted once I reveal them. अरे मैं वेट कर रहा था स्मोक हटने का, स्मोक के अंदर क्यों रहेगा? जा रहा है करके मैं वॉल डाल ही दे रहा हूँ। ये लोग दौड़ रहे थे ना, तो मैं होल्ड कर रहा था। मैं जहाँ वॉल रोका हूँ तो वही पर क्रॉस दबाया है। देखिए लोग इधर दौड़ रहे थे, मैं ये हो रहा। इनका ए पे फेक करके बीच चलो। रेज और योरू अल्टा फेड अल्टा ए पे वो भयानक अल्ट मारेगा। ए फेक करके बीच चलो। Where are you? अबे Wow, this is a तू nice जा ना, spot. स्पाइक लेके जा ले। I have the spike. होल्ड कर। लौड़े लगे। दूसरा भी है। राइट देख हर्ष। नहीं राइट नहीं है। They found my wire. साइफर 140। चलो भी चलो। चलो। वो लोग अल्ट नहीं कर रहा है। पिक मत देना। 140 कैसे है? हाँ खाया मेरे से अभी। प्रेजेंस दे चुका है उधर। अरे वो आया था ट्रिप तोड़ने, तो ट्रिप तोड़ने आया तो मैं मारा उसको। अरे मेरे को कुछ नहीं किया होगा बोल कर देख रहा हूं।
ट्रिप लगाया क्या सिटी बैक स्टैप के लिए? अभी लगा रहा हूँ, तोड़ के गया था ना। तो तुम्हारे क्या कोई ट्रैप ही नहीं तोड़ रहा? Cage triggered. Spike planted. Careful now. Cage triggered. Face your fear! One enemy remaining. Okay, time for a break. उसको निकलने नहीं दिया। Race to the spike sites. जो चला तुम भाई। बेचारे का पार्टी ही नहीं निकला पार्टी निकल के उसके गाड़ में घुस गया फिर। Reloading. Here goes the party. Reloading. This goes here. वो मैं लो था तभी साला मैं हाँ तो 1 HP है ना शुरुआत से 46 HP पे था तो। मैं आ रहा हूँ मिड से लड़क। This goes here. फेड ए पे, रेज ए पे, फेड रेज ए। लेफ्ट क्लियर है। प्लांट कर। मेरा भी गोली खत्म। मादरचोद। शॉटगन पकड़ा हर्ष देख के। पता है। Spike planted. Nightmare, take them, dear. Mark 3. मेरा देखो पोजी देखो। One enemy remaining. उसका पोजी दे, उसका ओडिन दे, उसका ओडिन दे। Oops. No one to interrogate. अबे मेरा Match point. गोली था, उसका भी एक गोली था ना। दोनों का रिलोड आया साथ से। I need this. Reloading. Thank you. Reloading. That goes there. Who needs a weapon? I can buy. वर्ल्ड देगा देख के। वर्ल्ड क्या करेगा बे? डैमेज थोड़ी देगा। लास्ट बुक जॉब बस कहां जा रहा है रे? ए बॉटम फ्रैग इधर। Ah, this is a nice spot. जाना होता तब नहीं जाएगा, जब साला नहीं जाना होता तब जा रहा है। Who's next? यहाँ पे मिड से योरू वर्ल्ड किया। Headshot. Enemy spotted A. अबे लेफ्ट बैठा है हेलो। ये भी एक सेकंड। राइट क्लियर करके गया। माय बैड। अपना रुक क्या कर रहा है? रुक के आ गया। यहाँ पे आ रहा है गाइस यहाँ पे है। नेक्स्ट स्टेप। ठीक है। ट्रिप तोड़ा। One enemy remaining. Slam عليك. लेफ्ट ग्रीन बॉक्स। Attackers win. Back to my workshop. Still much to अरे be मैं done. एफ के था। बोला ना एफ के था। भाई हर्ष मैं ध्यान दिया कि तू राइट क्लियर किया, मेरे को दिमाग में आया ही नहीं लेफ्ट क्लियर करना। अरे मेरे को करना था जो लेफ्ट क्लियर, बट मैंने नहीं तू ठीक क्लियर किया। नहीं वो तो कर भी नहीं पाएगा। क्या बात है चैट? वी हैव अ न्यू क्लब चैंपियन, वर्ल्ड कप चैंपियन। क्या? ऑल गेमर्स ग्लोबल। क्या हो गया कासिम? मेरा वो एनिमेशन लगा नहीं था मेरे। स्टार्ट कर। ए गो कर रहे। नया क्या स्किन है? अबे वो लिया है ना नया वाला वैंडल एरीज। अरे गाइस फैंटम है। अबे पता है मैं बोल रहा हूँ एरीज क्यों लिया पता है? क्योंकि गेम में एक एरीज स्किन है जो स्पैमिंग वाला गन है, तो इसलिए ले लिया ही। एक बार वो पिंक वाला लगाना जरा, देखते कैसा दिखता है हाथ में। जस्ट पर्पल वाला लगा तो मेरा हाथ वाला पिंक वाला तो रेड दिखता है। नहीं रेड है। नहीं रेड पिंक पर्पल रेड पिंक अलग है। ये वाला पिगी पिंक है पता है? पिगी पिंक। ओह माय गॉड क्यूटी। ओहो बेटा पिग साला। अपना 27 साल का क्यूटी देख रहे हो तो हमारे अंदर। नहीं हमारे अंदर डाइकास्ट मॉडल में ना यही कलर का बहुत बड़ा गाड़ी है, मस्त दिखता है। पिंक कलर क्या कलर? पिंक वही पिंक कलर एग्जैक्ट। अबे पिंक बहुत अच्छा कलर है भाई। आरआर ब्रदर्स डिसाइड करो तुम क्या खेल रहे हो। मुझे क्या खेलना जल्दी बताओ। ले लो तुम अपना वायरिंग गार्ड में घिसते रहो। यू नो आई विल प्ले
सपोर्ट एजेंट तृप्ति anything else ये होल्डिंग होता है मैं खेलूंगा मैं तो बोलता हूँ मैं चेम्बर खेलता हूँ डीमन वन कुछ एक फ्लैशर इनिशिएटर खेल लो जैसे कि अपना क्या या तो आप मिक्स खेलो या तो तृप्ति तू ये खेल ले स्काई खेल नहीं भाई ये साला अपना टीम ब्लाइंड करेगा मेरे को लग रहा है क्या डर तो है better than INS इससे अच्छा कायरो यस क्या वो थोड़ा सा रेज हो जाता है नहीं I will play better in chamber than raise भाई Nothing stays hidden from me. तू मेरे को स्प्लिट में रेस बॉल मैं ले लूंगा एग्जैक्टली यही पिंक कलर है वहां पिंक तो वो भी था बे है मैंने पिंक तो बस दिखता भी ये कलर पिंक एक ही पे सूट करता था बे मेरे जीवन में बाकी सब काले थे Phoenix, should I throw अबे some sound waves सूट your करता way? था मतलब उसके बाद बाकी लोगों को दिखता नहीं था ना एग्जैक्ट यही पिंक है क्या बात है बे अबे अगर मैं वेटो के इंटरसेप्टर पे अपना चेम्बर गोली चलाऊंगा मेरा गोली खाएगा क्या हाँ ऑब्वियसली खाएगा बे एक कोई तो क्लासिक खरीदो रे अच्छा वाला आप खरीदो ना पैसा किस पे है इधर सबसे ज्यादा यहाँ पे ऑल्ट आईडी पे भी स्किन कौन खरीदता है ये 4080 हैं हाँ तो पकड़ के बैठे हो वाह डीमन भाई है मैं भी आपका होटल्स कलेक्शन का लिस्ट निकालूं एक साला 4,000 का गाड़ी है 30,000 का अरे बाबा इतना गलत Reloading. Here's a heal. कैसे पील गया बे मैं वो तोड़ने गया था उसका साइड लेकिन तो Tearing up. Hawk out. Blinding. Enemy B. Last player standing. Spike down B. Trap destroyed. There they are. I'm a good shot. Almost ready. तेरी माँ I can't miss. One enemy remaining. यहीं पे गेम निकाल देता यार मैं लो नहीं होता तो With me, Chamber. Your eyes, my cameras. We make a good team. अबे यार अगर RyuK पे घोस्ट रहता तो मैं फटाफट उसको पिक करके वॉल करके घुस जाता शर्म बेंच अबे मैं घोस्ट के लिए गया था वाह घुस तो सकता हूँ वाह क्लासिक में थोड़ी मैं 2 को मारता हूँ देख रहा है सुन रहा है मेरा बॉडी से उठाएगा बे थोड़ा तो शर्म कर ले बे गलत क्या है मार देता रे Yes, this should Hawk out. Blinded. Watch your eyes. Hawk out. Blinded. राइट साइड I must wait. आया Spike down A. Last player standing. आया उड़ते आया If you are not doing well, keep trying. We must keep up appearances. क्या हो गया Reloading. क्या हो अरे बुल्लॉक पकड़ा क्लासिक पकड़ा हूँ दौड़ के दिया है This goes दौड़ here. के दिया है तेरी जा रहा उनके साथ घुस एल्बो से घुस उनको कैच वेच दे Back each other सुनो up. रे लंचटो मैं यहाँ से इधर वो करूंगा कैमरा करूंगा फिर घुसना Hawk out. That's a concuss. Hunt. एक राउंड में स्मोक चेक नहीं किया Hawk out. Kids. Blinded. Cage trigger.
वो तो दोनों तो घुसे नहीं बेंचो। Last player standing. Spike down A. अबे मॉली आया ना लौट कैसे घुसेंगे मुंह पे मॉली गिराया अरे भाई रेज है Let us see what they have planned for us this time. सुनो Reloading. बहुत बारी करेंगे बहुत लोकेशन देते हैं ये यहाँ से कोई ना पिक करना मेरे साथ कार्सन क्या खेल रहा है? अच्छा नीचे से चलो फिर कार्सन को देखो सुनो बिया गन लेके आओ ना नहीं आ पाएंगे सोबा ये पे लिंक दिखेगा तेरे को दोनों निकलो ना तो लोग बहुत फास्ट लोकेशन दे रहे हैं मैं चुपचाप गया मेरे को दो पकड़ दोनों में मादर जो टकले के ऊपर गिरा मेरा बाल को बिजली मारा है वो दोनों उधर ही है बाल को बिजली मारा है दोनों My camera is destroyed. क्या कर रहा है? My time. One enemy remaining. अरे कार्सन, अरे बेंचो, अरे कार्सन, अरे नहीं मेरे को लगा वहाँ पे तो किसको वो देगा जो भी है क्या स्टीम बीकन दूंगा क्यों हर वक्त अरे यार कांटेक्ट करो तुम लोग ये पे आवाज ए रुक जा रे मिनट देख थोड़ा कहां आवाज दे ए पे नीचे तक नहीं गया रे ड्राउन आउट एनिमी रेस Yes, this should do. सवार है जिंदगी सवार दूं एक नई बहार आओ बियो चलो लाइट मत बंद कर बस पीछे आ द्रुपी जल्दी पीछे My ultimate is ready. बाहर वाला दरवाजा बंद कर दिया रेस है मॉली वेस्ट करके ठीक है छोड़ दे इतने सारे मच्छर अभी दो है इधर सोवा था क्या नहीं मैं तो रेस होगा रेस सोवा ड्रोनिंग सिटी ओसीडी इसका ट्रिगर हो रहा है Watch your eyes. ऊपर है रेस ऊपर है One enemy remaining. वहीं पे सिटी That's it, return. Weapon choice. It is so personal, no? You pick a gun and it tells me who you are. Read them like a book पे ये ले लो गन ले लो मेरे से इधर गन है ऑफ खरीद के दे बहुत पैसे है तेरे पे Yes, this should do. आवाज करो रुक तू मेरे पे खेल स्पाइक छोड़ दे स्पाइक स्पॉन पे छोड़ दे ये स्पॉन ना छोड़ इधर Okay, let's get set up. I have dropped the spike. बस फोड़ वापस फोड़ इधर डॉक कर इसको डॉक कर They found my trap. देख सुनो ए पे आओ चलो वॉक करके आना पूरा वॉक करना चुप I have the spike. एक आया मिड आया सुनना चेंबर My ultimate is ready. Where is everyone hiding? 35 वो आएगा वो ले ले गन लेने ठीक है बी जा रहा Hawk out! Blinded!
ले बेंच खा गया। दो सिटी क्लो वन में। हाँ दोनों क्लो दोनों। One enemy remaining. अबे श्रुति तू वहाँ पे अच्छा किया कि स्मोक से बाहर नहीं निकला और यहाँ पे पिक क्यों कर लिया? अबे तो जरूरी थोड़ी है कि हाँ भाई उसके कांटेक्ट पे पिक लेता। हाँ सेम करो उसके कांटेक्ट पे पिक लेता, उसको कोई अगर मार रहा तब पिक लेता। ब्लाइंड दिया तू मिड पे खेल। तू कौन सा मैंने टेंस का बाप है? ब्लाइंड दिया तो बी पे आवाज I need this. My thanks. Let's knock them down. That goes there. जैसे मिड पे खेल। यप ब्लाइंड फोड़ यहाँ फोड़ ये फोड़ नहीं जरूरत नहीं यार। कोई नहीं सुबह है। हो गया Erased. नाइस रे पता ही था सुबह है। जा ये चलो ए पे सुबह है अभी भी। आ सकते हो तुम लोग ऐसे। मैं तो वॉक करके आ रहा हूं। मेरे पे अल्ट है। दौड़ मागे दौड़ नल मागे पछरा जीव चुपचाप शिफ्ट करी अंटा फाड़ दो। एट शिफ्ट एक रोटेट कर रहा है ऑब्वियसली। मैं अल्ट मार के घुसूंगा। जस्ट ड्रोन कर रहा है वो सिटी। साइड देख लो मैं ऊपर जा रहा हूं। My eyes are better than yours. You had your fun. My turn begins. One enemy remaining. 3 out of 5. क्या मारा है? Moscow. Just some good old hard yakka. Standing in between us and उनका victory. बेटा क्यों तो आया हेड खा के चले गया। Help a girl out, would you? क्या करना बस सेम ए फास्ट करो। लुक एक ट्रिक लगा क्या नहीं यहाँ पे? वही करने आया था। Yes. ये जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में आते हैं ना लोग ज्यादा साजिश रहता है दिख रहा है। ये क्या बोल रहा है? वही भी मिड पुश है। क्लोज का मिड पुश आ गया रे। राइट ऑफ है उस पे रुक। स्मोक देना। नाइस 120 दो है हैंडल लिया स्मोक में। करे सोलर भी है। रुक चले जा नहीं आई थिंक। हाँ प्लांट वो पार हो गया। आ रहा रुको। वेटो लिंक। Nowhere to run. उड़ा दे। क्रॉस करा बस नाइस। One enemy remaining. करे ऑपरेटर है। मारेगा ये लौड़ा देखना। नहीं अच्छा इधर गिरा हेड पे तो मार और लौड़े इधर ही फोड़ना। ये वो ऑफ सेव कर सकते हैं। सिटी है। ठीक है। ऑफ तो मुंह के सामने RyuK का। हाँ Watch for my tech, everyone. If I throw it left and you go right, I can't heal. Reloading. इसमें भी दिक्कत है तेरे को साले। तो मैं मारा। अरे नहीं गोली मार दी इसने। अरे तो वो कह रहा है जो क्लोव को नहीं मार पाया उसका क्या? अरे सॉरी वो तो हक। अबे तू इधर ब्लाइंड फोड़ ना, इधर क्या ले रहा है? अरे मेरे को लगा ऑफ बोले ना तो मैं ऊपर से ऑफ। अबे तो उधर ही फोड़। अबे चोदू इधर फोड़ेगा तो ये भी ब्लाइंड होगा ये भी ब्लाइंड होगा। फोड़ेगा तभी ना ज्यादा टाइम तक ब्लाइंड रहेगा। Hawk out. वेटो बी राइट पे है। रेस है राइट। अबे मैं मार रहा हूँ ब्रो से कंधे के थ्रू गोली दिया भाई। Enemy spotted A. करे दो करे। Our spike carrier is killed. Last player दोनों बी से दोनों बी down A. दोनों बी दोनों मिड है। हां वेटो यहां इधर है। इधर है। Spike planted.
क्या हुआ वहाँ पे? दोनों कैसे मर गए? अबे स्काई तू ब्लाइंड क्यों नहीं कर रहा है? और एक सुन ये लोग क्या करता है पता है? ये लोग अंधा स्पैम करता है। Trust each other. That's all. इतना स्पैम के जगह हेड मार के भी आराम से ऐसे टाप अरे मार देता 100 बार के वहां पे 3 1 That goes there. अबे तो तुम तो एक को भी नहीं मारे हो। इधर आ एक को ही मारे हो, एक खाली रेस को ही मारे हो, खाली रेस को ही तो मारे हो। इधर आ कालचन, इधर आ। रैना को 230 मारा हूँ मैं। क्या करूं मैं उसका? This is a nice spot. एग्जैक्टली, थोड़ा क्लियर तो करो। मार्केट आओ ना, आगे कोई आ जाओ ना। क्या Found my wire. कर ले हर्ष। ट्रैप देख। अबे मैं शेल्फ निकाल के तोड़ने वाला था, जस्ट भाई वो पिक कर दिया। 3 आ रहे। Last player standing. Spike down B. अबे आ जाओ ना, अगर मैं आगे जा रहा हूँ, एक बंदा तो आ जाओ। Okay, which gun to pick this time? Help a girl out with you. स्लोअर नहीं होगा। थोड़ा मैं ही देखता हूँ, मेरा ही गलती करते। Yes, this should do. मोरे बोलता हूँ। इनको बाय दो। कौन है ये? इनको बाय दो। ये मैं इधर फोड़ रहा हूँ। स्पेक्टर क्यों लिया रे? बुलडॉग तो ले ले। अरे स्पेक्टर उसका ज्यादा अच्छा है, बुलडॉग वैंटल फैंटम सब। That goes there. क्लोज देख के। Our spike carrier is killed. Spike down A. तुम ही मारा हुआ है। मेरा लेफ्ट देखना। देख रहा हूँ। इधर आना, इधर आ। अरे चूतिया उधर। राइट जा। वहाँ पे कोई मरा, रुक मैं पोजी निकाल रहा हूँ, रुक अल्ट है। मादर जात पे मेडिसिन आ रहा। ट्रिप लगा के ना। Give me a corpse. इधर है। एल्बो में इधर है। Where is everyone hiding? चल। क्या है बे ये? टैग क्या हो? रुकती नहीं। That goes there. My ultimate's ready. Not another step. Come on, let's go. तेरे ऊपर। Cage trigger. निकल जा। One enemy remaining. Last player standing. Nice. I got it. Last round before the switch. Let's spend all your money or give it to me. Good cause either way. Hey, learn to control your hormones. Reloading. Yes, this should do. समझ रहा हूँ, यंग ब्लड है। Help a girl out. 3 HP Help a girl out. 3 HP है बता वो। अबे गंचट है क्या रे? राइट पे है। नहीं आ सकता। Nowhere to run. Tripwire destroyed. ए बैकस्टैब। अच्छा वो। हाँ। पीछे के वो। अरे अमन तू मॉली क्यों वेस्ट कर रहा है? अपने पे 2 हीलर है। चल यहाँ पे स्मोक आ गया, ये उनको लग रहा है बी आए हम लोग। जाओ ये जाओ वापस। This goes here. Enemy spotted. Hey. जाओ ये जाओ। Reloading. कौन किया है? रेस तो मार के चला गया। मिड पे है रेस। सेवा मिड है। ए प्लेयर्स तो मिड पे है। बस रहना होगा। जाओ। मेरे सर के ऊपर एक गायब हैंडल है। राइट मेन से घुसो। एल्बो पूरा खाली है। हाँ रोटेशन हो रहा है। तीन लोगों का रोटेशन हो रहा है। क्लोज। नाइस। और दो है 3 है। Last player standing. Spike down A. अबे मैं टीपी
सेट करना भूल गया था, मुझे लगा मैं टीपी करके सेट। Switching sides. हाँ तुम्हें टीपी आ गया होगा ना? हाथ में मेरा ऐसे कार्ड निकल उसके मुंह में मारता उसी से। ले पैन जो तो अपना पीछे लगा, उनका रेस और सोफा तोड़ देगा फिर अपने लिए लगा। ये 5 किल मार में थोड़ा मारो That goes there. का जैसा मत खेल। आ गया बॉटम फ्लैग। Wow, this is a nice spot. Wow, this is a nice spot. यहाँ पे बी, जल्दी स्मोक। अरे रिवील तोड़ दे रे मेरे भाई। ये लेफ्ट साइड चढ़ रहा है। अरे चढ़ रहा है। Last player standing. अरे कार्सन उसको बोल तो दे एटलीस्ट, चढ़ रहा है बोलकर। Spike planted. होल्ड कर रहा हूं मैं साइड में, अदर चौदह आ रहा हूं, मर रहा हूं। मैं आने तक मैं आ रहा हूं कि नहीं, मदर मर रहा हूं। नहीं इसमें तो इनका गलती नहीं है, इनका तो पुश हुआ है, उसमें कुछ कर नहीं सकती। अबे उनका काम है पुश करना। अरे उनका मैं YouTube पे रिटेक भी नहीं ले पा रहा। अबे नहीं, यहाँ पे कार्सन अगर बोल देता ना रेना पुश कर रहा है, देखा भी था रेना को चढ़ते हुए। अरे आप चढ़ते हुए देखे ना इधर बॉक्सेस पे। So listen for noises. You'll hear those jerks before you see them. अरे नहीं आवाज नहीं, आप देख कर आए जब फाइट ले रहे थे, एक को मारे, आप समझ रहे हो? फिर रेना को देखे आप सर। हाँ इधर अगर वो खड़ा है ना सर नहीं दिखता, इधर था बोलकर ही सर दिखा और पूरा चेस्ट पे। क्रॉस करके बोलता रहा हूं, यहां आ गया। फिर भी ये बोलता है लोड़ा। That's a concuss. That's a concuss. ये मेरे रोटेट। भाई फेंके जा रहे हो, हेड से मारा है। नहीं बहुत Spike planted. Target down. Scout दो है बेंच और एक फ्लोट भी है। Last player standing. ए भाड़ खाओ जा, नहीं आएगा, कुछ तो कर। नहीं आएगा, उसके लिए वेट कर रहा हूं। नहीं वो आएगा नहीं, मैं सोचा इसके पास जाऊंगा। They keep trying to silence us. We keep talking. Reloading. ट्रिप का बात नहीं, उसके बाद रिटेक के लिए भी अपना काम। अबे वो जब चढ़ता है ना, यहाँ के लिए ट्रिप लगा, सुन। हाँ और एक यहाँ के लिए ट्रिप लगा, तो उनको साइड एंटर करना देते और एक अंदर खेलो, ये बैक मार्केट खेल लो। Yes, this should do. उसको मार्केट खिलाओगे। केयर भी इधर आएगा। होल्ड कर। Smoke's resonating. इतना आगे नहीं लोडे। नहीं चलेगा, मैं तो बच जाऊंगा। कोई नहीं है मैं। काय यदि लियर असला ना, लियर मांगी हो मन ब्लाइंड और रिस्मो 0-0. Someone's mid. 0-0. फ्लैश कर। Smoke's resonating. तेरे को दिखना चाहिए। राइट पे ट्रिप है, रुक जा इजी कर। Enemy spotted. Reloading. मिड पे खड़ा है वो, बैठो अभी भी मिड। मेन स्मोक पीक ले स्काई, इधर से पीक ले। हाँ बस। Smoke's up. अबे इधर खड़ा रहे ना, थोड़ा राइट और आ। राइट बोल रहा हूँ, लेफ्ट जा रहा है, डिसलेक्सिक साला। हाँ बस। Reloading. 30 seconds left.
ठीक है अभी छोड़ दे, अभी इधर बैठ, सुन इधर बैठ। मार गया, आया था एक बुलेट पे। मैं बोलूंगा हाँ, तू One बैठ enemy remaining. शांति से बैठ। Flawless. No one left to send a message. Oh well. It seems these strangers want me dead. अब तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 7 12 और 8 8 13 में जो है छोड़ दो भैया। That goes there. This goes here. That goes there. Focus now. हाँ exactly. Mid है। Mid का ट्रिप छोड़ा। Mid तोड़ दिया। Smoke। ये mid बोला ये फोन ना कहाँ? किसके? तू क्यों कर रहा है लौड़ा उधर से? अरे मैंने तो आ चुके रे। ये आओ बोला तो भी क्यों जाते? इधर डालना, अंदर कौन डालता है? इधर क्लोव मेन। My camera is destroyed. क्या बोला हर्ष, वापस बोल। बी देखो। अरे यार क्या करूं बे, रिवील भी हो रहा हूं। मेन है 70 में। Last player standing. बैक साइड आ चुका है वो इधर से आया, मार्केट से आया। ग्लोव था यहाँ पे, चढ़ सकता ऊपर। ऐसे खेल रहे हो क्या? One enemy remaining. अगर वो उधर है तो रेस क्यों? Teleport's ready. तो हमेशा इसको क्लियर क्यों नहीं करता है बे ठीक से? रहना भी इधर तेरे लास्ट टाइम मारा था, ये क्या स्विंग है? मेरे को लगता है वो लोग इधर बैठेगा। Reloading. ऑफ एंगल है वो, इसलिए तेरे रहना लास्ट टाइम मारा था। फटाफट घुमा ना माउस। I can drop must. Need a drop. Wow, this is a nice spot. साला आप गन खा के दो। ये देख मैं थैंक्स। That goes there. अबे यार खत्म कर दिया। Now, where to set up shop? 3 लोग साइफर के साइड पे Yes, this should do. Hawk out. अरे आया। Smoke's up. Fire in the hole. Smoke's up. नहीं हो सकता। Spike planted. नाइस वन ब्रो। अरे नहीं इसमें वैंडल। उसका पीछे रह जा, उसका एक एल्बो सोवा। Had your fun. My turn. Last player standing. तुम लोग प्लीज थोड़ा एक खेल लो मेरे साथ, 2 लोग खेल लो। 1 मिनट मैं मेरे साइड पे एक ही बंदा रहा हूँ। क्लोव बोल रहा हूँ, जो भी स्मोकर है। मैंने स्मोकर को मार्केट खिला। अबे तू तो केज वाला है, तुमको क्या स्मोकर का चिंता? अरे तो मैं कहाँ स्मोकर, मैं इधर बोल रहा हूँ। इधर या इधर खेल लो एक, मैं बाकी संभाल लूंगा। स्मोकर मिड खेलेगा तो मर जाएगा वो। Yes, this should do. Yes, this should do. मिड हर जगह देख। They found my trap. ट्रिप तोड़ा। ट्रिप तोड़ रहा है मेरा। ठीक है देख। One enemy remaining. Spike down mid. Scout destroyed. You tried. Nice one, Ray. Nice one, guys. Y'all better keep up. 4 हेडशॉट फट मारो। Sorry, 3 हेडशॉट। Help a girl out, would you? Cheers, mate. अगर कोई बोल रहा है सिंगल डिजिट तो मैं रुकने वाला नहीं। That goes there. क्या बोल रहा है?
साइफर का चलता है डिफेंस में, अगर वो अटैकिंग में लर्क करे किल्स नहीं कर पाए तो उसका दोस्त। निकाला है। हाँ पे चढ़ेगा। अरे क्यों जा रहा है? अरे लाइन दे। हाँ बी मैन है, इधर रहा इधर रहा। Destroyed. Reloading. तो मैं दे इसलिए तो तेरे को अंदर बैठने बोलता, मैं कैम से देखूंगा ना। 0 डैमेज दिया ना तू हर्ष। अच्छा एक गोली में लेटा है। Found one. Hawk out. Blinded. मार उसको। और एक साइड क्लोज है, साइड क्लोज है देख के। Time to hunt. Scout destroyed. उसको मार राइट वाला। तृप्ति Spike planted. Last player standing. लेट करेगा तो बुक्का चौथा टाइप तो सब करे। लुच्ची के रॉयल किससे? अरे यार जल्दी कर ना। One of my cameras is broken. Oh, wait. Reloading. It's fine. टॉप कर गया। अमन तो एल्बो खेल। That goes there. Yes, this should do. That goes there. अंदर बैठ। साइड में नहीं खेल रहा। जा तू जा। नाइस। वेटो भी था। वेटो और पीछे ना एल्बो। This goes here. क्या? इधर खेल। What the fuck? मैं छोड़ रहा हूँ। ये मैं छोड़ रहा हूँ। आया। एक लेफ्ट होगा बस। इधर ही है। मेन देख रहा हूँ। एल्बो देखो। मेन देखो। One enemy remaining. चिल करो, फाइट मत करो। हो गया। मत करो बोला, मैं जस्ट कॉल दिया। तेरे से आने से पहले होल्ड किया हुआ। Hawk out. 30 सेकंड है, चिल करो। Blinded. 65 फ्लो है। 30 seconds left. पिक लेकर रख Here. इधर। उसके पास स्पाइक है। यस, टाइम टू रोटेट। पिक नहीं कर रहा हूँ मैं। Okay, they're dead. Take what's useful. मैं लॉन्ग रेंज में फाइट नहीं ले पाऊंगा ठीक से, इसलिए मैं आगे खेल रहा था। Let's use मैंने that. पोजीशन चेंज कर दिया। Help a girl out, would ya? Cheers, mate. बेंचो गरीब लोग बाय भी नहीं है तुम लोग पे। साला इतना मार रहा हूँ फिर मेरा ही बाय नहीं दे रहा। कार से नहीं जा। This goes here. पे कोई तो पैसा बचाना सीखो बे। साला मैं हर टाइम बचा रहा हूँ, तुम्हें वो बाय दे रहा। This is a nice spot. इधर बैठ। Here. Hawk out. फ्लैंक करो ना एक। बेटो को मिड नहीं कर सकते अपने मुंह के सामने ये दो। अरे ये दोनों लंचट को देखो ना कहां पे। जा कुत्ता कर और आगे जा। नहीं तो मेरे को कुत्ता करवा और मैं जा रहा हूँ आगे। मैं देख Nowhere to run. मारना उसको। अबे वो मारेगा नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा बे उधर। अबे तुम लोग क्या हार रहे हो बे फिर? अबे मेरे को अल्ट मारा फिर रेस स्विंग किया, इसको मारना था, नहीं मारा, मैं क्या करूँ अब? सोवा मेरे को अल्ट कर रहा है। अबे सोवा मेरे को मारा है पहले। Spike क्या देख रहे तुम? रुक जा। अपना वहाँ पे फ्लैश कर। हाँ वाइड Rain a king. Last player standing. कोई ना
किसका खेला? मेरे को वो 80 मारा, ये 80 मारा। रेस को तो मार ले एटलीस्ट। अबे अल्ट तुमको तो पहले मारा भी नहीं है, तू पहले क्यों मूव कर रहा है? हाँ बट ये भी समझना, जब फर्स्ट वाला मार रहे तब रेस मेरे को इधर तक वाइड मार रहा है। अरे तुम दोनों मेरी बात सुनो। तो मार दिया ना, तो तुम दोनों पैसिव खेलो, एग्रो खेलने का तब जरूरत नहीं है। जा तू जा। Yes, this should do. स्मोक देना। एल्बो आया। अरे स्मोक किधर है आपका? स्मोक ही नहीं है मादरचोद। कहाँ से मैं स्विंग करूँ? Last player standing. Flawless. Attackers win. क्या कर रहे हो बे? ये साइड पे एक तो होल्ड नहीं हो रहा है। अरे वो स्मोक वो लोग बहुत फास्ट पुश करेगा, हम लोग पे ऐसा ऑप नहीं है ना होल्ड करने के लिए। टाइम वेस्ट था मादरचोद। ढंग का स्मोक दे दे रे बस। पता है वो लोग घुस रहा है, डालना आगे का स्मोक। कुछ नहीं बस स्मोकर इतना खेलते तुम लोग को स्मोक देना नहीं पता। Match found. इरिटेट कर दे रहे हो। क्या भाई? होल्ड करूंगा ही नहीं, मैं पूरा बैक सेट खेलूंगा अब। हां भाई। हाँ? आप जीते? कौन? मैं एक हारा एक जीता। अभी इसके जस्ट पहले वाला। इसके वाला ये वाला तो हारा। हमारी मैच खत्म हो गई पूरी, हम जीत गए, फिर लिखा हुआ है चीटर डिटेक्टेड। पूरा तो मैच खत्म होने हारा रिफंड तो हो जाएगा उसमें। हां प्लस लगी। हाँ हम जीते थे पर। अच्छा सुनो मेरी बात। जा रे ये यूरो पकड़ रहे अपना यूरो लंचाट। क्यों? मैं साइफर लेता ना। अरे तुम भी साइड पे होल्ड नहीं कर पा रहे। हाँ लौड़ा मेरा, तुम लोग का 4 राउंड तुम लोग वहाँ पे दिया, मेरे साइड पे तो आया था मैं तुम्हारा। तुम लोग के वहाँ पे 6 राउंड दे दिया ना फिर। भाई हम लोग का इधर आया है कब? 4 राउंड इसीलिए हुआ, उसमें से 2 राउंड अल्ट खाया हूँ मैं मुंह पे। तो भाई वो अब और स्मोक नहीं है मेरे पे, तुम पे केज है, सब कुछ है, बजो मत अभी भाई। तो फिर मैं तो साइफर खेल रहा हूँ भाई, मैं नहीं ले रहा हूँ ड्यूलिस्ट। सॉरी जल्दी से रहना यूरो लो, मेरे से नहीं होगा ड्यूलिस्ट के लिए अच्छा सा इनिशिएटर। नहीं ड्यूलिस्ट मैं नहीं खेल रहा। तो मत खेलना ड्यूलिस्ट। कौन जबरदस्ती खेल रहा है? बोल रहा था ड्यूलिस्ट खेलना। मैं सेंटिनल ही खेलूंगा भाई। दोनों डॉज मार रहे हो, दोनों पिक मत करना, दोनों पिक मत करना, अभी सब बोल रहा हूं। पता चला कोई पिक कर दिया ना लास्ट सेकंड। देख रहे हो कार्सन को देख अम्मी को देख भाई। अबे ये साला डिजिटल हाउस वाला ब्लेम गेम हमेशा ब्लेम गेम ही खेलेगा और कुछ नहीं करेगा। कौन किसका बात कर रहा है? किसका बात कर रहा है? बोलना। तो मेरा मिक्सर 300 रल जाएगा। ऐसा ही पकड़ तेरे को चाहिए तो मैं इधर भी फ्लैश दे दूंगा इसको इधर पे सीधा। Match found. BenQ स्मोक दे सीधा साइड में फ्लैश दे रहा हूँ।
क्या बात है कैरो भाई, मैं अभी जस्ट बोलने वाला था। अरे कहाँ घूम रहा है? 78 है। अबे ये भी डॉज करोगे क्या? ओके, मेरे को भी खेलना पड़ेगा। मेरे क्या लेगा? अबे कहाँ से ना ये ले लो। आप स्मोक लो। हाँ नहीं नहीं उस अरे बाप रे, आप आए नहीं, आप पेड़ में ले। क्या लो जल्दी बता। रेना लो क्यों? क्या बोल रहा है? रेना ले लो, नहीं तो उसका कॉल गांड मारे, आप रेना लो जो तो कॉल दे रहा है। जांगा बोलो रे। मैं तो गांजा बोल। अरे मत बोलो रे। कुछ नहीं होता है, बात करने में बैन नहीं खाएगा। येलो डॉलर लगता है। कौन सा तुम्हें सुपर चैट कर रहा है? अरे सुपर चैट पे नहीं होता है, एड्स पे होता है येलो डॉलर। सुपर चैट पे होता तो भाई मैं तो बोलता हूँ और बोलो मादरचोद। सुपर चैट जिस दिन कोई ज्यादा कर रहा होगा उस दिन बोलूंगा कि नहीं मत I will बोलना। stop anyone who tries to come through. I must keep my secrets with me. Give me BJP. Need a drop. BJP. Thank you. शर्म है थोड़ा सा भी। अरे मैं तो अपना स्किन यूज कर रहा था। मेरी बात अगर तुम लोग मानोगे, एक मैं तो प्यारा सा करो, एक मिट्टू भी प्यारा सा करो। बी साइड को जाने से छोड़ दो पिस्टल राउंड में, एक वॉल डाल। प्यारा क्यों, पूरा एकदम दुलारा सा करेंगे। ये मैं यहाँ से ट्राई कर रहा हूँ। ये चूतिया है क्या रे तू? थोड़ा सा ऐसे करके नहीं कूद सकता था। स्मोक तो दे, वेंट स्मोक तो दे। This goes here. Going out. ट्रैप लगा है पेड़। Enemy spotted mid. अबे हील दे अमन, हील दे। राइट। ए मेन गया है। Spike down B. यहाँ पे एक है। RyuK कहाँ गांड मरा रहे रे भूखड़ी वाला? तुमको कुछ भी खेला है तो तुम मार छोड़ देगा टीम का, नहीं एकदम। से जा यहाँ पे बनाया। Tripwire destroyed. सेज पुश किया सिटी। Last player standing. ए मेरे को एक बात बता लौड़े, तू ए साइड पे क्या गांड मरा रहा है? मैं ट्रिप लगाने गया था तब तक मर गए सारे। थोड़ा सा हिल गया है क्या दिमाग से? इधर ट्रिप लगाने गया तू ए साइड पे गया है ट्रिप लगाने, हम लोग मिट्टू बी का कॉल पे। हाँ तुम लोग तब मिड फाइट कर रहे थे। इधर ही थे जहाँ पे मैं मार किया ना अभी। देखिए ये वाला इधर ही थे तब तक। Their jet is playing hard to get. All right, I'll play. तू बी में खड़ा था, तू बी में क्यों नहीं आया? वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। चलो मेरे भाई आइनेस मत बन, दिमाग लगा लौड़े थोड़ा। बकचोदी ना पे हो गया वो। मैं कहाँ बकचोदी कर रहा हूँ, मैं बकचोदी के मूड में खेलता हूँ क्या तुझे लगता है? बकचोदी के मूड में तो साई भाई खेलते हैं। हाँ देखो कितना थ्रो किए वहाँ पे। Blinded. Time to hunt. That goes there. Last player standing. अरे कार्सन भाई आपके ब्रदर्स आ गए। Still hungry? I'm sure my pets can chase out some game for you. रनर नेम वाले।
किलर पार्टी और साइड पे फिंगर जज होगा, बता रहा हूँ अभी से। हेवन जा रहा हूँ। मैं स्मोक दूं हेवन तो इधर से फ्लैश करो, फ्लैश करो ना। This goes here. Cutting their vision. Satellite. Enemy spotted. Reloading. बैठा है स्मोक के अंदर, स्मोक के अंदर इधर बैठा है। अबे तू Spike down A. Last player standing. क्यों मार रहा है जब मैं बोला स्मोक के अंदर? अरे तू होल्ड कर रहा था ना। अरे तो इसमें भी मैं क्या करूं? मैं स्मैम मारा ताकि वो निकले। बेट किया तू मेरे बाजू में खड़ा होकर फूट दे रहा है उसको कि वो इधर है। मैं फूट ही नहीं दिया। मैं तो एक जगह खड़े होकर मार रहा हूँ। गोली चलाना है स्पीकर्स एडवांटेज मेरे भाई। वो स्विंग करके मारा है मेरे को 2 सेक्टर में, कुछ नहीं कर पाऊंगा उधर। Keep it together. उसका बैंक ये फूट अपना रहना। Hawk out. Sky's out. Hawk out. Last player standing. Spike down A. Dismiss match. Do you want to dance? I'll leave. Reloading. दे रहा है मैंने फ्लैश कोड इधर। अब बॉट मार रहा हूँ। अरे डिमन इधर से फ्लैश करो एक वॉल थ्रू में घुसता है। बोलो फास्ट शॉट है डेविल। कैम डालना ऊपर, कैम डाल के देखना जेट ऑफ कर रहे हैं या नहीं। Hawk out. Cover going out. नहीं किया। अच्छा अंदर से कर। I have retrieved the spike. Hawk out. मेरा ऊपर फील रहा है पहले। रेना मैं आपको फ्लैश मांगा था ना शायद से। There. Here. आपने जहाँ पे भी नहीं किया है, यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे भी। और एक साइफर भी आया। Headshot. साइफर भी इधर आया। मतलब पिक फ्लैश करके पिक करो ना, अमन अकेला पिक कर रहा है। छोड़ दो कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। अरे यार तीन इधर आ गए। दोनों साइड साइफर हेवन था। कैम फ्रॉम बहुत जल्दी पिक कर सकता है अभी तो। ओ भाई बहुत जल्दी हो सकता है। केज डाल रहे हैं। Cage triggered. 30 seconds left. Planted the spike. My ultimate is ready. है कि ये फ्लैश किया तो पिन जाता है। हेवन आउट आया। राफ्टर्स खड़ा है एकदम लेफ्ट साइड राफ्टर्स। Last player standing. डिमन बाबू फ्लैश का ही Ace. क्या If you see one of my creatures, it's a good thing, alright? We'll figure out what they do eventually. लाइन पे फ्लैश चाहिए। अमन का ब्लाइंड से वो ब्लाइंड नहीं हुआ तो मैं घुसा। आपका ब्लाइंड वो छोड़ेगा। Yes, this should do. फायदा होगा, कुत्ता से छुप जाएगा वो एल्बो खेलना। That goes there. Hawk out. Close sky.
फ्लैश दूं मुश्किल है हेवन होल्ड करूं तेज और मिक्स हेवन Listen to this. Heaven walled off. Last player standing. तेरे को हेवन वॉल बोला तो वो हेवन हाँ जब बोला तब मैं फिर Give me a moment. I need to set back up. मेरे पीछे जो 3 लौंडे हैं वो क्या देख रहे थे Reloading. 2 थे मैं नहीं था स्काई यहाँ से यहाँ तक ब्लाइंड करता है साइड से ब्लाइंड करता है वो Yes, this should do. नहीं वहाँ से नहीं लास्ट टाइम यहाँ खड़ा था मैं कैमरा से देखा Yes, this should do. Cover going out. कुत्ता है क्लोज जहाँ पे मार किया तो वहीं पे स्काई खड़ा है फ्लैश अबे तोड़ने तक वो जंप मार दिया फिर से फ्लैश सब खत्म है उसके अभी यूटिल वॉक इन कर रहा हूं मैं इधर तक स्काई सिटी सेज Camera taken out. ब्लाइंड दूं साइफर नाइस मिक्स भी है पिक ले अमन आया सिटी है अरे मार दे यार Spike down A. क्यों पकड़ता है ये स्पेक्टर जब नहीं होता है पता नहीं I have this spike. Last player standing. Still in sight. ब्लाइंड भी नहीं हुआ है पहले तुम चेक कर रहे हो I will take back what is mine. अगर जल्दी ब्लाइंड करना तो नीचे ब्लाइंड डालना हाँ वो हुआ जल्दी होता है मारने के बाद Yes, this should do. Snuff them out. दो राउंड तो मिड और बी गए फिर भी तो मरे अल्ट मार दूं यहाँ पे कुत्ता है नहीं अभी मत मार अरे वॉल्ड ऑफ किया है I know exactly where you are. You will not kill my ally. ये ट्रिपर डिस्ट्रॉयड है 3 मिनट एक नहीं 2 मिनट है 2 मिनट एक है मिक्स और साइफर मिड हाँ और एक सिवर्स Found one. Reloading. Where is everyone hiding? Cage trigger. Time to Cage trigger. Cypher could be on site. One enemy remaining. प्लान करो ना Their confidence begins to crack, and a shift. I can see it. Where's the spike? तेरा नाम ना होगा तो नहीं है हाँ वो मेरे को अल्लाह करो देखना कहाँ गए Time to mobilize my pack. This goes here. Shadows traveling. Heal the bench. I have the spike. Hawk out. Blinded. Come on, heal. Heal up, squad. Grenade. Reloading. Tag zone. Here. इधर होगा स्पैम मारो ना इधर थोड़ा स्पैम मारो अगर
Reloading. Reloading. अमन दौड़ है तेरे पे कर दिया Shadows traveling. Cover going on. Come on, buddy. अरे Reloading. Still in sight. Last player standing. ऊपर नीचे हर तरफ है पता नहीं ये मेन अबे एक बंदा क्यों जाता है घुसता है क्यों है भाई छोटी तो ब्लाइंड दे चुकी कौन है सबसे पहले कौन घुस रहा था भाई कौन घुसा बे मिड उधर कौन घुसा तू यार क्यों यार और इधर कौन घुस रहा कौन रहा था सबसे पहले कौन आ गया था भाई मेरे को बताना अपना ओमेन है ना अरे भाई रुक जा भाई थोड़ा एसएस को फास्ट नहीं घुस पा I got yous, okay? स्काई डॉग क्या है वॉल के ऊपर चढ़ सकता है दो है एक ऊपर है एक साइड है साइड पर है शायद से एक वेंट्स है सेज हेवन तेरे पे जेट होगा यहां पे स्मोक कर एग्जैक्ट मेरा मार्क पे स्मोक कर दो गए हेवन गए I have retrieved the Spike spike. down mid. खड़ा रहे और बेंच होत वैसे की तरह जेट इधर है आपके साथ 80 लोग हैं नाइस मिक्स भी हेवन इधर है नाइस Last player standing. हेवन दोनों हेवन Spike down B. अरे यार इधर से कुछ हेल्प मिल जाता Hawk out. एज पे ओडिन है जेट Blinded. We know what we're doing. Trust each other and we'll be fine. यहाँ पे देता क्या यहाँ बोला तेरे को मैं इधर मार्क किया मैप पे मैं बोला एग्जैक्टली उधर स्मोक कर दो राउंड रुको भाई दो राउंड मैं रैंप से ओपन वो वॉल तोड़ना मिड पे अगर वॉल किया तो अमन Yes, this should do. We will reveal their secrets. They will cover. अरे देना फ्लैश करो ना अरे भाई Reloading. You will not kill my allies. Scout destroyed. फ्लैश तो Reloading. Listen to this. नहीं I got the spike. अरे भाई Heal up, squad. एक है दोनों है ना मल्ट मार के अरे रुक मल्ट मार के घुसा One enemy Jets remaining. grounded. मैड भी सिट Spike planted. Hawk out. Last player standing. सेफ प्लान करना बे बहुत एंगल से अरे नहीं ठीक है ना मैं फ्लैंक से मारा ठीक है ना तो बैठे रहे उसको आने दे आगे फिर स्विंग करता ट्रेड लेना तेरा ट्रेड ही लेता ना Kludge. नहीं वो 1v1 है ना उसको पता है नहीं तेरा पोजीशन Last round in the किल half. कर लेता वो तेरे को देखा नहीं होगा प्रोबेबली Send it out before it's gone. इसीलिए किल कर लेता मारा ठीक है सेफ प्लान बड़ा दिक्कत हो जाएगा बहुत दिक्कत हो जाएगा Embarrass them. वो ब्लाइंड करके हमको आराम से क्लियर कर अगर हम सेफ प्लान के लिए खेल रहे हैं Reloading. Enemy spotted B. मिड पे आप होगा देख के Get out of my way. कुछ जो सकता देख कर इस There. के अंदर बैठ I've got your trail. पुश एमएन के ओ यार लेफ्ट में भेज
पता है कहाँ है जो Spike down exactly B. where you फ्लैश अरे कॉल तो दे कि तू फ्लैश में देगा भाई। एक सेकंड में पीक लेता, दूसरे सेकंड में ऑफ बंद कर देता है। तेरे पीछे है और कहाँ से ब्लाइंड नहीं दोनों मेरे को लगा मेरे से नहीं Switching sides. You say तो पीछे से ब्लाइंड हुआ मालूम चला ना? मेरे को लगा मैं टकला का ऊपर ब्लाइंड सर के ऊपर जरा और लंबा रहता। क्या हो गया डीमन, नींद आ रहा है क्या? This is a nice spot. आज तो 3 बजे तक खेल रहा है। This is a nice spot. क्या बोरिंग, एक ही तो एजेंट खेलते हो। लास्ट मैच तो हम खेले मिक्स। निकाल सकते हैं, अभी निकाल सकते हैं। उनका डबल सेंटियस उसने थोड़ा हार्ड नहीं हुआ फिर तो सिल्वर मार्क हो गया, मंजूर है। Yes, this should do. घुस रहे हेल्प करो उसको। नाइस Enemy spotted A. Hell. Nice one, boys. Spike down A. One enemy remaining. Heaven हो सकता है मेरे सामने। I must wait a moment. Flawless. Spike spotted A. You guys are so much better than my last team. These parasites aren't going to take one step past this place. That goes there. भाई डीमन तो अभी से ओडी निकाल लिया बेंचो। अरे उसका जनरेटर से ठीक है ना, नेटवर्क ठीक है ना। That goes there. मेरे पे दो और एक मैं छोड़ दिया हूँ। Caught one. Put down. एक डीमन मैं नेमन देखता हूँ। मैं आ रहा हूँ। One enemy remaining. Enemy spotted mid. Still in sight. Flawless. Nice. They died underneath our bodies. Will they try the same old tricks? गन पकड़ा मैं, गन पकड़ तेरे पे चढ़ेगा वो बहुत There. That goes there. ट्रॉफी इंस्टेंट स्मोक दे दे। This goes here. नहीं ये वाला तो कुत्ता से पता चल जाएगा शायद से। This goes here. Spike down A. देख कर One enemy remaining. कहाँ था ये? उधर ही है, हील कर रहा है। Make sure to follow my pack in. They'll lead us right to the enemy. क्लाउनहेड कौन है? हाँ शिवम। मेरे को बोलते छी 111 आ रहा है करके। तो बोला मैं तन्मय नहीं यार, फिर बोलते बाहर तो देगा ही तो। तृप्ति ड्रॉप। जी भाई। तृप्ति ये साइड खेलो सर। Yes, this should do. ये वाला बीमन मिड भी है। That goes there. लॉक कर रहा हूँ पहले। They found my wire. Hey, snowman. Spike down mid. Spike is mid. Enemy spotted A. हेवन चढ़ गया।
जेट तुम लोग का वेंट्स आ सकता है जेट्स बता रहा हूँ देख रहा हूँ हम तो मरने वाले हैं Enemy spotted B. Enemy spotted A. बस बैठे रहे शेरिफ है उसको सिर्फ One enemy remaining. क्या ये इससे घूम के आया आप ही तो बोले We move as a unit, okay? Last thing I need is Some hero. आप ही बोले थोड़ा अलग ट्रिप लगाने बेसिक ट्रिप नहीं मैंने वो ट्रिप लगाया ये आप देख रहे हो कि मेन देख रहे हो अलग लगा मतलब मैं ही मर जाऊँ है ना जेट यहाँ था That goes there. 2 सेकंड बाद लेंगे मैं पूरा पीछे तक ले रहा हूँ रुक ना मैं भी देखता हूँ बेंच कैसे लगता है इसका पूरा जनरेशन ब्लैंड होगा अभी 14 पुरुष नहीं वो पहुंचता ही नहीं है बीमेन स्मोक कर एक बीमेन स्मोक कर 14 पुरुष नहीं है अरे रहना स्विंग कर मैं देख रहा हूँ ए मिड नाइस टेक बे मेरा बीमेन घुसेगा वो लोग knocked him. छोड़ कर नहीं निकल रहा है ठीक है वहीं बैठे थे इनकी लड़ाई यूजलेस है मादर चोद बीमेन दो जल्दी आओ I've got your. अरे ये भी शॉट क्या था भाई हेवन देख के स्काई था ये गए ये जाएंगे स्काई जा जा ना आगे जा हाँ प्लांटिंग है मेरे साथ कोई आओ पहले Spike planted. Hawk out. Blinded. Last player standing. अबे रुकना ब्लाइंड हुआ है कहाँ सीधा भाग रहा है नहीं हुआ था अबे कहाँ अबे मैं ब्लाइंड दिया हूँ कहीं भी हो सकता है ना क्या होगा साइड थोड़ी पता है क्या थ्रो है मेरा ना तो इसका एंगल पे आ गया सिटी टाउन क्या कर रहे हो अबे तू थोड़ा सा मैसेज क्लियर करके निकलना कहाँ सीधा भाग रहा है Point. Can I get a drop? अबे पता मैं पीछे रहता था अरे बाबू पता नहीं है बोल के तो करना है क्लियर अरे तुम्हारा जहाँ पे ब्लाइंड फुटा यहाँ हो सकता है हाँ तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता यहाँ क्यों नहीं हो सकता कैसे पता चलेगा मेरा ब्लाइंड यहाँ फूटा है बे ड्रॉप सब होगा Yes, this should do. बात बोलूंगा मैं तुमको भी क्लियर करना चाहिए Yes. साइफर मिड कैंप बीमेन नहीं हाँ मतलब वही थोड़ा और अंदर डालना तो ये स्मोक इधर हेवन एंटर दोनों साइड 80 लग दिया मैंने 80 दे हैव वेल जेट 100 HP होगा One enemy remaining. और लिया बीमेन पे और लिया Enemy spotted B. Hawk out. Shadows traveling. करना स्मोक इन्फो चला जाता है अरे हाँ कर रहा है दौड़ रहा है रोटेट कर रहा है क्या जा मिड आया रुकते का मुंह पे है You will not kill my ally. One enemy remaining. Spike down mid. I know exactly where. 30 seconds left. डैमेज कितना दिया जल्दी बता 70 HP अल्ट मार दे तू ठीक है आराम से टैप Seek them out. Found one. जा Heal up, squad. 10 seconds left. प्लांटिंग Spike planted. दिखा स्पैम के इधर क्लोज पिलर लेफ्ट गया सिटी गया सिटी डिप करो Hawk out. Blinded.
चूतिया हेवन पे बेटा स्मोक दे दे मरा दिमाग Stay alive. I want their life, not yours. भाई मैं मिड में साइफर को 80 मारा हूँ, मिक्स को 140 मारा हूँ। कौन खेल रहा है? में मजा आ रहा है। अरे तो इसीलिए तो तेरे को जाना था मान बोल ओडिन पकड़ा रे, मैं थोड़ा लेट प्लान कर रहा हूँ। हाथ में गन नहीं है मेरा। मैं स्मोक दे रहा हूँ एबी ने सेट दूंगा डिटेक्ट कर। Wow, this is a nice spot. उनका इको है, ठीक है देख। Get out of my way. हाँ इधर है। This goes here. रुक साइड जाना, साइड जा। तोड़ तोड़। जेट को मारेंगे। जेट अंदर क्या, जेट हेवन क्या, जेट हेवन क्या? जेट ये हेवन ना। नाइस वन। रिलोडिंग रिलोडिंग। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। जा। One enemy remaining. अरे लौड़े एक माइक में बोलना मात्र चोट। मैन देख। मेरे मुंह पे ही होगा। Ready. Squash the last bug. हमें पता है, बट कुछ नहीं कर सकते। Don't sit down. We're not done yet. नहीं घुस पाएगा, मैं कह रहा हूँ ना। तुम एक एंगल होल्ड कर, मैं एक एंगल होल्ड करूँ। किसको मारेगा? This is a nice spot. जो मार रहा है जेट मार रहा है। जेट खुद हवा में उड़ के चले गया। This goes here. उसको थोड़ी मारता है। 8-14 हेलो। अरे लाला ट्रिप डाल डाल रहा। अरे ऑफी है उसकी बात नहीं। Yes. बी का साउंड साइफर का। देखा? बीमन स्मोक। हां मेरे पे जल्दी करो लौड़ी। बट इस बार डबल स्विंग करेगा तो देखना पड़ेगा। Last player standing. हाँ? Thrifty. अबे क्या मार? Attackers win. एक सेकंड में हेलो। भाई ये क्या हुआ? अबे तो इतना साले तू मेरे को बता रही हूँ तू ट्रिप डाल के हेवन क्यों खेल रहा है मेरे साथ? साइड खेलना जाके। अरे मैं ये देख रहा था, मैं नहीं देख रहा था। लेकिन वो स्मोक में इसको अंदर बोलता हूँ कि स्मोक अंदर से मारा ना। नहीं जेट वैंडल नहीं जेट वैंडल मारा, बाकी सब लोग शेरिफ। हां स्ट्रेफ किया मेरे पे साला। अरे तेरे को तृप्ति भाई मैं लास्ट राउंड ही बोला कि तू स्मोक अंदर कर, तू सुनता क्यों नहीं है रे बेंचोद? तो दिया ही नहीं है ना। क्या? हां क्या? सॉरी गाइस। क्या बोला मादरजात? मेरे को स्मोक दिया ही नहीं। नहीं दिया है, नहीं दिया है। नहीं तू बोल नहीं दिया, नहीं दिया तो। क्या बोलूं मैं और बोलता मैं तो स्मोक दिया ही नहीं हूं ना। एक ही ओमेन खेल रहा है पूरे लॉबी में। अरे क्या मादरचोद भाई, वो स्मोक के थ्रू वो इतना अंदर दे रहा अपने साइड के, उस स्मोक के साथ ही निकला वो गांडू। अरे वो छोड़ो, ये जो नीचे 2 मैच से झूल रहे हैं कार्सन और RyuK, उनका क्या करें? मैं 2 मैच से झूल रहा हूँ। यस यार थोड़ा आईजीएच जा और अपना आग थोड़ा दिखा क्या रही। सनसेट में तो मेरे नीचे ही हो आईजीएच। अरे वो छोड़ो, अपना साइफर मैन बाबू जो झूल रहा है लौड़ा लास्ट 4-5। अबे नहीं हो रहा है भाई, दिमाग पूरा खत्म हो गया भाई अटैकिंग में। तो क्या वो ठीक है जो RyuK हाँ तुम जो ट्रिप लगाया है 2 मीटर ऊपर, किसके लिए? अरे वो जेट डैश किया करता है ना, तो उसके लिए तो ट्रिप लगा रहे हैं। बाकी 2-4 जन जो बाकी है वो लोग के लिए ट्रिप नहीं लगाएगा तू? उनके लिए तो मैं ट्रिप लगा रहा है। उनके लिए तो मैं मिड ट्रिप डाल रहा हूं, इसीलिए ना तो मरा। इसलिए वो स्मोक दिया चुपचाप अंदर आ गया। इसीलिए मरा, एक्चुअली इसलिए मरा है जो।
अरे वो उसके लिए मारा, मैं ऑफ से देख रहा था, वो ठीक है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसको अंदर देना बोला क्योंकि फिर मेरे को टाइम मिलता है पीक लेने का। वो समझ रहा है, बाबू तेरे को कैम भी तो लगाना चाहिए ना। कैम है। अरे मैं कैम भी देखा, फिर मैं कैम भी मेन ही देखता है मेरा। और मेरे को ये बता, जेट कितना बार बी घुसा? जेट 0 नहीं घुसा है, 3 बार घुसा है भाई। क्या एक बार भी नहीं? एक बार एक डैश किया था तो मैं उसके लिए, हाँ उसके लिए क्या था। एक ना बस, तुम वो एक के लिए ट्रिप लगा रहा है। अरे तो भाई मैं ऑफ कर रहा हूँ भाई, अगर वो आया फटाक से तो मैं ऑफ से स्विंग करने में दिक्कत होगा। फटाक से सोटी मार। हाँ फिर आगे तो बोलना क्या चाहता है? मर जा, मारा तो मारा। हाँ फिर बोलना क्या चाहता है? तो फिर अचानक से, हाँ तो बोलना क्या चाहता है? ट्रिप तो ठीक से लगा, तो एक बंदे के लिए ट्रिप क्यों लगा रहा है? अगर नॉर्मल ट्रिप लगाया, क्या पता कोई और मार सके जो तेरे साथ ऊपर खेल रहा होगा। माय ब्रदर इन क्राइस्ट, यू प्ले योर, आई एम गोना से। नहीं भाई, मैं सेंटिनल ही खेलूंगा, मेरा एम नहीं लग रहा। साइफर में भी गांड लग रही है टीम की, छोड़ दे। नहीं तो अबे नहीं, मैं सेंटिनल ही खेल रहा हूँ भाई, नहीं होगा भाई। यूरो खेल। अरे नहीं होगा भाई, मेरा एम कुछ नहीं लग रहा है। एम नहीं चाहिए तेरा। अरे फिर ये रोएगा ना, फ्लैश नहीं है, ये नहीं है, मेरे को भाई उतना नहीं सुनना किसी का। वो नहीं रोएगा, मैं भी नहीं रोऊंगा। अरे तू रोता ही नहीं है, अबे तू तो रोता ही नहीं है, तू तो लेजिट पॉइंट। अबे नहीं, तू कॉल देता है उसके बाद ये बेंचो गांड के पीछे लग जाता है कि फ्लैश नहीं है, तो सब मेरा ही गलती है। कुछ कह नहीं सकते। सिल्वर है, इसमें भी ब्रॉन्ज लोग बोल रहा हूँ, इसमें भी ब्रॉन्ज लोग है। ग्रीन इज ग्रीन। स्टार्ट करो, रुके किस लिए? 32 कार्सन जब भी कार्सन से आता है ना, स्टार्ट कर ले पहले। मैं क्या किया? अब मेरे गलती नहीं पिन दो Match found. मैं कार्सन का तुम लोग हाथ नहीं धर रहे हो, मार ही दो, गार्ड दिखा दे रहे हो, मार दो। लो साला, कार्सन की गलती है। मतलब बेचारा शांत बैठा हुआ है। सुनो मेरी बात, मेरी बात। ओल्डी शांत बैठा हुआ है। तृप्ति चुपचाप से एक सोवा नहीं क्या, स्मोकर ले ले, मैं ले लूंगा अपना सोवा। अपना यूजुअल कॉम्प खेलते हैं, हारे तो हारे, गार्ड मारा है, ऐसे ही हार रहे हैं। पिछले मैच में तो मन से beauty. I would say let's play double senti. Let's revive my lover. तेरे लवर को लौड़े में रखते हैं हम। लवर को लौड़े। डीमन क्लोव वाले राइमिंग्स मजे आएगा। ए डीमन क्लोव खेल भी आ गए दोनों भी। क्या? RyuK रूल है, तृप्ति सोवा ले। मैं वेलर ठीक नहीं है। नहीं। अरे फ्लैशर नहीं है फिर। छोड़ रेना ले डीमन रेना ले। वेले ले रहा हूँ मैं। अरे वेले दिख नहीं रहा है। हाँ। मरना है हम तो तुम्हारे ट्रेड। यस वैसे ही करो, इसलिए मैं ले रहा हूँ। थोड़ा सा है मेरे को ना स्विच करना। मैं ये उनका वोमेन प्रीमियर चैंपियन। वही तो एक इंपॉर्टेंट राउंड था, उसके बाद हारे गए। क्या भाई हारे क्यों भाई? मैं उस दिन अपना वैलोरेंट पार्टनर को दिया था यूरो में। अरे भाई यूके KG1 में हो क्या? हेलो KG1 ये 2-3 किल मार रहा है, उससे क्लास 3 में भी मारते हो। अबे स्वीट 16 सुना हो तुम? स्वीट 6 है क्या भाई? ये स्वीट 60 है लौड़े भाई। ओल्डी है, ओल्डी स्वीट ओल्डी। भाई कोई यहां से नहीं आया। चेंबर नहीं है ना अपना। अलम्बट डाल रहे क्या? ऑब्वियसली जरा डालूंगा। मेरा तो इधर कंट्रोल स्मोक बुक की साइड स्मोक जल्दी बता। साइड Reloading.
Be right back. Reloading. Spike down A. One enemy remaining. Flawless. Reload. Deadly duo, deadly They should probably reevaluate their approach. मैंने तो 1.5 बंदे मार दिए, एक मिक्स मार दिया और एक 1.5 बंदे मार दिए। मैं वही सोच रहा था क्या बोल रहे हैं। घोड़ा खेल रहे बे। घोड़ा कौन खेल रहा है चेस? 1.5 बंदे मार। अच्छा मेरे पीछे वो बोल रहा है क्या? मेरे को सुनाई नहीं दिया। Next. Cover going out. अबे ये तो उनकी एंट्री डिनाई कर दो, राउंड अप में यहां बैठ रहा। Enemy tagged. रेना मारा, रेना मारा। देख Spike down A. इसका भूत वे। पुश कर रहा क्या कर रहा है? नहीं जा रहा कहीं पे। बाकी एक इधर है, एक अभी भी इधर है। घुस गए क्या? नहीं। एक शॉट है, एक लॉन्ग है। स्मोक इन 4 कहां चाहिए बताना। वेट कर रहे हैं। शॉट देना स्मोक यहां पे। वो फ्लैश तोड़ना प्लीज। अरे बेटा, अरे यार तो क्या ये पकड़ा ना आउटलो? थैंक यू। मरा स्पॉन में होगा वो। मरा बोलता है। वो बंदे देखना मरना। वाह। Gonna fall back here. नहीं है इधर। 30 seconds left. अमन तेरे पे चल। अरे शॉट से क्या? हेलो आप कब मरे? Recalling my box. रेना 140 मारा है उसको। Spike planted. अरे यार डीमन भाई। स्मोक आएगा, मैं यहाँ स्मोक करके टीपी करूंगा। रेना 140 है। Cover going out. Blinding. One enemy remaining. 140 लो। आउटलाउट तेरे भाई का टीपी देखा, तेरे भाई का टीपी देखा। अरे कारसन भाई कान में क्या लौड़ा ले फंस गया था करे? ये हाथ में लौड़ा फंस गया था क्या? आपके वहां से मेरे को कैसे मार रहा है और आपको दिखा नहीं कैसे? वो मैग्नेटिक इफेक्ट है। ऑटोमेटिक मर अरे शर्म वरम क्या? ये दे रहे कायरो। और कुछ ले ऑटोमेटिक। अरे लैंड के ओसामा थोड़ा सा शर्म, ज्यादा नहीं, थोड़ा। नहीं अरे यार हाँ मतलब हैंडल खरीद लिया गलती से। स्पाइक पे बैठा हो कैसे आया फास्ट। Turrets destroyed. Auf Wiedersehen. फ्लैश है, क्लोज लेफ्ट चल रहा है। Reyna. आ रहा रुक, ओमेन रुक जाओ। सोवा 80 Last player standing. मैं तो ये कह रहा हूँ किसी को अगर ठीक ही काम बोला ना अपने कभी आउट देख लेना। कभी आउट में आके 2 बंदे के तो Spike planted. ये बस वही बात हो गई एकदम कि तुम उस पे आके वही तो कह रहा हूँ गाड़ी देने का। नोस्कोप मार बेटा, अच्छा है जा कूद और एक नोस्कोप मार, फिर ट्रैक मार। ओए मार्केट को था। Be right back. तो तुम क्यों जा रहे हैं मिड से? ये तो और एक मादर जात, उसको तो छोड़ ही दो। वो उनके तो एक काम करना, उनके साइड से खेल लेना बेंचो। 4v6 खेल लेते हम। ठीक है सोवा लेके लौड़ा बैकस्टैब करने जा रहे हैं। साइट आ भाई अलग चूते ऐसे खेलते हैं भाई। I'll get that.
बी देख लो Revealing area. मार गया ये मार गया कंट्रोल स्मोक दूं तेरे को अमन एक Enemy सी रोटेट करो कोई सी रोटेट करो जल्दी Cutting their vision. वो तोड़ना दो है बी पे 2 है अबे तुम 4 लोग क्यों उसी मैं ही दिया हूं बट 4 लोग थोड़ी सी खेलोगे Ultimate is ready. स्पाइक ड्रॉप Spike down. C. गराज चढ़ सकता है मन गराज चढ़ सकता है पता यार मैंने 2 किल भी निकाल दिए यार Slowing them down. Doing a thing. अल्ट लिया वो लोग ओ मैंने अल्टी आ गया Scatter. 30 seconds left. साइड चेक नहीं किया Spike planted. एक शॉट साइफर शॉट ओमेन साइड रेना साइफर 70 लो Placing sentry. Last player standing. One down. अबे मैं जब उधर रोटेट करो तो मेरे को ये नहीं बोला मैंने कि 4 लोग रोटेट करो World hurt me. एक लोग भी देखो सोवा तू बी खेल तू बी से हिलेगा नहीं लड़ा मेरे को तू बी से कहीं मेरे को हिलता हुआ नहीं दिखना चाहिए एकदम पहले बता दे रहा हूँ रेना भाई यहाँ पे आ जाओ सेव करो सेव प्लांट होगा उसके बाद ही बी से हिलेगा I need more from us. अबे हम तू तो हुआ है ना सिलोंग मैं जा रहा हूँ आप लोग शॉर्ट पुश कर जाओ कंट्रोल स्मोक तू जल्दी बोल बे अमन म्यूटेड है तू लौड़े ड्रोन तोड़ कुछ नहीं चाहिए ड्रोन भी इन गराज तेरा नंबर डाउन हुआ था 2 सेकंड I know exactly where you are. अरे उसको पुश करने बोले तो गराज जा रहा ओमन गराज इन था ये सिटी स्पॉन नाइस एंटी रेना जेट सोवा भी था शायद रिकॉर्ड दिया ना सोवा नहीं जेट यहां से Spike planted. मिड देखी ओवर द मेन मिड Scanning ahead. Last player standing. लेफ्ट क्लियर करना होता तृप्ति They demand a fight. Who are we to disobey? Reloading. एटी मारा हूं मैं जट को टिक कर देना था उसके ऊपर मार देता तो कंट्रोल इधर खेलना तृप्ति इधर खेल बैक साइड खेल इतना क्लोज मत खेल पहले रिवील ले ले पहले ड्रोन कर ले फिर उसके बाद पीछे आ जाना मेरे को ये डाउट हुआ कि मैं ठीक सुना है गलत सुना इसलिए पीछे चले गए निकलो वहां से सी कंट्रोल स्मोक नहीं चाहिए ना अरे रीस्टार्ट करके आ जाना थोड़ा पीछे रह ब्लाइंड होगा थोड़ा पीछे रह हां उधर ही रह ये लाइन है ब्लाइंड का मेरे सामने Turrets destroyed. Enemy spotted. C. Terminated. गराज मार उसको सोवा One enemy remaining. Spike down. C. गराज था लास्ट Enemy spotted. C. Found them.
That's a dumb way to die. रैंडो प्लेयर है बोलता है। ट्रिप ट्रिगर नहीं हो रहा है, वो यहाँ टिपी मार दे। हाँ टिपी मार रहा है डायरेक्ट। ये लगा रहा। And I need a डायरेक्ट लगा रहा। मेरे को साउंड आया पता है, मेरे को लगा वो साइड टिपी मारा। लगा रहा है इसके लिए डायरेक्ट। मारने नहीं दे रहा ना, अभी मारेगा वो देखो। चलो पिक लो लेना, ठीक है हटना मत। No prisoners. मत कर वेस्ट हो गया। हाँ मैं भी निकल जाऊंगा। Gonna fall back here. अरे यार आ गया, मैं आगे जाके थोड़ा क्लियर करता हूँ। 3-4 तो दिखा ही है। डैश पे ब्लाइंड दूंगा। टीपी मारा। ऊपर जेट आ रहा है। नाइस। Too slow. मैं भी मर गया। ना आप कैसे पीले? टट्टी प्लेयर साला। चुप। स्मोक है मेरे पे, कॉल करना कहाँ से? आवाज इन दैट दे कैन गो है। ये देखो। Stay down. My ult is ready. क्या बेट किया होगा तृप्ति के लिए, मजा आ गया। 30 seconds left. Spike planted. The hunt begins. Short smoke. Hitting the brakes. Last player standing. 135. Look for my shadows, they will hide you. मत खेलो बे गेम और तुम लोग हो गया। आए नहीं है हम। तुम दोनों पहले घुस रहा दोनों ब्रेन शॉट साइड। तुम लोग को अलग से खेलना है तो खेल लो बस। और कुछ कॉल्स नहीं चाहिए तुम लोग से, ना हम लोग। बेंचो छोड़ो भाई, छोड़ो। ठीक है छोड़ो। अरे छोड़ो ना। मेरे को बता तो। मैं ये घुस, तुम लोग मेरे को लगा सब घुस रहे हो, ये तृप्ति घुस रहा था तो मैं कूद गया ऊपर से नीचे। मैप देखना रे मेरे भाई। आया। और ये ब्रह्मांड भर का क्यों हगा, उसका कुछ नहीं। Nowhere to run. 55. Sight in, nice. एक और है। गराज एक। गराज क्रॉस कर देगा। Slowing them down. छोड़ दिया गराज में। रिकॉन ड्रोन नहीं। अरे चोदू है क्या, रिकॉन चिल्ला रहा हूँ मैं। लिंक। One enemy remaining. Spike down B. Unknown. Can be anywhere. 30 seconds left. कहीं से भी आ सकता है। Last player standing. गलत है, रिट्रैक्ट मत करना। रुकी नौरी ढूंढ किसकी? तो मम्मी का गाली दूंगा ना अभी। I can hold an area pretty well myself. मैं चिल्ला रहा हूँ तेरे हाथ में गन है, ड्रोन करके खड़ा है बाहर सुन के मुंह पे। नशे में खेल रहा है क्या चूतिया? मैं कॉल भी दे रहा हूँ तेरे को।
ड्रोन पे बैठ के निकल गया था इसका आत्मा। Get out of my way! ए पे जेट देखिएगा मिड जा Revealing area. फ्लैश छोड़ूंगा मैं, वो फ्लैश करके घुसेगा। Good. One enemy remaining. Spike down A. स्मोक के अंदर आपके सामने 40 लो। आजा 40 का है। साइड डिफॉल्ट। You can finally let go. They don't have a single life worth saving. ये तो इतनी देना तेरा फैंटम। Need a drop. Need a drop. Need a drop. कौन देगा तुम लोगों को हैं? कहाँ से कोई कुछ नहीं बेच सकता है, सब ब्लैक का ही है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ सेविंग करता है क्या हरामी? हामशील लेके गन भी ले सकता है। रेना खेल रहा है। Revealing area. Enemy spotted. रहना है इधर। नहीं अमन सीलों के लिए। नहीं चाहिए। मैं लो हूँ थोड़ा आओ। I know exactly where you are. 148 लो है माधव, 148। Enemy spotted. ठीक है बाहर। साइफर 148 पे फूक मारोगे तो मर जाएगा। साइफर सोवा पी के बाहर देख। मर गया रे सोवा। एक माइक तो पार्टी लीव कर हमको खेलने दे। तू नशे में क्या? देख बी साइड 10 कहां से आया? ए से घुसा है वो। ए से नहीं घुसा है, ए पे तो मैं देख रहा हूँ। अबे टाइमिंग हुआ जब तू सोवा। Spike planted. अरे तब तक वो लोग, मैं मेन खड़ा था भी। तो बी घुसा है फिर इसका मुंह से और। हाँ मैं मेन पे ट्रिक तोड़ के आया हूँ। विनेबल Last player standing. इसी के मुंह से घुसे होंगे बे। स्मोक किया ना इसको पूरा में यहाँ पे लौड़ा, फिर कैसे मारे? फिर यहाँ पे कैसे जेट? Reloading. ऑप्शन नहीं है भाई, मैं ए पे पूरा आगे तक गया हुआ था भाई, हो ही नहीं सकता। अरे उसका ओमेन का स्मोक बाहर तक था ना, वो हाँ से वॉक इन कर गया। वही अबे यार वो साइफर को 148 मारा हूं ना मैं। मेरे को लगा मर गया, मैं टीपी खोल दिया हाथ में। Stealing sight. ए खुले 3 का साउंड है। शॉट की तरफ गांड फटेगी, थोड़ा रुको बे, मेरा वोमेन Bot coming back. Last player standing. Spike planted. बोला और क्या भाई? हाँ तो कॉल दो ना, वोमेन नहीं दिखा है। वोमेन नहीं था। Last round before the switch. एक बंदा मिसिंग है अभी। बैक करो, लास्ट राउंड बैक करो। Show yourself you can. काहे ड्रोन कर रहा है बे, उधर यूटिल वेस्ट कर रहा है तुम अपना।
टीपी क्या दो जेट घुस गया अंदर, जेट और साइफर दोनों घुस साइड। Spike down mid. जेट साइफर सी। Spike is me. मैं उनका स्पॉन बैठा हूँ। हाँ आ सकते कहीं से भी आ सकते। डीमन थोड़ा क्लोज खेलो, स्पॉन। हाँ ठीक है बढ़िया है। Enemy spotted A. One enemy remaining. Line them up! I'm going in! 30 seconds left. Ugh, that sounded nasty. Switching sides. Watch them run when lit by my sonar. Need a drop. क्या तुरतुरे? 10 रुपए दे तुरतुरे। ये सुनो, मैं लॉन्ग रिकॉन कर रहा हूं, शॉर्ट रूम। मैं तो बोलता हूँ ड्रोन मत कर, घुसो फास्ट हो। तो यहाँ पे एक स्लो डाल देना वेले बस। मेरा स्लो नहीं है। साले तो लिया क्या है फिर? ये वो कूदने वाला। Revealing area. साइड के अंदर। Enemy spotted A. Gonna fall back here. जेटा नाइस। Placing swarm grenade. Swarm grenade. चलो। Last player standing. One enemy remaining. I feel the strain. Block it out, Omen. इतना सुनता है तो साला वो जब ड्रोन मना करके रिवील डालने बोला था तब क्यों कर नहीं सुना? रिवील डाल के शॉट के अंदर को रहना है। क्या? I'll find them. I have the spike. Scanning ahead. Found them. Placing Take sentry. flight. Enemy down. ये कौन मारा रे इधर लॉन्ग पे? अबे रोही जाना मदरचोद। Last player standing. 104. One way अच्छी ना? Disappear. One way अच्छी ना? Stay taut as a bowstring. मत तो मूव The करे fight बुदे। demands it. कौन ता उठे कौन उखाड़ दे वो मत तो मूव करे बुदे भाई। मत लेफ्ट दिबा बुदे एटलीस्ट। तू राइट असे मादे तू मूव लेफ्ट दे पर नहीं। भाई अब तो वैंडल कौन सा है? मागा मारिछि मो घंटा उठा को जे बुतु टुटे मोर लाज भी अछि। Need a drop. मु तो जान उठे को मागे। Thank you. साला नशे में खेल रहे, तो नशे में ना सच बोल। नहीं। Revealing area. I have the spike. There they are. Deploying drone. फ्लैश कर रहा हूँ, रेना को फ्लैश कर रहा हूँ, जाओ। ब्लाइंडेड है। Back in a flash. There's that. Die. Swarm grenade. Spike planted. Reloading. Alarm bot out. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. मारा है, जीरो मारा है। अरे सच्ची में 100 है भाई। Nice slow down. One enemy remaining.
रिक्वेस्ट मजाक कर रहा है, क्या कर रहा है? मैं देना ओए रिक्वेस्ट करो ना कार्सन भाई रिक्वेस्ट करो 93 3 गोली Need a drop. ए राइन इंस्पायर देना Thank you. 93 मारा ए इसको ओमेन को बॉल बैक और एक तो रिक्वेस्ट करो झूठ बोलता है कार्सन। और एक तो रिक्वेस्ट करो Need a drop. Thank you. हाँ Scanning ahead. अरे मेरा टीपी रोकती है। Deploying drone. Turret out. सुनो मैं यहाँ ये करूँगा, आओ जल्दी आओ, मैं यहाँ पे टीपी करूँगा। Alarm bot out. अरे उधर दोनों मर गए Last player standing. Spike down A. Reina. Oh. ये लोग कौन मरा है? दो कैसे मर गए Act on my intel. Don't give them time to reposition. अभी ये ड्रोन लेके छाट क्लियर कर रहा है भाई। अरे नहीं ये ड्राइव किया ऊपर से देखा नहीं देखना रे भाई देखा नहीं अरे थोड़ा सा लोड़ा है क्या रे तू थोड़ा सा आर्थ्रोपोडा मादर Get out of my way. I have the spike. जेट शॉट जेट शॉट पुश किया, डैश मार के शॉट पुश किया है। अरे आया था तो बोला तो जेट शॉट बोला ही तो और एक होगा और एक बैक साइड कैरो Placing swap bomb grenade out. might be pushed देख के हां मेरी बात मानोगे ना, अपने स्पॉन चलो और चुपचाप से ए चलो, वॉक करके अपने स्पॉन चलो, गन पकड़ के देख के जेट पुश किया रहेगा, अभी से बोल रहा हूँ, अपना स्पॉन क्लियर करना। जिन पे गन है कायरो आगे जग कायरो और जाओ क्लियर एक बी था एक सी था गैराज है नहीं एक ही स्मोक है, हेवन स्मोक दे रहा हूं। Cover going out. Shadows traveling. hey साला Bomb grenade. खरीद के ला रहे 30 seconds left. फ्लैंक देख रहा हूं। ओदे फ्लैंक वुमेन फ्लैंक आ गया, क्लोज आ गया। ही कैन फ्लैश, ठीक है डीमन ही कैन फ्लैश। Last player standing. Bomb grenade out. सिर नहीं हटाना था, वो तेरी कौन ठीक था। हमारी कौन होता है? हाँ वैसे भी हुए ना रिकॉन, क्रॉसर नहीं हटाते। वही तो नहीं होता। वो तो अब हो गया, अब तो आपका एज के हिसाब से थोड़ा ऊपर जाने में टाइम लग गया। Level heads until we're home, yes? Can I get this? अरे वो लोग भी नहीं तोड़ पाए, आप भी नहीं तोड़ते, छोड़ देते। तो बोलता हूँ कि वो पॉइंट ऑफ टाइम। वहाँ पे वो सबनेट डाला और ये कुछ करके मार दिया। हाँ वो तो है, बट आपका क्रॉसर तो नहीं हिलता ना फिर ऊपर जाने के लिए। सी फास्ट करो जल्दी घुसो। एठी है कि कौन देख लो। Come on guys, we gotta dig in. करो ना रिकॉल Spec drop. Stay with cover. Scanning ahead. Shadows. Placing swap होल्ड कर रहा हूं, रुको साइड इधर Spiderman. I'm going in. Enemy spotted. See. My लेफ्ट और एक है सोवा भी है। नहीं कार्सन रुक गया कार्सन। Spike planted. Last player standing. अरे इसको हेल्प तो करो। तो हेल्प करो भाई। प्लांट कर रहा हूँ ना मैं, प्लांट करते टाइम तक रह जाता तो हो जाता।
Their backs will be towards at least one of us. No prisoners. Turret out. Deploying drone. Up है, up है. Flash. Cutting their vision. अरे Kludge. Gonna fall back here. Spike down. C. Oh my god. Spike carrier is dead. Spike down. C. Last player standing. Back. जो राउंड थ्रो हो गया भाई. Match point. मुंह पे गया ऐसे खड़ा है ना, गोली भी नहीं चलाया है. स्लो पे कैसे गया इधर? नहीं 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 थे. क्या फेंका? Take flight. Enemy marked. Nowhere to run! Our spike's down. Spike down A. भाई मार दे उसे प्लीज. दो सीलिंग. Two और साइफर सीलिंग. एक गराज है. One enemy remaining. मेरे को नहीं पता वो शॉट क्यों नहीं लग रहा है. नहीं ठीक है. बाकी सब कितना अच्छा मारो यहाँ पे. उनको वन टैप से साइफर को उधर. मेरे वो शॉट क्यों नहीं लग रहे. Need a drop. ऑफ लेके इधर उधर नंगर हो रहे हैं. ये साला 25 गोली हक दिया पूरा. 25 मैं वोमन को मारा हूँ इधर. 10 15 हका था. 15 हका. बाय दो. Thank you. छोड़ो भाई, मैं जा रहा हूँ. Revealing area. The hunt begins. मैं कहाँ जा रहा है? Doing a thing. अरे वो इनको निकालो. आया सब. I know exactly. Last player standing. Spike down A. Defenders win. सिंपल से एक कुछ करेंगे. मैं यहाँ से शॉर्ट लाइन दूंगा, वो लोग शॉर्ट घुसेगा, फिर हम लोग लॉन्ग से घुसेंगे साथ में. क्या कर रहे हो? नहीं तो खेलने की इच्छा नहीं है क्या तुम लोग को? मैं तो वेट कर तेरा ब्लाइंड डाला, मैं घुसा. मेरे को हेवन दिखा, मेरे को राइट से मारा. ऐसा क्या खेल रहे हो तुम लोग को? इच्छा नहीं है क्या? बहनचोद एकदम. गन नहीं मिला जाके मर जाऊंगा, ये क्या बात है? कहाँ मर जाऊंगा? अरे गन दिया था मेरे को. कहाँ मर जाऊँ मैं? इन्फो लेके आने साइट में. ऐसे कौन? मैं बस इन्फो लेके ही दबाने. इन्फो घुसले से तू मर जाएगा. 4 एंगल थोड़ी देखेगा साथ में. मैं स्मोक के अंदर डैश किया डायरेक्ट. मर गया ना. फिर भी रिट्रैक्ट मारने में भी टाइम लगता है. ऐसे थोड़ी डैश इन करेगा तू.
टीम के साथ ना डैशिंग दे रहा था कि कोई ट्रेड लेगा तेरा या तू किसी को मार पाएगा, ऐसे अंधा थोड़ी डैशिंग करते हैं। 40 रुपए है और 24 मतलब 400 रुपए घंटा अगर 10 के 10 का रेट होता है। कितना अबे इजी राउंड था बे, साथ में घुसते ना, अगर तू लॉन्ग से अमन के साथ घुसता है, मैं शॉट ब्लाइंड दिया था, रेना शॉट से घुस सकता था इजी। कुछ नहीं है इतना हार्ड कॉम्प, कितना सिंपल कॉम्प है भाई। हम लोग फुक्कड़ का थ्रो कर रहे हैं। दो राउंड हारे तो बेंच उठे, तुम लोग के मन में आता है गेम गांड में रह गेम। मैं स्टार्ट करो स्टार्ट कंटिन्यू जीत सकते हैं हम। लंड स्टार्ट करो, रुक लौड़े स्टार्ट करो। और थ्रो करना है क्या तेरे को बता, जो लास्ट राउंड से थ्रो किया तुम। ऐसे खेला तो खेलो ही मत ना भाई, शांति से सोलो क्यों या डुओ क्यों करते हैं, क्या गांड मारने के लिए 5 मंथ खेल रहा हूँ क्या। बाय बाय रुक लौड़े, बाय बाय। कौन सा तेरे को मादर चो डी रैंक हो जाएगा तो लौड़ा दिमाग खराब हो रहा है तेरा। नहीं और भी है। अब एक शांति से हम लोग अच्छे से क्यों नहीं खेल सकते, साथ में स्विंग क्यों नहीं कर सकते, साथ में एंट्री क्यों नहीं कर सकते, मेरे को बता। हम लोग मैथ में तेरी माँ की चुप रुकती लौड़े, चुपचाप से कल खेलते हैं। डिस्कशन करेंगे ना मादर चो, डिस्कशन करेंगे, नहीं खेल रहे हैं। कल भी ऐसे आके खेलेंगे, कल भी हारेंगे, फिर उससे अच्छा डिस्कशन करो, सुनो शांति से बातचीत करो, फिर खेलेंगे। अरे बीच में अमन और RyuK का जो क्लैश हो जा रहा है ना, वो थोड़ा ट्राई करो इग्नोर करने। वो अगर हम लोग पकड़ के बैठ जाओगे या फिर कोई एक बात नहीं कर रहा है, कोई एक ईगो पे रह रहा है भाई। बात तो मैं हमेशा ही कर रहा हूँ, एक ही बंदा बात नहीं करता, 3 दिन से तो वही हो रहा है। बात रुक, चुप चुप लंड बात किया तुम, लास्ट राउंड क्या बात किया, मैं ड्रोन बन के जा रहा हूँ बस। अरे तो मेरे को एक बात बता, वो जो स्टार्टिंग का पिछला स्प्लिट मैप में भी आधा पूरा मैप में ये राइन चुप बैठ रहा है, इस मैप में भी जो आधा मैप में वो चुप बैठ रहा है, उसको नहीं बोल रहा है तुम कुछ। उसको भी गाली देता हूँ मैं, तो क्या लगता है उसको गाली नहीं देता हूँ भाई। अगर बोलता, ये आधा मैप तो बोलता नहीं है, ये इसका गांड में ईगो लेके के बैठा रहेगा। केजे मेरे भाई केजे क्या बोलेगा। अरे तो नॉर्मल कॉल्स भी देगा ना वो, कुछ भी कॉल नहीं दे रहा है भाई। कॉल वो कंसंट्रेट होके खेल रहा है, समझो। श्योर भाई, तो फिर दूसरों का भी वही समझो कि कंसंट्रेट होकर खेल रहे, फिर कंसंट्रेट होकर थ्रो करने जाता है भाई, ऐसे ड्रोन करके ड्रोन बन के जा रहा हूँ। तो भाई उसमें तो फिर इसने भी तो कवर नहीं दिया ना, जहाँ पे कार्सन ने 4K निकाला, 3K निकाला, ये लॉन्ग पे खड़ा रह गया, ये आया नहीं। हाँ तो उसको मैं बोला नहीं कि तू बोला, तेरा नहीं बोल रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कंसंट्रेट। अगर इतना ही कंसंट्रेट कर रहा है तो फिर वहां पे क्यों नहीं किया कुछ फिर। क्योंकि उसका अंदर से जिगरा है, वो केजे है लोड़े, वो केजे है, वो फ्लैंक ही देखेगा जाके। उसके दिमाग में नहीं आया, हो गई गलती, खत्म बात। उधर मैं उसको बोल दिया, जानबूझ के थ्रो करता है क्या वो। ऐसा तो लौड़ा आज तक नहीं किया, डुएलिस्ट नहीं छोड़ो, कोई भी एजेंट लेके बस भाग गया साइड, ऐसा तो आज तक नहीं किया है वो। तुम तो उसको बोल रहे, वो तो चुपचाप रहता है, खेलता है, जो भी करता है। मुंह खोला के बेंच। ठीक है भाई, मेरी गलती है भाई, मेरी गलती। क्या बोलूं मैं काउंटर तेरे को बस बोला, तू जो मेरे को बात। अरे नहीं, मैं तेरा यहाँ पे, अबे मैं तेरे को गलत बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तेरे को बोल, मेरे को गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन मैं वो बोल रहा हूँ ना, अगर वो भड़केगा तुम भी भड़केगा, मेरे को दोनों का पता है। मैं बोल रहा हूँ दोनों गांड मराओ, थोड़ा ईगो को साइड में रखो। अरे मैं उसको कुछ बोलता ही नहीं हूँ, उसका हमेशा का रहता है कि वो कुछ भी होगा ना सराउंडिंग में उसके अराउंड, तू कार्सन भाई कोई पूछ ले, उसका वो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। वो 3 दिन से मैं वही देख रहा हूँ, वो देख रहा है दूसरा क्या गलत कर रहा है। कभी भी कोई भी राउंड तू वो ये वाला मैप उठा ले, सनसेट वाला मैप उठा ले, कोई मैप उठा ले, कुछ भी होगा वो मरेगा, ही विल पॉइंट आउट कि दूसरा वाला उसको कवर नहीं दिया, दूसरा वाला उसको फ्लैश नहीं दिया, या उसका पोजीशन वो बेटर हो सकता है, वो नहीं देखता वो।
तो इसमें भाई उसको बोलता हूँ कि तू कॉल दे कि आएगा तेरे साथ बंदा। अब ये जो इसी मैप पे बता रहा हूँ शॉर्ट पे तृप्ति को बोल रहा था कि उसको वन वे है, उसको वो मर गया, उसको गाली दे रहा था। तो वो तो उसको बोल सकता है ना वन वे है रुक जा। हम क्या तू जैसे बोलता है कि वन वे रुक जा रहे हो क्या ऐसा कुछ भी तो वो बोल सकता था। नहीं डायरेक्ट वो ब्लेम किया, अरे वन वे है मत जा रहे लौड़े। वो जब मर गया उसके बाद उसको सुना रहे। तो ये तो बेंचो वन टाइप ऑफ ब्लेम गेम ही हुआ ना भाई। अब उसको सेल्फ रियलाइजेशन ये चीज है नहीं। उधर मैं बोलता हूँ क्या है, जब वो या कुछ भी उसे पुश कर रहा है मेरे साथ रहता है, मेरे को पता है क्या करना है, उसको पता है क्या करना है। अब हाँ तो अब नहीं पता वो क्या कोई भी हाँ मतलब कोई भी हो फिर भी, लेकिन यू कांट कंसीडर ना कि एवरीबडी विल बी नोइंग कि तेरा माइंड में क्या चल रहा है। मतलब समझ रहा है उसका माइंड में क्या चल रहा है, सब रीड तो नहीं कर सकते ना। आई एम नॉट सेइंग अबाउट तृप्ति, कार्लसन भाई भी होते तो वही तो सिनर्जी है, वही तो सिनर्जी होता है। वो सिचुएशन क्या हुआ पता है, मैं ना सोवा को स्पेक्टेट कर रहा था, उसके पीछे केजे था। भड़वा मैंने सोवा को बोला कि भाई रुक जा, सामने वन वे स्मोक है मत जा। वो सुना नहीं, मैं बोला ना कीड़ा खाली दांत में नहीं होता है बस। इसके अंदर अरे मैं ये तो एग्जांपल मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसी में उसका मैं तो उसका देखा भी नहीं था पीओवी में बता रहा हूँ मैं। वो अपना रियलाइजेशन लेता ही नहीं, मैं 3 दिन से वही नोटिस कर रहा हूँ। बट वो अपना रियलाइजेशन जहाँ लेगा हाँ उसने जो गलती किया लॉन्ग पे वो चुप हो गया, वो कुछ बोला नहीं। अरे बट ये वाला तो उसका दिख रहा था। नॉर्मली मैं बता रहा हूँ वो हर बार ही जस्ट स्टार्ट्स रैंटिंग अबाउट थिंग्स। मैं उसी चीज में टिल्ट हो रहा हूँ भाई। तू जैसे तू गलती हो रहा है तू बोलता है खत्म है, ही जस्ट स्टार्ट्स रैंटिंग अबाउट थिंग्स until the end of the match। अरे सब इंसान सेम नहीं होता है बेलौड़ा। तुम लोग इतना अच्छा दोस्त है, गेम का भर गेम में गांड मराते हो तुम दोनों। क्या बात कर रहे हो? गेम के अंदर कोऑर्डिनेशन चाहिए रे एक दूसरे। अगर तुम लोग ईगो पे रहोगे तो नहीं हो पाएगा। मैच पूरा थ्रो भाई वो दो दिन मैंने उसको वहां पे हम लोग कितना बोले कि बात कर कार्लसन मैंने बात कर, वो 2 दिन भी उसने वैसे ही करके हटा दिया, ग्रुप से निकल गया। ये तो बेंचोद कैसे होगा भाई, खुद ही ग्रुप से लेफ्ट हो जा रहा है। तो ये सब तो बेंचोद वही हो गया ना कि ईगो पे वही रख रहा है। मैं तो ग्रुप से लेफ्ट नहीं हुआ, मैं तो दिल पे नहीं लिया। बता अब मेरे को कौन ईगो पे ले रहा है, तू खुद बता। माइक खोल रहे लोड़े, तेरे बारे में बात हो रहा है। अभी भी वो बैठा हुआ है म्यूट करके। ले अगर ईगो पे नहीं लिया है तो ईगो ग्रुप से कौन लेफ्ट हुआ? मैं डेली आके बात करना चालू कर, जो दिन गया मैं नेक्स्ट डे आके बात करता हूँ। वो मत सिखा कि मैं 3 दिन लगातार बात ही नहीं किया, मैं आके पहले बात करता हूँ। अरे भाई हाँ तू पहले बात किया, पहले मैच में हम लोग का कुछ हो जाता है उसके बाद तू सेकंड मैच से नहीं करता है। रुक तुम जो कह रहे हैं मैं बात कर ही नहीं रहा। हाँ मैं कर रहा हूँ। श्योर तू कर रहा है। मेरे स्ट्रीम में मैं दिखा दूंगा तेरे को एक बार आके मैं पहले बात करता हूँ, जहाँ मेरे कॉल देना है मैं तेरे। ओके भाई श्योर भाई तू दे रहा है श्योर। अरे मजे मस्ती में खेलो रे। मैं तो मजे मस्ती करने नहीं आता फिर। अरे मजा मस्ती मतलब थोड़ा चिल होकर टेम्परामेंट कूल रख के खेलना होता है। इतना ईगो और इतना ये पर लोगे खेलोगे कोई कुछ नहीं खेल पाएंगे हम लोग। 5 मैन एकदम बेकार हो जा रहा है फालतू का। टेम्परामेंट जितना कूल रहेगा हम लोग उतना फोकस करके खेल पाएंगे। कहोगे एक राउंड उसने बोल दिया ठीक है छोड़ आगे तो बढ़ो। मैं कैसे पौधा कौन था? ये मैच में तो कोई नहीं बोला, लेकिन ये मैच में तो कोई किसी को कुछ नहीं बोला है। नहीं पता, मैं इन जनरल बता रहा हूँ। कोई अगर तुम लोग को कोई कुछ बोल देता है, अरे वो तुम लोग की जिंदगी में कुछ टर्नओवर नहीं। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं लास्ट राउंड एक जन को बाय दिया और RyuK को कोई बाय नहीं दिया, मैं देखा ठीक है किसी पे पैसा नहीं था सब, मैं RyuK को गन दे दिया। अरे मेरे को वहाँ पे गन नहीं चाहिए था तो मैं को फेंक दिया। मैं तू गन बाय मांगा कोई नहीं दिया, मैं तेरा गन दे दिया। तू मेरे को जो वापस करके जो ईगो में तू आगे जाके पुश कर रहा है, वो तेरे को अगर ईगो लगता है बिना ओमेन का ब्लाइंड दे रहे थे तुम जाके मार सकता था। बिना ओमेन का ब्लाइंड का तो सोलो खेल रहा है, उसमें तो हम तेरे को अभी कुछ नहीं बोल रहे। भाई तेरे को मैं 2 राउंड पे दिखा सकता हूँ जहाँ पे मैं वैसे जा रहा हूँ, पहले क्यू मार के फिर ये आ जाना है, ई दबा रहा हूँ। सपोर्ट देना है, मैं तेरे को दे रहा हूँ गन, उससे ज्यादा मेरे पास कुछ है नहीं तुमको देने के लिए। अरे तो मैं तेरे को बोला क्या उस राउंड का कुछ, मैं उस राउंड का कुछ बोला ही तो एंट्री नहीं हो रहा है, इसीलिए तो एंट्री नहीं हो रहा है क्योंकि तू रुक नहीं रहा है। अरे तो मैं तेरे को इसीलिए बोला कि मेरे को ड्यूलिस्ट मत खिलाओ,
मैं तेरे को सेंटिनल में अपने आप को इसीलिए बोल रहा हूँ कि आज मेरा योरू बोला था, तू मेले तो अपने गांड के गुत्ती में लिया है बता। अबे मेरा एम ही नहीं लग रहा तेरे को तो मैं योरू बोला ताकि तू योरू जो भी एजेंट खेले, दिमाग है एजेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं देखा क्या प्रॉब्लम है टीम में, मैं हेल्प कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, वो पूरा गेम में कोई लेना देना है ही नहीं। अरे भाई बहुत लेना देना होता है भाई, अगर ऐसा ही प्रोफेशनल वे में खेलना है कि भाई तो फिर हम लोग कह रहा है 3 दिन तक मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर भी बीच में कॉल्स दिया हूँ जहाँ मेरे को दिखा है। कॉल्स का एक बात है और हम लोग किसी को मैं कॉल दिया हूँ जहाँ मेरे को दिखता है। सुन कॉल्स एक बात है और हम लोग जो बीच में बकचोदी ऐसा करते रहते कुछ भी बात पे, अगर जैसे कार्टन उसके सामने वाले को लिख देता है और एक गांडी मारा है, हम लोग बात करते हैं ना, कुछ भी मजाक मस्ती करते हैं ना, तो अगर जब एक फोर्थ वाला ऑलरेडी नहीं कर रहा ना तो हम बाकी तीनों पे इफेक्ट करते हैं। क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं करो खेलो यार अपना। वही तो मैं तो मेरे सीरियस मूड में हूँ ना, वही तो तेरे को वही रियलाइज नहीं हो रहा है ना, तो वही बात है तेरे को फिर इसमें मेरा क्या लेना देना। श्योर इसमें तुम लोग अगर कुछ चार दिन कुछ हंस रहे हो, एंजॉय करो, ठीक है करो, ठीक है श्योर। मैं तुम लोगों को टोक भी नहीं रहा हूँ, ठीक है भाई, मैं तेरे से एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। चल ठीक है, मैं तेरे से मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। चल ओके, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरी हंसी आएगा मैं तो हंस ही दूंगा। अब मैं माइक पे जोर से हंसू, हल्का सा हंसू, तुमको क्या है? श्योर ठीक है, मैं मेरी गलती भाई, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तू हम लोग के साथ एज ए फ्रेंड खेलेगा। चल ठीक है, खुश। अबे ये क्या बात गांड बोले रहो, किसी को हंसना है किसी को नहीं हंसना है, गांड मरा है। अबे नॉर्मल, अबे सुन नहीं समझा सुन कायरो मैं तेरे को बता रहा हूँ, एजवेल सुन, जब हम लोग नॉर्मली खेलते हैं, नहीं कर सकता मैं, जब नॉर्मली हम लोग खेलते हैं, जब इसका माइंड टिल्टेड नहीं रहता है या ये अपसेट नहीं रहता है, तब कैसे ये नॉर्मली बात करता है। कार्सन भाई यहाँ पे सबसे बड़े हैं, वो बताएंगे। ओके अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो पता चल जाता है, वो हाँ क्लियरली पता चल जाता है कि किसका मूड अपसेट है और क्या है। कार्सन भाई कितना हम लोग से बहुत बाद में मिला हूँ, मैं कुछ बोलूंगा तो छोटा मुंह लगूंगा, छोड़ो मेरी बात है। कुछ वो तुम लोग जान जाओगे, कोई अगर एक इंसान अगर टिल्ट हो जाता है ना, उसके बातों का करने का तरीका ना बहुत अलग हो जाता है। हाँ तो ये बात ये नहीं कि किसी का तुम लोग एक्सपेक्टेशंस मीट कर रहे हो या ये कर रहे हो, वो नहीं है। किसी के मजाक पे तुम हंस रहे हो नहीं हंस रहे हो, वो भी नहीं है। दैट्स वेरी मच सब्जेक्टिव, nobody gives a damn fuck about it. But the thing is, when you get tilted na, when your mind gets fucked, your behavior changes. वो समझो, इसीलिए तो मैं चुपचाप बैठता हूँ, इसीलिए मैं चुपचाप बैठता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरा मुंह खुलेगा मतलब बहुत खराब चीज निकलेगा। बस यही चीज, इसीलिए चुप रहना है। This temperament should change, कर दो ये चेंज। तुम लोग अभी बहुत दे गाली में बहुत छोटे हो, वही प्रॉब्लम का मेरे पास सलूशन है, चुप रहना, चुप रहो। छोड़ो चुप रहा मैं, तो मैं कुछ किया नहीं। 3 दिन इतना इधर उधर का फालतू करके देखो, मैं तो कुछ नहीं बोला, ठीक है कर रहे। आज मेरा मुंह खुल रहा है शुरुआत से, तो मेरा मुंह पूरा चल ही रहा है। अभी चुपचाप बैठता, मैं किसी को कुछ गलती नहीं बोलता, और मैं पोलाइट का मैं तो मुंह भी नहीं खोलता। मेरे को पता मेरा मुंह कैसे चलता, चुपचाप बैठूंगा। छोड़ो भाई, खेलना है तो स्टार्ट करो, वरना जो भी करना है करो। रुक जा नहीं है शायद, और नहीं भाई क्या है, निकल, तेरे को ऑफिस थोड़ी जाना है। फिर नहीं लग रहा था एक लास्ट खेलता, निकल जाएंगे 3 बजे, सो जाएंगे। अरे ये कब हो गया हेलो क्या कब हो गया, मैच कब शुरू हो गया, बातचीत चल रही है, हो गया शुरू। अरे साला अभी दोनों का मूड ऑफ रहेगा। रोटेट कर लो, आ जाओ। नहीं बे, मैं तो नॉर्मली रहता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, मैं तो फिर तुम लोग से नॉर्मली बात करने लग जाता हूँ भाई। मैं बस बता रहा हूँ कि एक इंसान जब 5 में एक इंसान जब ऑलरेडी ऐसा रहेगा, तब क्या ही कर सकते हैं। तू उसको इग्नोर कर। क्यों वही कर रहा हूँ मैं, चल गुस्सा ज्यादा। अबे तो तेरा गुस्सा काहे को है, चुप रहने के लिए गुस्सा है भाई, किस पे गुस्सा है? मेरा बिहेवियर है यार। ठीक है फिर तो वो मेरा बिहेवियर ही है। ठीक है भाई, मेरा खून में है, ठीक है, इसलिए मैं प्रेफर करूँ चुप रहना इज बेटर। तो प्रीमियर खेलो लाला।
दोस्तों के साथ नहीं। प्रीमियर भी तो दोस्तों के साथ ही खेलते हैं साले। अरे मतलब टीम बना के, अगर इतना ही प्रोफेशनली मतलब सीरियस होके ही खेलना है एंड नो मस्ती मजाक, देन आई वुड से भाई मैं 5 मैन खेलता नहीं हूँ। मैं आके 5 मैन खेल रहा हूँ क्योंकि बकचोदी हो रही है। हाँ मैं कभी भी 5 मैं तो छोड़ ही दिया था 5 मैन खेलना क्योंकि बकचोदी हो रही है, इसलिए मैं खेल रहा हूँ। वो छोड़ो, बीजीएम में लाइट इज गोइंग टू लॉन्च इन इंडिया। हाँ अरे ये कहाँ गए? कार्सन कहाँ गया? करंट गया क्या इनका? बीजीएम लाइट पबजी लाइट दोनों आ रहा है। रुको पूछता हूँ इधर चिचा, तेरा फोन के हाथ में रहता है क्या? इतना जल्दी फटाक से मैं फोन पकड़ते पकड़ते मैसेज चली गया इधर। चिचा किधर है? अच्छा एयरटेल। देख चैट में एक बंदा आके लिखता है, वेनम भाई आके लिखता है, आप 5 मैन खेलना वैसे ही छोड़े जैसे वो आपको छोड़कर गई थी। ऐसे तो नहीं छोड़ के गई थी। तोड़ा भाई, जो भी बोला है मस्त तोड़ा है RyuK को। मैं देता 100 रुपए यूपीआई भेजो। वेनम भाई एक तो कोहनी मारेंगे वेनम भाई। गुजरात आके वो क्या अभी क्या बोलते हैं जिससे डांडिया खेलते हैं, गरबा डांडिया। गरबा हाँ डांडिया से मारूंगा आपको। सही से लगा है वो दीवार तोड़ी, लट लट पड़ेगी लट। लहारी कथा जीवन अबे सही से लगा है वो दीवार तोड़ी है कि पार नहीं करेगा। कथा धरनी आगू चला माड़ी चल। कितने सोदे भाई सोल किंग तो कितने सोदे बोलते। हां छोड़ी गला बांडू छोड़ी गला चल मैच फाउंड। अबे वैसा मतलब छोड़ो, अब क्या बोलूं मैं, नहीं बोल रहा। ठीक है मु बोला छी मु मानी जाए मु बोले गला हे गला छोड़ी गला बांडो चल आगू ओल्डी गोटे सत कथा कहबी तू बांटा छोड़ी बोल तो सत्य कथा है कि तुम सब जगह भूली थाओ। ए मां के बाड़ो ना मरो हेलो किछि किछि जगह रे नहीं, सब जगह रे ओ छोड़े गला हेडो आ जा बांडो बांडो पे उड़े दिया हम खेल गांड का इलाज हो सकता है गांडू का। अरे लाला चोदे में तू क्या मादर चोदे में तू चोंची को चल लोड़ी को। अबे देख के भाई तेरे को कॉम्स बैन ना देते। नहीं देगा हम रिपोर्ट मारता रिपोर्ट मारो मार दिया रुक टेक्स्ट अब्यूज कैसे मारे? आप तो लोडिंग स्क्रीन में पहुंचे भी थे, सेटिंग्स खुल गया। गांडी मोरा कथा राइट क्लिक रे गांडू। अबे मैं सोल किंग को कर दिया टेक्स्ट कॉम्स अब्यूज। रुको ले भाई ले तन में किधर गया टैग करता तन में को तेरे अकाउंट गया रे। मुझे मामे के मरने के लिए आपको आपके जैसा हाँ क्या बोलूं? बॉटम ट्रैक गॉट टेक्स्ट कॉम्स गांडी मोरा कथा होता stays hidden from me. अरे Nothing. वाइपर गाड़ी का अरे सामने वाला ये पेट्रोल हेड्स नहीं है भाई। जाओ बैकस्टैप जाओ। ये पेट्रोल हेड्स को क्या बोलूं मैं? ए क्या रे We're finally free to use. अरे अंधा है क्या रे? मैं इधर खड़ा हूँ, सुन तो कह रहा हूँ। तू उधर खड़ा है मान ले। बीजेपी हाँ इधर खड़ा है तू, वो इधर मार रहा है। क्या रे क्या ऐसे कर रहा है? इधर डिमन भाई थोड़ा सा काना से हो क्या? अरे उम्र हो गई है अभी, थोड़ा दूर की दृष्टि कमजोर है समझ यार। ठीक है भाई पूरी पाखरे पिपली पूरी पाखरे क्या लिखा है? पिपली दौड़ी दौड़ी तारा चिपली। अरे मादर धुड़िया इसीलिए वो तरफ छोड़ के गई। धुड़िया बाबा वाला डायलॉग लिख रहा है। किसके ने मॉली डाला? ओए इधर 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 एक सेकंड अमन है।
घुस गए Tripwire destroyed. जेट साइड Spike down mid. मेन गया मेरे पे वापस रोटेट कर रहा है छोड़ा कंफर्ट था मैंने तो यही सही जेट साइड था ना। हाँ चले गया वापस चले गया वाइपर मिड से एक है लो मेरे को वेट छोड़ो क्या लाइन अप Right here. साहब है भाई कहां गिरा अभी वो ट्री के पास गिरता है। Spike Camera planted. taken out. इधर बॉक्सेस Last player standing. RyuK आना थोड़ा नीचे से एक समोसा एक चाय थोड़ा मालिश करने के लिए वो जो तृप्ति लौड़े की ऑलिव ऑयल सुन ले Need a drop. जब कोई बंदा फाइट कर रहा है ना उसके मुंह पे नहीं जाते हैं लौड़े। मैं नहीं जा रहा था वो मारा मैं स्विंग करने के लिए गया मेरे को मारा फिर मैं फाइट कर रहा हूं ना उससे वाला से दे हां चल मैं आ गया ऐसा हरकत कर रहे हैं बे। मैंने बोला तो था कीड़ा थोड़ी बोला देख सारे पूरा राउंड RyuK की वजह से थ्रो ट्रू कोई 100 सुपर चैट में कर रहा इमीडिएट Spike planted. अरे Last player standing. Careful now. कोई ना गन राउंड है अभी बाय करते हैं मारते हैं Remember, wipe the prints from your guns. It's just good crime scene etiquette. कार वाइपर से मार रहा है That goes there. That goes there. तृप्ति ऐसे गांड That goes there. अबे एनजी वो जेट का डैश मार के गया बी पे जेट एक डार्ट Spike down B. Trick shots. मेरे मुंह पे डार्ट। One enemy remaining. 105 Found them. कौन तृप्त 8 खेळ ना तर तुमचा आवाज असा बघ मैं एमएन आस्तून देना नहीं एकदम जेंट्री सेंटिनल एक्सक्यूज मी वेनम भाई अभी कौन निकाला बाय देना साई भाई वैंडल पे Need a drop. ये बाय दे इसको Thank you. This goes here. शील्ड कौन पलेगा This goes here. This goes here. मिड रहता है हमें Careful now. The ultimate is ready. देख रहा Welcome to my world. Tag camera taken out. Spike अरे planted. कारचन भाई उसको तो मारो Careful now. स्विच बॉटम फ्रैग स्विच aku पर मेरे को One enemy remaining. वाइपर स्विच रे स्विच के पास अंदर जा सकता है डिफ कर Blinding. Scanning ahead. हां बैठ नाइस वन रोमन नाइस गुड रन देख क्लिप निकला भी नहीं आप इसको इंस्टा पर डाल फेमस हो जाएगा नहीं वाला
नीचे ये वाला नीचे ये वाला लिखना जो पूरी पाखरे पिप्पिली पूरी पाखरे येला এই সব লেখি পকে দাও তারপর পুরি লোক করে তড়া আসি তোর চিপিবে না বলো তুই Yes, this should do. At least they kept it interesting. hey re 0 to 1 Wow, this is a nice spot. मजा आया मेरा ओमेन हेवन क्यों खेल रहा है लोड़ा This goes here. ट्री जा रहे मिनट कभी फुल पुश है नाइस फ्लैश One enemy remaining. My ultimate is ready. Reloading. One bullet and a tree. मर जाएगा मत कर तृप्ति को वेट कर रहा है एक सेकंड ये मार्केट ये RyuK क्या लंड जैसा ट्रिप लगाया है बे क्या रुक स्पॉन मत मारो आराम से होल्ड करना स्पाइक ले गया बी साइड रुक जा 30 seconds left. Hey, main. अमन मीटर है लोड़े मीटर White. ए RyuK ये जो ट्रिप दिया है यहाँ पे हाँ Stay on the trail. स्काई का कुत्ता के लिए क्यों क्या अरे वो ट्रिप ठीक है रे बट जब तुम दोनों में डाल रहे हो ना तो ट्रिप को निकाल के इधर लगा मेरी बात तो सुनो ये जो ट्रिप यहाँ पे दिया है ना वाइपर जंप करके आया मेरे को आवाज आया जंप वही कर ही नहीं सकता इसको भैया अच्छा रुको मैं थोड़ा और ऊपर लगाता हूँ Wow, this is a nice spot. अगर जंप अरे वो साइड से भी आ सकता है I will find you. नहीं वाइपर जंप करके आया मेरे को आवाज Wow, this is a nice spot. समझ रहे हो अच्छा तो मैं थोड़ा ऊपर लगा दिया इसमें हां थोड़ा फंसना चाहिए तोड़ेगा तब ना एनिमी टैग्ड जेट ऊपर है लड़ा तृप्ति जो एंगल से खेल रहा है इसका लड़चट से मारूंगा अरे बस यही नहीं करना था अरे यार बस यही नहीं करना था क्या करूं मैं वहां पे मेरी गलती सामने Down B. Last player standing. मेरा लंड का वाला एक पिज्जा बैठा है बहनचोद Spike planted. मतलब मैंने ये कौन पागल हो गया यार ठीक से बोलो अबे यार 120 सही छोड़ा यार तो देख के बोल रहा सबको लेने के लिए बोल रहे थे अबे तेरे सामने तो भी आ जा अबे डिफेंस में 7 राउंड निकालने हैं भाई और रेस को चला जाए टूट जाओगे अपने अटैक में पता है मैं मेरे को पिक नहीं मिला मैं थोड़ा पोजीशन चेंज कर रहा हूं I find them. I kill them. Simple as that. फैंटम दरचे फॅन्टम लोन में भाई काउंटर पसे दे से टेलीफोन को क्या हेलो सब दरचो Yes, this should do. आड़ा फॅन्टम दरचो ओडिन नु है ओसी गारो जी सेट ओसी इतने गारे रे इच्छा दी थोड़ा पेन नहीं गारो नु कांथरे Yalla, Sheena. That goes there. बी साउंड इस बार भी नहीं तोड़ पाया रे देख के अरे कोई हेल्प कर देना भाई पहले ही मर गए Spike planted. Welcome to my world. इसका वाइपर का मादर जात को कष्ट मिल रहा है एक मेन है एक स्टेयर्स है जेट
Not ready yet. जाओ जाओ आगे जा रहे हैं बात कर रहे थे रमन रुक एक सेकंड लैंड का टाइम हो गया Last player standing. Watch your eyes! पूरी टीम मर गए If we और try फिनिक्स something, वहाँ लाइनअप टेस्ट I'll कर see. रहा है। लाइनअप कौन सा है, कहाँ पे, सेव राउंड है ना मैं क्यों कहाँ क्या कर रहा था, मैं देखा नहीं था। अच्छा कर रहा था। रुकी लौड़े फ्री खेल रहे हैं सेंटी के साइड में 3 लोग मार That goes there. वो मिड पे भी ट्रैप डाल रहे हैं तो घुस कैसे रे Ah, this is a nice spot. That goes there. उधर खेल साउंड आएगा तो बोलना अल्ट करूंगा। अरे उधर खेल कॉल भी 80 वाइपर 80 हुआ दो लोग 80 वाइपर मर गया तो जेट मिक्स भी हील हो गए मिक्स हील कर दिया। हां Revealing area. रुक स्पैम खा जाएगा। There they are. Reloading. खेल कहां साइड छोड़ के किधर जा रहा है? हां ठीक है Camera taken out. छोड़ दिया कौन सा कर रहे हैं रोटेट? हां 3 हां ठीक है रहना आप रहो, मैं जा रहा हूँ। वीमेंस होगा खेलो ना उधर तो बॉल करते हो है एमएन Listen to this. राइटेड हूं सोवा वापस गया आ जाओ Multiple enemies. 80 One enemy remaining. सोवा आएगा 30 seconds left. Spike down A. सोवा बहुत बस पीछे मैं ना था मर जाऊं नहीं सोवा बहुत पीछे था साला इतना पीछे Cage trigger. There can only be one hero. इधर गया 20 से बहुत लेट गया, वो होल्ड करा कि सोचा कि रेना की We गांड are मारेगा, strong because we are लेकिन really रेना strong. ने दिया ही नहीं। I need this. डिनाइल पे था, नो मींस नो। उसको बाय 10% कितने गिरे करने के लिए पीछे देख Ah, this is a nice spot. ऑब्वियस है ना तृप्ति वो लोग नहीं करेगा ना एंगल। This goes here. देखा ठीक है जेट उनका ऐसे पीछे देखा This goes here. लोग वही रास्ता से वही पीछे देखते हैं Get out of my way! भी है और दो को टैग 80 Copper. Fire in the hole! Spike down ए, mid. पीछे से आ रहा है वो होल्ड करके। बाइक लेके इधर रखा है भाई। मैं ना आया। One enemy remaining. ए 80 मिड पिज्जा बैठेगा। अरे वो मेरे को देख लिया भाई, मैं क्या करूँ और? If one link Need a drop. the rest will follow. उस गरीब को बाय दे दो। अरे ठीक है भाई झूलो कार्सन झूलो। Ah, this is a nice spot. सुनो कार्सन भाई, आप उधर खेलो, साइड पे इधर जो खेल रहे थे ना, ये वाला। Thank you. Now, where this goes here. क्या लगा 3 हाँ बस वहाँ पे वो बूमबॉट तोड़ देना। That goes there. एवन फास्ट स्मोक। नीचे दिया फिर हील हो रहा है, साला शॉक डॉट मार रहा हूँ, हील हो जा रहा है। Nowhere to run. One enemy remaining. Spike down A. इधर है हमारे मुंह पे। नहीं
धीमन ये जो आप भाग रहे हो ना, मैंने आपके सामने मेरी गांड मार के मत करो प्लीज, बहुत इरिटेटिंग है। मैं क्या किया? रुक, साइड चले जा, साइड में स्पाइक। मैं क्या किया? जो ब्लाइंड देके मेरे आंख से सामने से भागे वो मारा है मेरे को पता है। मैं तेरे बाद में तेरे 40 लो में किया और कुछ किया? 0 मैंने 40 दिया है। तृप्ति को सेम गाली दिया मैं इसी के लिए कि मेरे आंख के सामने सुन। अल्ट मार दूं? ना। 30 seconds left. Okay, time for a break. किल के लिए इतना भूखा मत बनो यार कि हम लोग को तेरे हमारे आगे आगे से स्विंग नहीं किया। स्विंग किया हुआ था मैंने, ब्लाइंड देके स्विंग किया तुम्हारे। एग्जैक्टली माय पॉइंट। स्विंग किया वो मेरे आगे से। नहीं, मैं जिंदा था। That goes there. सेम गाली दिया था मैं तुझको फर्स्ट राउंड ही। रुक, ड्रॉप दे। This goes here. ए जाओ साइड जाओ, ऐसे खेलो। That goes there. ए हमारी तो जाओ तो थोड़ी आएगी। कौन काम है? फिर आ रहा दो है अपने पे। नाइस वन। One enemy remaining. टैग में देखो। हाँ डिवान। क्या? अगर यहाँ पे भी होता ना। Last round in the half. Save nothing. This goes here. 93 खाया। और मिक्स 2 खाया मेरा मॉली से। 54 मिक्स को का ये केडी में मैं ऐसे क्या देख रहा हूं? 6-10-3। अब देखो आपके लिए, आप सिर्फ ना आपके लिए ट्रिप लगाया हो, ठीक है? तो ना मेरे को लाइनअप करने दे नहीं रहा है। This goes here. आ ही नहीं रहा है। ये हो सकता है प्रॉब्लम। अरे ऐसा नहीं, यहाँ पे खड़े रहने का ना था। यहाँ पे रहो, खड़े रह के जाओ। जैसे ट्रिप पे फंसेगा निकल के मारो। ट्रिप का पॉइंट नहीं है। समझ। My eyes are down. तो चूतिया है बेरू। मैं क्यों कॉल दिया बीमिंग्स को? अरे अपने तू मिड क्यों छोड़ दिया रे लंडचट तृप्ति? मिड में था। चूतिया अल्ट मार के बोट घुसा है। वाह, मैं यहाँ चूतिया खड़ा हूँ। Shadows traveling. ट्री देखना। अब तो कोई भी घुसा नहीं है। आया। किस पे आ रहे हैं? Careful now. एसआईटी मिड क्लियर करना पड़ेगा। अंडर 11 रेस। Spike planted. क्या मैच हो? Bullseye. My ult is ready. Going up. Watch your eyes. Last player standing. हो गया। मैं उसको कॉल क्यों Switching sides. मुक्का तुम्हारा ड्राइव सुन कर रहा है देखो। ना बैड। तुम्हारा दोनों ट्रिप जिंदा है कि यहाँ पे है किधर है? आने तो दे। ये क्या बोला? मो खराब। एक वाइपर से कैसे पी रहे हो तुम हर बार? क्या बोलो ये डीमन वन को? मैं वो वेट किया, पूरा वेट। Reloading. ऑब्वियस है ना, तू लंडचट तू क्यों अल्ट मार रहा है मादरचोद? That goes there. ये रैंडम यूक यूज करता है। Deep breath. मैं तो खड़ा हूँ सिटी में बी पे, क्यों अल्ट मारेगा तू? Revealing area. I have dropped the tripwire destroyed. That goes there.
रुक जा रहा ना। सुबह स्पाइक है। मैं वॉल कर दूंगा यहाँ से यहाँ। घुसना है तो बोलो। रुक मेरा रिकॉन आने दे, रुक मेरा रिकॉन आने दे 20 सेकंड। अबे दिखा ही नहीं रहना चुप रहे। छोटा एंगल देख रहा हूँ बस। क्लिक करूँ? एकदम नॉइस कट करो। अरे चुप रहना लौड़े, मांगेंगे तेरे को उसमें। वाओ सही नहीं है बात मादरचोद। मैं यहाँ रिकॉन दूंगा, ठीक है? साइड के ऊपर दूंगा, ये होगा रिकॉन, ये होगा रिकॉन। क्लोज रिकॉन। तू माउस घुमाया। बेटर है स्मोक में बेटर है। अरे अगर वुमन को मार देता है। रेडी, स्मोक कर स्मोक कर स्मोक कर स्मोक कर। Going up. Found them. Put your ass. Sorry, bro. Spike down B. Stairs है। One enemy remaining. ये mid market. Market. हेडिंग का। Sorry, Jet. क्या रे मारने पड़ता तो पॉकेट से क्या निकाल दे रहा है? चोरी। तू साला डॉक्टर स्ट्रेंज है क्या? तृप्ति वो वॉल में ना सब बड़ा टीपे मार दे। अरे हीरो देखो धक्के 8 टका। स्विच टा बंद करे पेन में 8 टका। ए ना ना हां तू टीपेटा मार दे। तू टीपेटा मारले से ना देखा हीरो बाहर करी भी कैमरा देखा। एबे करने है यार तो मैंने करे को देबे नहीं। Revealing area. नहीं आ सकते। Let me drone. Deploying drone. Right here. Enemy mark. Reloading. तीन सोवर है भाई। देख के मिड देख। मिड बॉटम स्मोक कर दियो बच लगा। कर। हील हुआ बोलो। ये भी जल्दी आ RyuK जल्दी आ दौड़ के। एक जो एक बंदा है। रेना को देख रे बाबा। जा रहा हूं। Careful now. ए मैं बीमन पुश। Reloading. Spike down A. मेरे बुलडॉग उड़ा लो। Reloading. Spike planted. एनीवे भाई वेलकम टू स्ट्रीम। क्या हाल है? कैसे हो? सेरिफ उठाया क्या? के सामने Shadows traveling. Scanning ahead. One enemy remaining. Enemy spotted. Reloading. अबे तृप्ति सुनना तृप्ति बाबा देख वो निकल के तो स्मोक में ही मारेगा, स्मोक से निकल के ही मारेगा। तृप्ति तेरे को हाँ सुन इधर देख इधर आ तृप्ति इधर आ। मैं बोल रहा हूँ देख अगर मान ले तेरा ये डोर तक स्मोक है तो वो डोर से निकल के मारेगा। सुनो मिट्टू है, चलो तेरा एम यहाँ पे क्यों है? थोड़ा साइड में लगा ना। RyuK में आ जाए मिड बॉटम स्मोक कर। This is a nice spot. ठीक है पास। Revealing area. Found them. ब्लाइंड करने दो। हां मेरे को ब्लाइंड घुसना है लौड़े, पीछे देख रहे हैं। Carrier is dead. Spike down A. Stealing sight. Buried. Enemy down. Last player standing. अच्छा On target. 3-1-3 बाइक में इधर पे तृप्ति लाइन टा परिसर है मु पसी कोण जाउछंती टिपिटा काय मारजो पसतो तो नॉर्मल दौड़े के पस ना टिपिटा मारे तो मत कहो ब्लाइंड टा करे। अरे विंडो वाली जगह में राउंड में हां बॉल है उसका मॉली है। यस वेनम भाई ट्रू। Reloading. क्या बोल नॉर्थ को ओए में नो
Don't hold back. पुश करने बोला कि इनको पुश करने बोला लड़ा रूम क्या है? That goes there. Revealing area. Inside. Take flight. I can ult. Ult मारू? रोटेशन है अबे उनका मिड से पूरा। हाँ ठीक है 40 सेकंड रुक, तू अल्ट मारना, मैं रिकॉन दूंगा हेवन, फिर जाएंगे अपन। रुक मिड पे जितना आवाज कर सकता कर जा। इतना हिल मत रुक बोल क्या है ना। फिनिक्स है, मेरे को लगा तू केजे है। वो फिनिक्स बोल रहा हूं ना। I must wait a moment. तृप्ति दोनों स्मोक है? अरे ये स्मोक मत, अरे यार ये मना करता है। कर ब्लाइंड दे ये। और जाने दो। रिकॉन दो। मेरा खत्म हो रेडी, गया। चलो। राइट साइड। Neutralized. 30 seconds left. Almost is ready. One down. तो वाइपर स्पैम में कैसे ले रहा है? Last player standing. One enemy remaining. Spike down A. 3 गोली। टाइम नहीं है मेरे भाई। 10 seconds left. आरडिस चेक कर आरडिस। कैसे मारा वाइपर? If you're not a good shot today, don't worry. There are other ways to be useful. करना मेरे लिए। अच्छा तू जिंदा था क्या? अच्छा हाँ। तो वाइपर इतना कैसे मारा है? अबे वो लोग सुनो 5 का 5 लोग एक गेम पार्लर में खेल रहे हैं, एक कोई बंदा है जो हाई लेवल का है उनको बूस्ट कर रहा है। तुम दोनों को कोलैट में लिया, मेरे को स्पैम में मारा हुआ। That goes there. ट्राई स्विंग करूं? कर रहा हूं। ऐसे ही घुसेंगे। Last player standing. City needs me. I can't be away for long. मैं लर्क कर रहा हूँ, तुम लोग घुसो। बी डिटेक्ट मत करो। एक काम करो ना, इको करो। ए पे प्रेजेंस दिखाओ ना, फिर भी आगे आएगा। एडी डाटा से लुचिक पूरा। ये स्मोक कर। Forget the spike. बी पे चुप करो, मैं ए पे रिकॉन ड्रोन सब करता हूं। Cutting their vision. और बता रहे ना। Reloading. पुश कर रहा है। वाइपर ट्री। एनिमी स्पॉटेड मी। अभी मैं ना रुकती 104 देने रे स्पेक्टर। मु आसी भी नहीं मत आगे दिसी। मेरे को रेज मिक्स कर वाइपर। मार दिया। सोवा लो। सोवा साइड गया। क्लोज आएगा रेज देख के। Finished. My ult ready. रेज और वाइपर मिड टेप पे हम लोग घुस सकते हैं। हां सिटी घुस जाओ। Going up. स्पैम में मारा है। Watch your eyes. Spike planted. वाइपर फ्लैंक। Last player standing. इजी क्लच। स्पैम दे। कोई नहीं को था। स्पैम में खेल रहे हैं। तो मत आसे और तापर स्विंग करियो ना। मु जदी एठी मु एठी के आसेले सिना तो एठू भारी भी। सेम
Remember, wipe the prints from your guns. It's just good crime scene. रिकॉनट मार रहा हूँ साइड क्लोज ड्रोन नहीं कर पाऊंगा रिकॉनट मारूंगा तो रेज रहता है देख के रेजर हाउ जो भी अच्छी था बट स्टॉप करके कर This is a nice spot. इधर तक खाली स्टॉप करो तेरा मन देना है तो दे Reloading. Welcome to my world. रेजर कॉल देगा तब तो हमको समझ आएगी कि तूने कहां कॉल दे दिया हो Revealing area. That goes there. I am the hunter. Cover going out. Enemy spotted mid. Our spike carrier is killed. Spike down B. किसका कर रहे हो बे? वो स्टन दीवार पे दिया है तो ये लोग नहीं तोड़ पाए उनका क्यों है यहाँ पे इतना देर मेरे को समझा नहीं तो साइड से वो लोग तो साइड से ओवर रेस मिक्स मार्केट मिड से घुसो साइड डायरेक्ट नहीं हो रहा Last player standing. Spawn. ये क्लियर होना चाहिए तीन जन ऑलरेडी सेट है अरे मदर चोद तीन है मत घुसो मत घुसो चार जन है छोड़ उसको ओके इधर One enemy remaining. Nice one. प्यारा डेडली डोरे रहना तोरो मोरा गोटे को मार ली हूँ हाँ आजा हाँ तू भी आजा रे पंखे पकड़ने वाले जनते सब न था मैं एटलीस्ट 2 किल तो करता हूँ किल मार के तो नहीं बचता भाई मैं किया डेडली डोरे मैं भी एक किल किया भाई बिट्टू बी चलो बिट्टू ए भी नहीं होगा है था कि नहीं इफेक्टिव किल था कि नहीं जेट को नहीं मारता तो जेट मार कर बी में नहीं जम जाओ मैं जा रहा हूँ ये लेके जाओ I have dropped the spike. This goes here. Why destroyed? Operator. Our spike carrier is killed. Spike down mid. Get out of my way. साइड मेरा बंदा साइड नहीं आया अभी तक One dead. भाई मेरा यहाँ पे फाइट चल रहा था मेरा और इसका I feel the strain. Block it out, homie. थोड़े तो साइफर है प्लीज ए मिन ट्रिप कर और बी मिन ट्रिप कर प्लीज भाग कर दोनों जगह ट्रिप कर जा तुम करके जा थोड़ा रुक अभी मेरे को ट्रेनिंग करना पड़ेगा रुको यहाँ पे ओह भाई वेरी योगा स्टिक गेम दौड़ना पड़ रहा है बे चैट बहुत सबो पुश करचंती मैंने सैंडविच करचंती Scanning ahead. ऑफ डाउन है देख के मैं डाउन है पता था बाप रे ये स्मोक क्या टाइमिंग में दिया है ऑफ वो यहाँ बैठ रहा है अब राइट साइड बैठा था ना एक काम करो मैं उसी को देख रहा था साला कूद के मारा ऊपर देख रहा तू लॉन्ग से आजा दो है मैं श्योर दो है नहीं रे बाबा रुकना Spike down mid. क्या Last player standing. ये मैं नहीं रस करे क्या कर दो चल वाइपर भी आ गया
वाइपर बैठो उनका वाइपर ही खाली मार रहा है। स्किल मार चुका है। New fight, new tactics, keep it fresh, yeah? वो मिला में बी में पुश करता हूं। हाँ नहीं हाँ सुबह हमेशा बीमेन पुश करता है। पुश करता है। हम जहाँ भी जाए तो सुबह पुश कर ही रहा है। ये आजा प्लीज, ये आजा, ये रश कर रहे हैं हम। रश नहीं हो पाएगा। मैं और ले रहा हूँ, मेरे को ये वाइपर का मुश्किल होगा थोड़ा। मैं राइट साइड मॉली करूंगा। वाइपर का वॉल कुछ नहीं ड्रॉप डाल। कराओ। सुन मिड स्मोक करे। Let me show you how the boss does it. This goes here. मेरे को और लेना है तो मैं एड कर रहा हूँ। Shadows traveling. Last player standing. What the fuck? Defeated. थोड़ा वो ड्रोन भी कर रहा है क्या? माँ से चूत है। तेरे को आज ढूंढ के मारेगा, वाइपर का बदला लेगा। कहाँ मारा, कहाँ पे तो ये तो बता। कहाँ से दूसरा? राइट तो नहीं आना चाहिए। मिड और साइट होना चाहिए। जैसे नीचे भाग के आना चाहिए। अबे वेट कहाँ किया भाई? मैंने किसी को वेट नहीं किया। मैं ओमन के पैराना में आया था। 30 seconds left. क्या चार कैसे मारा बे वो? तो है Match स्मोक point. कर रहा, मार रहा है। You want me serious? मैं तो और लेने भी नहीं मिला। ओए डिमन वन बॉटम पे आ गए लो। कहाँ झूल रहे हो? ओए झूल रहा है। डिमन वन डिमन टू दोनों झूल रहे हैं। फ्लैश नहीं है क्या चूक रहे हो? क्या सेव कर रहे हो? लास्ट Take flight. Enemy tag. Careful now. ऊपर गया हेवन रे। समझ जाओ, तीनों इधर है, तीनों इधर। हाँ वाइपर हेवन है। ओमेन देख के रेज हेवन था, वाइपर सिटी ट्री था। ओमेन अपना बीमेन पे था। एक आ रहा है। यहाँ कैसे आया? No more. वाइपर should be spawn. Cover going out. क्या? ये आ गया, स्पॉन साउंड आया। स्मोक आउट देखो, एक बंदा स्मोक आउट देखो। ए मार्केट। Watch your eyes. One enemy remaining. Here. I got it. सुनो मेरी बात सुनो। Yo, better keep up. ठीक है, वो एमएन अल्ट पे मारेंगे। चलो ये ओडिन ले एमएन। रुक, तू सेम कर रहे हो। सुबह को बाय दे मेरे को। I need this. My thanks. अमन तू भी बीच सुबह को मार क्या? Ah, this is a nice spot. Winners will reveal their secrets. Welcome to my world. आवाज नहीं। लेफ्ट साइड गया। स्मोक के बाहर है। आज स्मोक फ्लैश करो। स्पाइक। Listen to this. पीछे आ जाओ। अच्छा नहीं किया उस पे। कहाँ से मारा आपको डिमन? ट्री मारा वो। रुक, मैं अल्ट कर रहा हूँ, रुक। I have retrieved the spike. जल्दी करना। Give me a corpse. Give me a corpse. Where is everyone hiding?
रोटेट करना है। साउंड मत दे। अरे देख लिया यार वो मेरे को किधर किधर। रुक मैं ही कर रहा हूं। ये जा अमन तेरे को 30 seconds left. मारना पड़ेगा, टाइम नहीं है। रुक चले जा, रुक जा, कोई नहीं होगा। रेस मिलेगा तेरे को, बस जल्दी जा। लैंड कर दूं? Last player standing. प्लान कर 10 seconds left. मिक्स आएगा। Planted the spike. Nowhere to run! This goes here. No more charges left. बंद हो रहा क्या देखो? नहीं। कुछ मत कर। खेल तो रहा है, सही खेल रहा है। स्मोक है उस पे। God, my camera is destroyed. Cage trigger. Renegade, Perisco. I don't want to drive on Kinko. I don't want to hold up. Defenders win. हो गया बस बढ़िया। अरे उसको रिपोर्ट करो रे। मैनिपुलेटिंग द रैंक्स। नहीं मॉडल 1 तो है, मॉडल 1 तो खेला है वो, उसको लेके आया था। बट ये क्या पुश करवा रहा है भाई? या तो वाइपर इज द मॉडल 1। चलो गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय। तो कोई तो मादर से बोल रहा था गुड नाइट। ये वो सही खेल रहा है अपन को। इसका टीममेट्स का रैंक क्या है? जैसे फीमेल साउंड है। मिड आ जाए और साउंड मिड देख ले। फ्लैट भी है ना? हां मारा किसने देखो। मार्केट में घुमा नहीं रहे देखा। नाइस वन यार तेज। वो गुड इवनिंग रिक्वा, गुड इवनिंग सिंह भाई, गुड इवनिंग। डेली स्ट्रीम्स अटेंड नहीं कर पा रहा टाइम शेड्यूल की वजह से। कोई बात नहीं स्ट्रिंग बैक, कोई बात नहीं। इट्स फाइन नो वरीज। बंद ही करता हूँ मैं भी, छोड़ो। कितना हो गया? 8 hours। माय गॉड, पहले मैं देखता हूँ टीम स्पिरिट और इसमें कौन जीता। थोड़ा वो कर लेते हैं अपन, एम लैब्स कर लेंगे। रुको
I wanna see Team Spirit 2-0 जीता वे crazy crazy let's go so it's final FUT versus Team Spirit we'll be getting a new champion let's fucking go कल कितने बजे है 1:30 मतलब 5 बजे है 5 बजे आ जाऊंगा अरे अब भी रेडी हुई उसकी अल्ट पे कल जा रहे हो ना घर नहीं कल नहीं जा रहा हूँ कल तो EWC के लास्ट डे ब्रो CS2 finals one of my favorite teams are in the finals so अरे मैं भी मार देता हूँ definitely watch party तो करना ही है अरे चूतिया है जेट तेरे को मैं कॉल भी दे रहा था तू साइड देख मैं भी देख रहा हूँ चूतिया है तू तो जज से उनकी पूरी एंट्री डिनाई कर सकता है बैकग्राउंड ऑडियो के लिए माफ करना गाइस थोड़ा सा 2-3 दिन ही आएगा बैकग्राउंड ऑडियो उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट अगले स्ट्रीम्स में नहीं मिलेगा बैकग्राउंड ऑडियो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कल ही होगा ना आई गेस नहीं कल नहीं होगा 30th को 30th को तो प्रॉपर फाइनल रिजल्ट्स निकलेंगे उसके बाद होगा लेट्स सी कब होता है कल नहीं है अरे बेंचो एक यहाँ पे मार्केट पे चलो एक बैक साइड और एक मार्केट मेन बात है भाई मेरे को दिख ही नहीं रहा है बेंचो यार यहाँ बेंच पे 10 लोग बैठा हुआ है होगा यहाँ इधर है ओए देख लो बस बिल्कुल खुला हुआ है सब्सक्रिप्शन ले रखी है क्या एम लैब्स की पहले लिया था अभी नहीं है अभी मैं थोड़ा कंटिन्यू नहीं कर पाया हूँ लास्ट 2 months ऐसा बोल लो बिकॉज आई वाज सफरिंग फ्रॉम अ बैक इंजरी सो आई कैनॉट स्ट्रेन माई सेल्फ लाइक दिस फॉर कंटिन्यूस आवर्स तो अभी तो ठीक हो गया है तो इसलिए मैं धीरे धीरे वापस आ रहा हूँ समझ रहे हो एक बार आई एम बैक रेगुलर with the aim labs and Kovac thing फिर वापस से ले लेंगे बचा लेते हैं कुछ
पहला 3 नहीं मारना है। फिर से पहला वाले में मार दिया, पहले 3 नहीं मारना है बोला मैं। छोटी सी चीज याद नहीं रहती। क्या हो रहा है मेरे हाथ को, क्या हो रहा है मेरे सेंसरी नब को? ब्लू आ रहा है फिर भी।
मैंने भाग रहा है और अच्छा एक गोली ना अरे यार मेरे कंट्रोल नहीं है यार देख रहा है फैन को मेरे को कोई नहीं समझ आ रहा है चिट्ठी है कि उसमें क्या है अभी मैं दीवार पे ही मार रहा था इसकी में पता है गोली चला देना तो भी इसको खुदा ही देता है पर यार मेरे को एक बात समझ नहीं आई पता है ना भाई
Dumex bro, welcome to the stream. If you're new to this channel, thank you so much for coming and subscribe the channel. Bro, we are just friends, not manipulation. समझा नहीं bro. मतलब? Like, do you speak Hindi or should I continue with English? Like, I didn't get you. Love from Jet. Which Jet? Huh? Which Jet, bro? Shino Asad, bro. Welcome to the stream, bye. If you're new to this channel, please make sure to like the stream and subscribe to the channel. And thank you so much for coming. Thank you for joining. What's your grid shot? Ultimate highest score? I'm not. I haven't been regular with aim labs from the past couple of months just because of my back injury. I just recovered from it. Still not fully recovered, but I have recovered from it more than 50%. So yeah, I can now, again continue my long sessions of aim labs. From last match, okay, Jet from last match. So what do you mean by we are just friends and not manipulation? I didn't get you, bro. What do you mean by manipulation? I'm hearing the word first time. You want to say multiplication or what? What's up, bro? Good game, by the way. Doom, bro. Good game, good game. Why you report? Because, bro. Acha, okay. I didn't report you. I reported your teammate. I guess if he's your teammate, Viper, because clearly it was a symbol of rank manipulation. And as a Valorant co-streamer, we need to address this to the Riot community, Riot client. We have been informed कि कोई भी अगर ऐसा करता हुआ मिल जाए, if anyone does all this kind of malpractices, please bring us to their consideration or report as accounts so that they can look over it and ban them and do the necessary needful things. So obviously an immortal guy won't be playing in his immortal ID with a plaid guy. Okay, and he was clearly 5-stacking with a plaid guy, and which shows that it was pure rank manipulation. And we can also see na, hum bhi chumte nahi hai. I am also an ascendant A3 peak, so I also know कि सामने वाला कैसे मार रहा है. Only Viper was playing good. His shots were actually good, and the rest of the team were trash. So don't mind my words, but just the way only Viper carried you 30+ kills, obviously it was a clear indication of rank manipulation.
No worries. I don't think you will get a report, but definitely your teammate Viper would. Because he's in the almost, you can say, topmost rank. Even if not topmost, then in the top 5 or 10% of the ranking, highest ranking community. So he should be responsible as a player, as a whatever you can consider him. So don't care who is he or what is he. I just made this report so that Valorant can see, Riot community can see, the admins can see and do the needful. इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. There. एकदम नहीं है वे हाथ एकदम नहीं. बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ ब्रो.
एक शॉट कम मिस किया। क्या हो रहा है भाई?
travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. चलो चलता हूँ चैट। ओके आज के स्ट्रीम के लिए इतना ही। कल हम फाइनल्स EWC के साथ 5 बजे आ जाएंगे। कल कितने बजे रेस है वो भी देखना है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। वेयर इज फैन कोड? सिक्स 30 को है कल। ठीक है कोई ना, चलो चलता हूँ मैं। आज के लिए इतना ही। एज ऑलवेज यू गाइस आर ऑलवेज ओपी, यू नो द ड्रिल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पर भी नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब कर चुके हो तो शेयर कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगली स्ट्रीम पे जो कि होगा कल। तब तक के लिए बाय बाय, सी या चेक केयर, गुड नाइट, अलविदा। ऐसे ही प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो। एक दिन हम जरूर से आसमान छुएंगे। और अपने 5 बजे रूल्स कभी मत भूलना। अपना ख्याल रखो, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, अच्छे काम करते रहो, पानी पीते रहो, एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा गेम्स खेलते रहो, बिकॉज गेम्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। सो इसी के साथ हम आज की स्ट्रीम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है स्ट्रीम को पसंद आई होगी। नहीं पसंद आई कोई बात नहीं, कल इसी चैनल पर आ जाना, हम आपको एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।
time continues marching, it slowly crawls. With each new one starting, I recall you came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season. Each time of year carries memories, like a never fading whisper in the breeze. Oh, we will keep on changing all over again. Yeah, we will keep on changing, just like another season. Don't want another day without you by my side. Oh, this season. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Just like another season. Seeing monsters out your window. No, you can't sleep. You pretend though you don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. You know I'll come running. You go to war, then I'm going with you. Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. When you sound the alarm, when the chaos is rising, leading the charge, yeah, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your army. When your nightmares turn to real life and the ground's filled up with landmines, we will face it standing side by side.